So good morning, everyone. It's 9 o'clock already, so we can get started with. In the last session, I guess it was full of trees, and probably we spent enough time learning something called the binary search tree. And then what is binary search tree? Where we say that it is a binary tree. Each node can have maximum two child nodes, but the left side node will be smaller than that, and right side node will be greater or equal to the parent. And then we've seen the multiple different functions, starting with non-recursive implementation of like in order pre-order. Then we talked about how we can implement like BFS and DFS. We continued further. We talk about like binary search implementation, probably binary search with parent. And then somewhere we started talking about or the deletion of a node, which was like one of the lengthy code. But even though it was lengthy, I hope it was straightforward. It was step by step, and we could complete it. So let me check what all doubts are there. Let us take up doubts, and then we'll continue onto the today's plan. So in DFS and BFS, why we return reference? Why not travel data? Janvi, to be frank, there is no good reason. You could have always written even a reference, or you could always return a data as well. So if you need, depending on your requirement, you could implement data as well. To be frank, I just try to keep it consistent with the binary search algorithm that I was supposed to make, because I was knowing that I will be calling binary search mechanism during deletion. और अगर मुझको बाइनरी सर्च मैकेनिज्म ड्यूरिंग डिलीशन कॉल करना है तो मुझको बाइनरी सर्च के लिए रिटर्निंग नोड was probably compulsory. And since I was willing to return node over there, I thought that I should keep it consistent with the BFS and DFS as well. If you ask me technically I would say that you could return a data reference, or for that sake, the more appropriate one would be creating your own iterator and returning a iterator. I hope, Janvi, there goes the answer of your question. Okay, next. Let me read it once again. Neha is saying that, will you please explain the overall idea about post-order tree without recursion? I have tried, but due to some conditions, it is not printing desired output. I know that the post-order was bit tricky. I thought that not to trouble you people with, non-recursive post-order. And I told you, in order, pre-order पढ़ने के बाद में, usually people believe that, okay, recursion is better than the non-recursive code. But when you go with the post-order, you are 100% sure that yes, it is better. Give me some time, let's see how it goes. uh, Dhanashri is saying that, can you repeat the delete function node has right child and left child wala part? Okay, good. Please repeat delete node. Sarang, if it will be really great if you could like be specific. As I said, that as far as repetition is concerned for your batch, the options are open. All the entire video is there, so you could have played the same video at least 10 times. So if you needed only repetition, I guess go back and check a video. That will be like a better one, isn't it? Left and right. Okay, I'll repeat that much. Some hint for the post order without recursion. Okay, good. चलो हम लोग I'll just go back. There is some concern regarding deletion. Let me first talk about the deletion, and after that we will talk about like post order without recursion. We will talk about, and after that we will continue with the today's topic. No problem. So when it come down to the this, I really think that when the diagram was drawn, there's like nothing much you people need to do it, isn't it? So the diagram is very clear, which is saying that. um Give me a minute. Okay, okay. Huh. So the first part where we are saying that deleting a node, the trav dot left is equal to null. A trav dot left is equal to null. What is the meaning of this? This node has got only the right child. This node has got the right child. So one thing is sure, left में कुछ नहीं है, तो वहां पर कोई orphan होने वाला नहीं है.
but right में there can be a node, and if there is a node, if this current node is deleted, if current node is deleted, the likely chances are that that particular node become orphan node. And if that node become orphan node, how do you handle that node? How do you handle that? So see, even though node has got right child, but there are three possibilities about the node to be deleted. What are three possibilities? I guess they are pretty clear. First possibility very clearly says that the node to be deleted is left of the parent, or node to be deleted is right of the parent. And the third one, what we are talking about, is node to be deleted is a root itself. So there are total three possibilities. One, either node to be deleted is a left, or node to be deleted is right, or the node to be deleted is root. Now what you are saying is that if it is left, पेरेंट्स लेफ्ट, इफ इट इज पेरेंट्स लेफ्ट, उसके लेफ्ट में वैसे भी कुछ नहीं है, बट उसका राइट शायद ऑर्फन हो सकता है, और अगर उसका राइट ऑर्फन हो सकता है, देन ऑल वी कैन डू इज दैट द पेरेंट्स राइट, द पेरेंट्स लेफ्ट should point to the traverse right, so that this 14 node reference should not get lost. And that is something, a piece of code that you must have seen over here, isn't it? If trav is equal to parent dot left, then the parent dot left is equal to trav's right, like a one part. The second part, the second part, which is again clearly saying that in this case, the node to be deleted is right of the parent. If it is right of the parent, what I need to do? What I need to do? Again, इसके left में कुछ नहीं है, लेकिन right में node हो सकता है. अगर right में node हो सकता है, then the parent's right should take care of the trav's right, should take care of the parent trav's right. And again, you have written a piece of code which is saying that parent's right is equal to trav's right. Okay, that is again clear. Or a third possibility where you are saying that the root was pointing to the trap, but if this node itself is deleted, please note that there are likely chances that the whole tree is probably orphan. So what I need to take care, इसके left में तो वैसे भी कुछ नहीं है, right में node है, then the root should point to the traverse right, and the root is pointing to the traverse right. All I need to do is that root is equal to traverse right, correct? So if node has got only right child, in other words, if traverse left is equal to null, what all care we need to take? I guess it is in front of you. What about, what about if the node to be deleted do not have left child? If it do not have left child, if it has got only right child, if sorry, if do not have right child, it has got only left child. So you find that it has got only left child, no right child. It has got only left child, no right child. It has got only left child, no right child. So in this particular case, what I should take care? Again, the three possibilities. If the root is pointing, if root is pointing to the node, if root is pointing to the node, and you want to delete this node, then its left may get orphan. So what you want to do? You want to simply say root is equal to traverse left, or root is equal to traverse left, that is in front of you. Okay, that is great. The first part is done. The second part, if the node to be deleted is parents left, if node to be deleted is parents left, then the parent left is equal to Trav's left, or parent left is equal to Trav's left. It is in front of you. And the last thing, what we are talking about is, last thing which we talk about is that node to be deleted is parents right. If it node to be deleted is parents right, all I need to do is that the parents right will take care of the Trav's right. वैसे भी उसका left नहीं है, sorry, parent right is equal to Trav's left, वैसे भी इसका right node नहीं है, this is very clear. And again we have taken care of it. तो जो जो possibilities हो सकते हैं, जो जो possibilities हो सकते हैं, you see what is common in both the cases. यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं, इसका लेफ्ट नल है, मतलब इसका राइट आपको ऑर्फन नहीं होने देना है. हाँ, लेकिन तीन पॉसिबिलिटीज है, या तो पेरेंट का लेफ्ट उसको पॉइंट कर रहा है नोट टू बी डिलीटेड को, या फिर पेरेंट का राइट उसको पॉइंट कर रहा है, या फिर रूट उसको पॉइंट कर रहा है. सो वी हैव जस्ट हैंडल्ड इट इन दैट वे फॉर थ्री कंडीशंस, थ्री डायग्राम्स, थ्री लाइंस ऑफ कोड. आई गेस इट इज क्लियर. इज इट ओके? ये जिनको लेफ्ट और राइट का प्रॉब्लम था, आई गेस देयर आर टू पीपल हु आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन. Is that okay? So as far as this part is concerned, and as far as the final deletion is concerned, as far as final deletion is concerned, I said that if it has got left child as well as right child, what I said, it was like very simple. All see,
अल्टीमेटली अगर आपको 50 डिलीट करना है, तो 50 की जगह पे कौन सा नोड आना चाहिए, पहले आप लोग उसका डिसीजन ले लो। ये 50 की जगह पे कौन सा नोड आना चाहिए, या तो उसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर आना चाहिए, या तो इन ऑर्डर सक्सेसर आना चाहिए। फाइनली वी टुक अ डिसीजन कि हमको इन ऑर्डर सक्सेसर चाहिए। और अगर आपको इन ऑर्डर सक्सेसर चाहिए, तो इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढने का तरीका आसान था। गो टू द गो टू द राइट एंड देन गो टू द लेफ्ट मोस्ट, go to the right and go to the leftmost. So the piece of code which is taking care of finding a node along with finding a successor node along with its parent. So 50 का successor 60 मुझको मिल गया. So once you got the 60, all I'm doing is that I'm just overwriting a data. So जहाँ पर 50 था, the 50 is replaced by the data 60 over there. Okay, that is done. And once the data is replaced, all I'm saying is that now I need to delete this node. By the way, to delete the node, हमें कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है. All we can do is that we can even simply say that parents left is equal to successors right. Parents left is equal to successor right. इतना अगर एक लाइन का कोड भी लिख देते तो that would have been still done. I just thought that since deleting the node at the left, deleting the node whose left is already equal to null, ये कोड अपने पास already है. So I just thought of connecting it together, and that's why I just not written that line. But otherwise, you could have done it directly. Is that okay? Again, if you're looking for a line by line explanation, go back, open a video, and do it once again. Do the paperwork along with the video once again. You should be able to understand it. There should not be any trouble. Chalo, this part is done. This part is done. I'll just go back and I'll talk about post order. When I'm talking about post order, let me first of all tell you, I purposefully skip post order just to keep it simple for you people. But post order is a complicated business. Post order is a complicated business, and there is some reason for that. There is some reason for that. Obviously, जो दो लोगों ने मुझको क्वेश्चन पूछा है, सिद्धार्थ एंड आई गेस जानवी, तो जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, जिन्होंने ट्राई किया है, ओनली दोज पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ द पोस्ट ऑर्डर नॉन रिकर्सिव इज टू बी डन. बाकी लोग सुनो, समझ में आता है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आता है दैट इज स्टिल फाइन, एंड दैट इज स्टिल फाइन, एंड दैट वाज द रीजन यस्टरडे आई स्किप्ड इट. करेक्ट? तो ज्यादा दुखी मत होना. सो पीपल अगेन, जिन लोगों ने पोस्ट ऑर्डर नॉन रिकर्सिव, मैंने ये नहीं कहूंगा कि आपने किया है, आपने करने की कोशिश भी की है, देन एटलीस्ट यू मस्ट हैव सीन अ प्रॉब्लम. क्योंकि यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर केस द प्रॉब्लम is bit tricky. The problem is bit tricky. And what is the problem? Shubham is saying that post order can be done using DFS algorithm. No way. You cannot do the post order using DFS algorithm. Go ahead. हाँ जानवी, again अगर आपने गूगल के ऊपर सर्च किया है तो there are like a different approaches are available. So some of the approaches says that you can use the either two stacks or yeah fear something like that. But again, if you are really tried it, listen carefully. जब आप लोग गूगल करते हो, तो मैंने कहा ना, यूजुअली गूगल नन ऑफ द ट्यूटोरियल्स टीच यू हाउ टू बिल्ड योर कोड. आई होप यू एग्री. None of the tutorial, none of the videos always tell you how to build the code. They always explain you the code that they have written. And जब से मैंने डेटा स्ट्रक्चर चालू किया है, I'm always trying to tell you that it is always good idea that you learn in probably in a more difficult way. What is a difficult way? Try to build your own code. Try to build your own code. Even though things are difficult, over the period, your thought process is, active, and that is in my opinion the main purpose of the data structure module. So even though you could, sir, हमने पूरा मॉड्यूल किया and we could make hardly 3-4 कोड. हम लोगों ने सिर्फ, सर आपने इतने सारे एल्गोरिथम पढ़ाए, हम लोग सिर्फ लिंक लिस्ट का कोड खुद से कर सकते हो. हम लोगों ने लिंक लिस्ट का कोड सिर्फ हम लोग खुद से कर सकते हैं. ट्रस्ट मी, इवन दैट इज अ गुड और लेदर ग्रेट अचीवमेंट. अगर आप लोग कुछ भी कोड खुद से पेपर वर्क करके डेवलप कर पा रहे हो, आई एम नॉट सेइंग दैट अभी 10 दिन मॉड्यूल चल रहा है, सो सर 10 के 10 दिन का सर मैंने सब कुछ मैं कर पा रहा हूँ. अगर आप सब कुछ कोड खुद से बिल्ड कर पा रहे हो, आई वुड से दैट इट इज, यू आर जीनियस देन, एंड नो डाउट ऑन दैट. बट इफ इट इज नॉट, एटलीस्ट 50% ऑफ कोड, सर इतने कोड तो कम से कम हम लोग पेपर वर्क करके बिल्ड करके हम लोग वापस से खुद से कर पा रहे हैं. ट्रस्ट मी, इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट, बिकॉज नाउ योर थॉट प्रोसेस इज एक्टिवेटेड. करेक्ट? जब आप लोग आगे जाओगे, एज द कोर्स प्रोग्रेसेस फर्दर, यू विल फाइंड दैट एक्चुअल प्रोजेक्ट्स करने के लिए
या एक्चुअल, टू बी फ्रैंक, एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए इतने लॉजिक की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्चुअल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए इतने लॉजिक की जरूरत नहीं पड़ती है जितने लॉजिक की जरूरत कोर जावा या डेटा स्ट्रक्चर करने के लिए लगती है, राइट? तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट, आप लोगों ने नोट किया होगा, आप लोगों ने वेब प्रोग्रामिंग का मॉड्यूल किया, एडब्ल्यूपी का। जब लोग वेब प्रोग्रामिंग का मॉड्यूल कर रहे थे, आप लोगों ने बहुत लॉजिक लगाया क्या? हाँ, वहां पर कोई लॉजिक नहीं है, वहां पर सिर्फ आपको आउटपुट देखना है। अच्छा ये ऐसे है, इस बटन को लेफ्ट में खिसकाओ, इस बटन को राइट में खिसकाओ, इसको थोड़ा ऊपर करो, इसके पैडिंग चेंज करो, इसका मार्जिन चेंज करो, इसका कलरिंग चेंज करो, ओह दैट लुक्स ब्यूटीफुल। तो वहां पर प्रोबेबली यू नीड बिट मोर आर्टिस्टिक सेंस देन द अल्गोरिदमिक सेंस, अल्गोरिदमिक सेंस। तो आई एम सेइंग दैट जब आप लोग एक्चुअल, yes, Pranit is saying that library management in Java was also too simple. That is what I'm trying to tell you, that actual application development में इतना लॉजिक कभी नहीं लगता है जितना लॉजिक डेटा स्ट्रक्चर में लगता है। तो जो जो लोग दुखी होते रहते हैं, सर हमारा लॉजिक वीक है, डेटा स्ट्रक्चर उनके लिए आइडियल मॉड्यूल है, वेयर दे शुड टेक फुल ऑफ एफर्ट्स, where they should take full of efforts. As more efforts that you take, you are probably more comfortable. हाँ सर, अभी मेरे को थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस आ रहा है, आई एम सेइंग दैट पूरे मॉड्यूल में से 50% भी अगर आप लोग खुद से बिल्ड कर पा रहे हो, देन दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट। और 9-10 दिनों में अगर आप उसमें से 50% ग्रास्प कर रहे हो, तो इससे अच्छी बात क्या होगी, राइट? गुड। ये सब लोग मेरे को पर्सनल मैसेजेस क्यों डाल रहे हैं? इज गुड। एनीवे, कोई बात नहीं। देयर इज समवन इज आस्किंग सम क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने के लिए कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा है, इज इट रियली फाइन? इट इज एब्सोल्युटली फाइन। आई गेस मैंने कल परसों बताया था दैट आई टुक, मैंने एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 6-6 7-7 दिन आई हैव इन्वेस्टेड इन, ऑन वन प्रॉब्लम 6 to 7 days. So one problem 6 to 7 days. I'm very sure you people are definitely much more intelligent than me. You are not definitely spending more than 6 days or something like that. I still recall my old days जहां पर मेरे को लिटरली रात को ऐसे सोते सोते याद आता था, अच्छा शायद इसका लॉजिक ये होगा। मैं उठता था नोटबुक लेके, तब लिख के रखता था, शायद ये लॉजिक होगा, कल ट्राई करना है, क्योंकि कल तब मेरे पास कंप्यूटर नहीं था। तो मैं किसी अपने रिलेटिव्स के घर पे जाता था और फिर वहां पर 1-2 घंटे बैठ के जो लॉजिक पेपर के ऊपर बनाया है, फिर उसको अच्छा अरे चलो करके देखते हैं इफ इट इज वर्किंग। तो आई एम सेइंग दैट प्रोग्रामिंग लॉजिक डेवलप करने के लिए कोई, यू रियली डू नॉट नीड अ कंप्यूटर, यू नीड अ थॉट प्रोसेस, यू नीड अ पेपर, यू नीड अ पेन, एंड यू नीड पैशन, एंड इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। बट उसके बाद में जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, दैट यू कैरी फॉर योर लाइफ टाइम। सो आई ऑलवेज कीप सेइंग दैट आपने कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस, और वो सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाता है, इंजीनियर्स नो बेटर देन मी, करेक्ट? तो एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न, डेफिनेटली यू स्टडी एवरीथिंग, बट व्हेन इट कम्स डाउन टू प्रोग्रामिंग लॉजिक, do not make what is that 20 code, make 5-6 code that is good enough, but build them by yourself. Anyway, I'm just going back and talking about the post order logic. But how we will solve in this way in exam in slow mode? Madhuri, exam preparations you cannot do it in a slow mode, that is not really possible. If you are really asking me about exam, sorry, it is not really possible. So exam ke liye, exam must have its own way of preparations, करेक्ट? अगर आप लोगों ने बेसिक कोड ठीक से कर लिए, आई रियली डोंट थिंक, बेसिक कोड ठीक से कर लिए द वे आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, देन आई डोंट थिंक यू विल बी रियली फेसिंग दैट मच ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग एग्जाम इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। हाँ, जिन लोगों ने सारे के सारे कोड कॉपी पेस्ट ही किए, दे विल ऑलवेज फाइंड इट डिफिकल्ट, नथिंग मच आई कैन डू, करेक्ट? एनीवे, जाने दो, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम। इससे मैं कितना भी बताऊं, क्या फर्क पड़ने वाला है? मैंने पहले दिन जो बताया था, मैं अभी भी वही बता रहा हूँ। डू पेपर वर्क, कम अप विद योर ओन कोड, इन्वेस्ट लिटिल टाइम। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है, आई एम वेरी श्योर यू आर रेडी फॉर द एग्जाम, यू नीड नॉट टू वरी अ लॉट, करेक्ट? एनीवे, पोस्ट ऑर्डर का लॉजिक, पोस्ट ऑर्डर का प्रॉब्लम पहले बताता हूं, बाद में लॉजिक के ऊपर सोचते हैं। कमिंग बैक, हैव अ लुक एट दिस। यू ऑलवेज यू नो दैट यू बिगिन विद द ट्रैप। ए पोस्ट ऑर्डर में हमें क्या करना है? पहले सारे लेफ्ट खत्म करने हैं, पहले सारे लेफ्ट खत्म करने हैं, बाद में सारे राइट खत्म करने हैं, और जब लेफ्ट खत्म हो जाएंगे, राइट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में ये सर लेफ्ट खत्म हो जाएंगे, सारे राइट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में उस नोड को प्रिंट करना है। ओके, if this is a logic to be managed, take a look at this. If this is a logic to be managed, what I will do, first of all, should I print 50?
फर्स्ट इन प्लेस शुड आई प्रिंट 50? नो वे, क्योंकि ना तो उसका लेफ्ट खत्म हुआ है ना तो राइट खत्म हुआ है. तो व्हाट आई नीड टू डू, आई विल सिंपली से दैट आई विल गो टू द लेफ्ट. I'll go to the left. Should I print 30 or not again? I should not print 30 क्योंकि ना तो उसका लेफ्ट खत्म हो गया ना तो राइट खत्म हो गया. Should I print 10 or not again? Because ना तो उसका लेफ्ट खत्म हो गया ना तो उसका राइट खत्म हो गया. See it carefully and then again you go to the left. As you go to the left each time, as you go to the left each time, what you are losing? As you go to the left each time, what you are losing? Oh, you are losing not right, not right. The node itself, the node itself. क्योंकि आपको वो नोड भी तो प्रिंट करना है. Please note that आपको वो नोड भी तो प्रिंट करना है. I hope you understand that. So definitely, so you are losing 50, you are losing 30, you are losing 10. और आपको पता है अगर आपको 50 30 10 अगर मिल जाते हैं, अगर आपको 50 30 10 मिल जाते हैं तो डेफिनेटली आप उसका राइट ले ही सकते हो. इसमें कोई बड़ा तीर नहीं करना है. सो एंड यू अंडरस्टैंड दैट यहाँ पर वैसे भी ये रिकर्सिव कोड को हम लोग नॉन रिकर्सिव में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो डेफिनेटली इट विल नीड अ स्टैक. वैसे भी लास्ट इन फर्स्ट ऑर्डर है, ये आपको चाहिए. एंड दैट इज द रीजन आई एम वेरी श्योर हम लोग जैसे हम लोगों ने इन ऑर्डर का लॉजिक लिखा था कि पहले नोड को स्टैक के ऊपर पुश करो, गो टू द लेफ्ट. नोड को स्टैक के ऊपर पुश करो, गो टू द लेफ्ट. नोड को स्टैक के ऊपर पुश करो, गो टू द लेफ्ट. एंड फाइनली यू रीच टू द नल. नाउ सी द प्रॉब्लम. Now see the problem. I'm trying to show you the problem. The problem is that now you reach to the null. As you reach to the null, what do you want to do? Definitely, I want to pop the node. Chalo, I have popped the node. Please pay attention. I have popped the node. Once I pop the node, I reach to this. What it is indicating? What it is indicating is that उसके सारे left खत्म हो गए. और since उसके सारे left खत्म हो गए, that's why I came down to this node. Since उसके सारे left खत्म हो गए, that's why I came down to this node. Okay, that is good. Now the question is that, please pay attention. Now the question is that, now should I print 10? इसके सारे लेफ्ट खत्म हो गए. आई केम डाउन टू दिस नोड. शुड आई प्रिंट 10? ओ नॉट एट ऑल, क्योंकि हमें वापस से उसके राइट में जाना है. अभी तक उसके राइट खत्म नहीं हुए हैं. एंड डोंट फॉरगेट इसके नीचे भी नोड हो सकते हैं. डोंट फॉरगेट दैट इसके नीचे भी नोड हो सकते हैं. यू आर अवेयर ऑफ इट. नाउ व्हाट आई नीड टू डू, I need to go from here to here. But again, there is a problem. What is the problem? The problem is that if I go from 10 to the right, if I go to the 10 to the right, again I'm going to lose the 10 itself. Please note, जब हम लोग लेफ्ट में जा रहे थे तो हमारा 10 मिस हो रहा था. जब हम लोग लेफ्ट में जा रहे थे तब हमारा 10 मिस हो रहा था. और अब जब हम लोग राइट में जा रहे हैं तो हमारा 10 फिर से मिस हो रहा है. ये फिर से मिस हो रहा है. तो व्हाट शुड आई डू? Common sense is that before I go ahead, before I go to the left, I should have pushed 10 back onto the stack. Oh yes, I should again push 10 back onto the stack. And if I push 10 back onto the stack, please take a note. उसके बाद में, let's say somehow you printed 20. After you printed 20, what do you want to do? After you printed 20, now what do you want to do? अब आपको 20 का कुछ नहीं करना है. तो जिसको आपने प्रिंट कर दिया है, you can mark it as null. And once you mark it as null कि this is done, now you can go to the and you can again pop 10. Now you can again pop 10. Now tell me, in this particular case, now should I print 10? Now should I print 10? Yes, क्योंकि उसका लेफ्ट भी खत्म हो गया, उसका राइट भी खत्म हो गया. And then now you can print 10. Okay, that is common sense. But after I print 10, after I print 10, now what should I do? Now what should I do? Take a look at the diagram. What is the next that you need? 10 को प्रिंट करने के बाद में obviously I should pop the next element. Or I should pop the next element, so I can pop the 30. Now if I'm popping 13, should I print 30? No, क्योंकि उसके सिर्फ लेफ्ट खत्म हो गए, उसके अभी तक राइट खत्म नहीं हुए. तो what should I do? Oh, I should go to the right. But again the same problem. If I go to the right, what is the problem? I'm again going to miss 30. So what I should do? Again push 30 once again, and then take drive to the right. Okay, then take drive to the right, and then somehow let's say that you have printed 40. Somehow you have printed 40, and after you print 40, what do you need to do? आप लोग नोट कर रहे हो, हर बार एक एलिमेंट प्रिंट करने के बाद में, मुझको नया वाला एलिमेंट स्टैक से पॉप करना पड़ता है. ओके, गो अहेड, लेट मी पॉप 30. नाउ टेल मी, should I
print 30 now. Yes, why I should print 30? क्योंकि उसका लेफ्ट भी खत्म हो चुका है और उसका राइट भी खत्म हो चुका है. अगर उसका लेफ्ट भी खत्म हो चुका है, राइट भी खत्म हो चुका है, आई शुड प्रिंट 30. आई शुड प्रिंट 30. आप लोगों ने नोट किया है कि आपका हर एक नोड स्टैक के ऊपर 2 बार जा रहा है और आपका हर एक नोड स्टैक के ऊपर से 2 बार बाहर आ रहा है. 2 बार पुश हो रहा है, 2 बार पॉप हो रहा है. पहली बार पुश कब हो रहा है? बिफोर यू गो टू द लेफ्ट. बिफोर यू गो टू द लेफ्ट. एंड दूसरी बार पुश कब होता है? बिफोर यू गो टू द राइट. मैं लॉजिक बिल्डिंग के स्टेजेस बता रहा हूं कि सोचना कैसे है. जो मैं सोच रहा हूं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं. फाइनली बाद में मैं कोड लिख के दिखाता हूं. कोड लिखने में मेरे को कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दैट कैन बी ऑलवेज डन. वो मेरा कोड अभी इतने साल पढ़ा पढ़ा के वैसे वायर्ड हो गया है. बट देन यू सी द वे लॉजिक दैट यू कैन बिल्ड इट. ओके, आई अंडरस्टैंड दैट कि हर बार मेरा कोड, लिसन केयरफुली, मेरा हर एक नोड 2 बार पुश हो रहा है. लेफ्ट में जाने से पहले एक बार पुश हो रहा है और राइट में जाने से पहले एक बार पुश हो रहा है. अच्छा, आपने और एक नोड किया, मेरा हर एक नोड 2 बार पॉप भी हो रहा है. 2 बार पॉप भी हो रहा है. पहली बार लेफ्ट खत्म होने के बाद में पॉप हो रहा है. पहली बार लेफ्ट खत्म होने के बाद में पॉप हो रहा है और दूसरी बार राइट राइट प्रिंट होने के बाद में पॉप हो रहा है. लेफ्ट प्रिंट होने के बाद में पॉप हो रहा है और उसके बाद में राइट प्रिंट होने के बाद में पॉप हो रहा है. दैट इज सेकंड थिंग दैट यू नीड टू ऑब्जर्व. एक बात बताओ, लेफ्ट प्रिंट होने के बाद में जब नोड पॉप होता है, लेफ्ट प्रिंट होने के बाद में जब आपका नोड पॉप होता है तो आपको करना क्या होता है? लेफ्ट प्रिंट होने के बाद में जब आपका नोड पॉप होता है तो आपको करना क्या होता है? आपको करना ये होता है कि उसको वापस से स्टैक के ऊपर पुश करना होता है. उसको वापस से स्टैक के ऊपर पुश करना होता है और बाद में राइट के ऊपर जाना होता है. ये बाद में राइट के ऊपर जाना होता है. और सेकंड, और जब वापस से जब लोग राइट से आते हो, ये जब राइट वाला ये सारे प्रिंट करके, लेट्स से फॉर एग्जांपल सारे प्रिंट करके 90 भी मेरा प्रिंट हो गया, ये 90 भी प्रिंट हो गया, उसके बाद में मेरे को क्या करना होता है? उसके बाद में मेरे को क्या करना होता है? यस, उसके बाद में मेरे को इसको पॉप करना होता है और पॉप करके मुझको उसको प्रिंट करना होता है. ये मुझको उसको पॉप करना होता है और मुझको उसको प्रिंट करना होता है. अब सिर्फ मेजर चैलेंज जो आपको यहाँ पर नोट करना है वो ये है, हाउ डू यू कीप अ ट्रैक कि ये जो नोड पॉप हो रहा है ये पहली बार में पॉप हो रहा है या दूसरी बार में पॉप हो रहा है? आपका जो नोड पॉप हो रहा है वो पॉप किसकी वजह से हो रहा है? कि फर्स्ट टाइम पॉप हो रहा है या फिर सेकंड टाइम पॉप हो रहा है? नाउ इफ यू कुड कीप अ ट्रैक कि आपका नोड पहली बार पॉप हो रहा है या दूसरी बार पॉप हो रहा है, आई गेस दैट विल सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम. दैट विल सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम. एंड ये शुभम, now you need some sort of a flag. Either you need some sort of a flag, listen carefully, or you need to follow two stack approach. अब आपको जो भी करना है वो आप लोग करो. See, again, solution is not important, problem is important. I repeat, the solution is not important, problem is important. Trust me, trust me. If you want to be a good doctor, if you want to be a good doctor, you need not to be good at medicine. If you want to be good doctor, you need to be good into anatomy. जाने दो, आपके घर में कोई डॉक्टर्स होंगे तो उनसे बात करना, दे विल बी एबल टू टेल यू बेटर. सो knowing a lot of medicine and its chemical composition and then what they can do, so these are the solutions. But the solution समझने के लिए you need to first understand the problem, you need to first understand the disease, and that disease how it is impacting on your body. तो जहां जहां पर अच्छा मेडिकल पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले एनाटॉमी अच्छे से पढ़ाया जाता है. सो इफ यू अंडरस्टैंड एनाटॉमी वेरी वेल, व्हाट इज एनाटॉमी? अच्छा, गुड. सो आप भी मेरे जैसे लगते हो, बायोलॉजी. एनाटॉमी को हम लोग हिंदी में कहते हैं शरीर शास्त्र. लर्निंग द ह्यूमन बॉडी, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी. आई होप गुरमुख दैट इज फाइन. तो पहले ह्यूमन बॉडी पढ़ो, फिर डिसीजेस का उसके ऊपर का इंपैक्ट पढ़ो, वेर यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, एंड देन यू लुक फॉर विच मेडिसिन विल क्योर द डिसीज. I guess the same concept goes somewhere into the computers as well. You first understand a problem, you understand why the problem occurred, and then you try to solve it. And trust me, your solution will be much better than just कि नहीं आज बुखार है क्रोसिन ले लो. That is not the solution. Leave it. So I understood a problem, and let us try to write a solution. Let us try to write a solution.
may not be a perfect one. हम लोग step by step करने की कोशिश करते हैं. The approach that I'm going to follow, listen carefully. Approach that I'm going to follow, I'm going to have a kind of a boolean flag. Boolean flag for each node. I am going to have a boolean flag for each node, and that boolean flag for each node indicate that whether the node is visited or not. Visited in the sense printed or not. Whether that node is printed or not. चलो ठीक है, तो शुरू करते मैं कह रहा हूँ कि हर एक नोड के अंदर अभी हमारे पास नोड के अंदर 3 डेटा मेंबर्स हैं. डेटा है, पॉइंटेड टू लेफ्ट है, पॉइंटेड टू द राइट है. मैं कह रहा हूँ एक और नोड, एक और मेंबर ऐड करो, and that member is like kind of printed, yeah, visited member, and it could be a boolean member, simply saying that it is false or it is true. Now considering that कि आपके नोड के अंदर टोटल 4 मेंबर्स हैं, एंड इनिशियली boolean visited जो है वो सबका false है. Considering that visited सबका false है, let us just get started and talk about it one after another. Get ready? So अब बेसिकली पहला लॉजिक क्या है हमारा, पहला लॉजिक क्या है हमारा वो हमको पता है. The first logic is similar to the in order. So trav is equal to root. We start from there, and then we are saying that while, मैं inner loop लिख रहा हूँ, while trav is not equal to null, a trav is not equal to null, the trav is equal to, a trav is equal to trav dot left. So I am going to the left, और हर बार लेफ्ट के ऊपर जाते जाते किसको पुश करना है, हर बार लेफ्ट के ऊपर जाते जाते किसको पुश करना है, यस राइट. सो यू कैन सिंपली गो अहेड एंड यू कैन पुश द ट्रैव, you can push the trav onto the stack. So this code goes quite similar to that of in order. अब हमें क्या करना है, ऑब्वियसली जैसे नल के ऊपर जाओगे यू हैव टू पॉप अ एलिमेंट. ओके, आई एम वेरी श्योर आई वांट टू पॉप अ एलिमेंट, बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज दैट ट्रैव, अब देखो यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो रहा है. प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो आपका एलिमेंट पॉप हुआ है वो पहली बार में पॉप हुआ है, मतलब लेफ्ट खत्म होने के बाद में पॉप हुआ है, या फिर राइट खत्म होने के बाद में पॉप हुआ है. आई यू आर गेटिंग माई पॉइंट. जो हमारा नोड प्रिंट हो रहा है, आप लोग प्रॉब्लम समझो, सोल्यूशन में देता हूं, आप सोल्यूशन के ऊपर प्लीज मत सोचना, यू जस्ट अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम. ये जो पॉप हुआ है ये लेफ्ट प्रिंट होने के बाद में पॉप हुआ है या फिर राइट प्रिंट होने के बाद में पॉप हुआ है, ये हमके सोचना है. अगर वो लेफ्ट प्रिंट होने के बाद में पॉप हुआ है तो मुझको क्या करना है, अगर लेफ्ट प्रिंट होने के बाद में पॉप हुआ है तो मुझको क्या करना है, मुझको वापस से उसको स्टैक के ऊपर डालना है, मुझको वापस से उसको स्टैक के ऊपर डालना है, और फिर उसके राइट में जाना है, और फिर मुझको उसके राइट में डाल जाना है. एज यू अंडरस्टैंड दिस, हैव अ लुक एट दिस. तो सर मैं कैसे ट्रैक करूंगा, हैव अ लुक एट दिस, लिसन केयरफुली. जब ये पहली बार पॉप होगा, सीट केयरफुली, जब ये पहली बार पॉप होगा, पहली बार पॉप होगा, मैं कह रहा हूं पहली बार पॉप होगा मतलब 30 प्रिंट होने के बाद में पॉप होगा. जब ये पहली बार पॉप होगा 30 प्रिंट होने के बाद में पॉप होगा, सो एट दैट टाइम माय राइट नोड इज नॉट येट विजिटेड. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. एट दैट टाइम माय राइट नोड इज नॉट येट विजिटेड. और जब दूसरी बार पॉप होगा, जब दूसरी बार पॉप होगा तो आपने इस नोड को प्रिंट कर लिया है और उसके बाद में ये पॉप हो रहा है, ये उसके बाद में ये पॉप हो रहा है. आई होप यू गॉट दैट आल्सो. तो बाय लुकिंग एट द राइट नोड, लिसन केयरफुली, looking at the right node, i can guess I can guess, I can understand whether it is popped for the first time, whether it is not popped for the, whether it is popped for the second time. So I can simply check over here. What I can check over here, if if trav dot right is not equal to null, मतलब पहले तो चेक करो उसका राइट नोड है क्या, पहले तो चेक करो उसका राइट नोड है क्या, और अगर राइट नोड है, अगर राइट नोड है तो ये चेक करो, एंड trav dot right dot visited, and I'm saying that right is not visited. If right is not visited, what is the meaning of this? If right is not visited, what is the meaning of this? If right is not visited, so it is popped for first time. It is popped for first time. All I need to do is that I need to push it onto the stack once again. So h dot push, and I can push it onto the stack once again. I can push it onto the stack once again, and then and then and then I can print it. Okay, no, sorry, and then I can go to the right.
trav is equal to trav dot right. I hope that is good. Chalo, I have done that. But otherwise, if you have popped it for second time, if you have popped it for second time, what is the meaning of this? If you have popped it for second time, इसका मतलब क्या है? There are likely chances that इसका राइट खत्म हो चुका है, और अगर इसका राइट खत्म हो चुका है, अब क्या करना है? Yes, go ahead and simply say print it. Print trav dot data. अभी आपने इसको प्रिंट कर लिया ना? अगर आपने इसको प्रिंट कर लिया, प्लीज मार्क इट दैट यस दिस इज विजिटेड. ए विजिटेड is equal to true. A market has visited. Yes, it is visited. That is second thing that we have done. And what is third thing? Go ahead. What is third thing? What is third thing? आपने visited true कर दिया. अब आपको अगला वाला पॉप करना है. अगला वाला पॉप करना है. I can simply say make trav is equal to null. Make trav is equal to null, because if the trav is equal to null, there are likely chances are that you are going to pop the next time. अगर आपने इन ऑर्डर प्री ऑर्डर का पेपर वर्क किया है तो आप लोगों ने नोट किया होगा, जब जब नल हो जाता है तो वापस से अगला वाला पॉप हो ही जाता है. आई होप यू रिकॉल दैट. करेक्ट. तो आई एम जस्ट सेइंग दैट जस्ट मेक इट नल, तो ऑटोमेटिकली वापस से पॉप के कोड में आ जाएगा जिस तरह से हम लोग लूप लिखते हैं उसके हिसाब से. एंड इफ यू अंडरस्टूड दैट, लेट अस जस्ट क्विकली गो अहेड and let us complete the outer loop as well. यहाँ पर एक if का कंडीशन लगा दूं on a safety measure. If stack is not is if the stack is not empty, if the stack is not empty, then and only then you pop the element. After popping the element, check उसका राइट अगर विजिटेड नहीं है, इस नोड को वापस एक बार स्टैक के ऊपर डालो और उसके राइट में चले जाओ. एंड आफ्टर दैट द सेकेंड, अगर उसका राइट विजिटेड है, उस नोड को प्रिंट करो, उसको विजिटेड मार्क करो और उसको नल करो. एंड देन कीप ऑन डूइंग दिस, एंड यू ऑलरेडी नो द कंडीशन. while trav is not equal to null or stack is not empty, I'm saying that you just keep repeating this. That's it, all you need to do. So is this code done? Yes, this code is done. So we have built the entire code. So this code is working, I believe. मैंने बहुत दिनों के बाद में लिखा है, but still I believe it should work. तो आप लोग चाहो तो हम लोग क्विकली एक पेपर वर्क करते हैं, जिसको मैं बार बार रिपीट नहीं करने वाला हूँ. जिसको इंटरेस्ट होगा वो वापस से वीडियो देखना. वैसे भी मुझको ये पढ़ाना नहीं था, और अगर मुझको पढ़ाना होता तो शायद मैंने आपको होमवर्क भी दिया होता. मैंने जानबूझ के आपको होमवर्क भी नहीं दिया था. नाउ सिंस फ्यू स्टूडेंट दे गो अहेड and what is that, and then try to do it by themselves just to respect their hard work. मैंने ये वापस से दिखाया. So if anyone is really interested in, नहीं सर अभी इसको जानना है, वापस से वीडियो देखना, पता चल जाएगा. I'm just going through the entire paperwork step by step. तो going through the entire paperwork step by step, कहाँ से शुरू करते हैं? यहाँ से शुरू करते हैं. A trav is equal to root, and please stay focused. Okay, let us begin. Trav is equal to root and the story begins. The condition is true. Let us go to this. Is it not working? What is not working? Sachin, is it not working or it is not working? आप लेने वाले नहीं थे तो मतलब, Sachin, I'm not very clear what exactly you are asking for. मैंने कहा ना, since few students have done it by themselves, तो I thought of like I'll show you so that at least उन्होंने इतने efforts किए, उनके efforts waste नहीं जाने चाहिए. That's it, nothing else. Let us just go ahead. और मैं कहाँ पर था? S dot push trav. So चलो 50 को push करते हैं, and we will go to the left, and then go to the left. Again, trav is not equal to null. Again, let us push 30, and again go to the left. All right. Again, repeat the process. You push 10 onto the stack. Again, you push 10 onto the stack, and again you go to the left. As you go to the left, and now it is null. Oh, now it is null. So since it is null, inner loop condition is false. You come out. If stack is not empty,
if stack is not empty, trav is equal to h dot pop. Okay, you pop the element, but even though you pop the element, see it carefully, even though you pop the element, हमें print नहीं करना है, हमको ये check करना है a trav's right is not equal to null. Oh sorry, trav's right is not equal to null and its right is not visited. I find that इसका right null भी नहीं है और right अभी तक visited भी नहीं है तो क्या करो, go ahead, push it once again and then go to the right. So push trav onto the stack and then go to the right. Okay, then I go to the right and this much part is done. Let us just come out of this loop. Let us come out of this and let us again go ahead. Again you find that trav is not equal to null. While trav is not equal to null, s dot push और s dot push, अब किसको push कर रहे हैं हम लोग? I hope आप लोग कर रहे हो, try कर रहे हो. Let's push 20 onto the stack. Let us push 20 onto the stack and then let me go to the left of it. Okay, I'm going left of it. The inner loop condition is false. Come out of the loop. Stack is not empty. Trav is equal to s dot pop. And now let me pop the topmost element. I'm popping the topmost element. Good. Have a look at this. अब यहाँ पर दो कंडीशंस है, इसमें से पहला ही कंडीशन फॉल्स हो गया क्योंकि 20 के राइट में कुछ नहीं है. प्लीज पे अटेंशन, 20 के राइट में वैसे कुछ भी नहीं है एंड सिंस 20 के राइट में कुछ नहीं है, आई से दैट अगर 20 के राइट में कुछ नहीं है, आई शुड गो अहेड, आई शुड गो टू द एंड एल्स पार्ट एंड यू शुड सिंपली से दैट printf trav arrow data. Okay, let me just print trav data and I'm printing 20. Okay, I'm printing 20. If I'm printing 20, if I'm printing 20, that is good. Mark it as visited. A 20 को हम लोग ने visited करके mark कर दिया and then you make trav is equal to null. Then you make trav is equal to null. Trav is equal to null, come out. The outer loop, the first condition is false, but the second condition is true. Since second condition is true, stack is not empty, you go inside. Inner loop condition is false. Inner loop condition is false. If stack is not empty, trav h dot pop. Okay, let me pop the topmost element. A topmost element is 10 and now you find that इसका right null नहीं है but इसका but right null नहीं है लेकिन इसका right visited है. Since its right is visited, the condition is false. Go to the else part, printf trav data. Okay, you print 10, a 10 is printed, that is good. After 10 is printed, you mark it as visited and make it equal to null. Mark it as visited and then you make it equal to null. As you make it null, see, go ahead, the outer loop second condition is true, inner loop condition is false. You are going to pop the next element, you pop the next element, which is the next element that you have popped, or next element that we have popped is 30. As I have popped 30, pay attention, as you have popped 30, you see that a 30 का right node है, 30 का right node है, लेकिन वो visited नहीं है. Since वो visited नहीं है, what is to be done? What is to be done? Go ahead, push 30 into the stack once again, push 30 onto the stack once again, and then you go to its right, or you go to its right, and then you repeat the procedure. You find that trav is not equal to null. While trav is not equal to null, push it onto the stack and go to the left. So just repeat one by one. So you put 40 onto the stack and then you go to the left. You go to the left, inner loop condition is false, come out. If stack is not empty, you pop the topmost element. Okay, I pop the topmost element. I pop the topmost element, it is 40. The 40 is popped, 40 is popped. You find that it doesn't have right node. It doesn't have right node. Print that node, mark it as visited, and make trav is equal to null. Okay, go ahead, print that node, mark it as visited, and make it null. Make it null. Okay, good. You continue further. The outer loop, second condition is true. Inner loop condition is false. You go ahead and you pop the next element. I pop the next element, 30. A 30 is popped. 30 is popped. Once 30 is popped, once 30 is popped, I want to check again. इसका जो right node है, a right node is already visited. Since right node is already visited, I just go down. मुझको print करना है, मुझको उसको mark as visited करना है और मुझको उसका trav is equal to null करना है. Let me just go ahead. अभी अभी मैंने 30 pop किया है, 30 pop किया है, 30 को print कर दो, mark it as visited and then make again trav is equal to null. Okay, that is good. Done. You continue further. Again, inner loop condition is false. Stack is not empty. You pop the next element. You pop the next element. I find that 50. 50 is popped. 50 is popped, but the 50's right is not yet visited.
If 50 is right is not yet visited, what is to be done? What is to be done? Push 50 once again onto the stack, push 50 once again onto the stack, and then go to its right. Oh, you go to its right. I go to its right, you continue further. And then again you repeat the procedure. Inner loop, condition is true. अब आपको क्या करना है? You want to keep going on to the left by pushing the element onto the stack. Keep going to the left, pushing the element onto the stack. So continue further. Put 90 onto the stack and go to the left and go to the left. Put 70 onto the stack and then go to the left. Put 60 onto the stack, 60 onto the stack and then go to the left. Okay, that is good. चलो यहाँ तक भी ठीक है. If you just put everything on a stack and we go to the left, the inner loop condition is false. You come out of the loop and check. Okay, trav is equal to s dot pop. If trav is not equal to null and trav is not visited, so पहले तो पॉप करते हैं. ये पॉप किसको करते हैं? 60 को पॉप करते हैं. 60 को पॉप करते हैं, बट आई फाउंड दैट 60 का जो राइट है, ये 60 को राइट है ही नहीं. 60 का राइट है ही नहीं. ये 60 का राइट है ही नहीं. व्हाट इज टू बी डन? What is to be done? Go ahead, print 60, print 60, mark it as visited, and after marking it as visited, make it equal to null. Okay, you go ahead, and again, outer loop, second condition is true, inner loop condition is false. Again, you pop the next element. Next element that you have popped is 70. A 70 is popped, that is good, but you see that 70 is right. 70 is, अभी आपका 70 pop हुआ है, but 70 is right is not yet visited. What is to be done? What is to be done? Go ahead, again push 70 onto the stack, again push 70 onto the stack, and then go to its right. Okay, you go to its right and you repeat the procedure once again. Again, while trav is not equal to null, I want to push it onto the stack. Continue further, you push 80 onto the stack and then you go to its left. You go to its left, the inner loop condition is false. You come out of the loop, you pop the topmost element. The topmost element is 80. Topmost element is 80. You popped it and you continue further. You popped it, you popped it, and then what do you find? You find that 80 के right में कुछ node है ही नहीं. Okay, 80 के right में कुछ node है ही नहीं. You go to the else part. What do you want to do? Oh, I want to print 80. I want to print 80. I want to mark it as visited. I want to mark it as visited, and then I want to make trav is equal to null. If I'm making trav is equal to null, I understand that. I understand that it will continue further. The inner loop condition is false. You pop the next element. Or next element that I have popped is 70. You have popped 70. Good thing is that the 70s right is visited. Since 70s right is visited, again, what is to be done? Go ahead, print 70, print 70, mark it as visited, mark it as visited, and then, and then, and then make it equal to null. Okay, you continue further. You continue further. What is next to be done? The next to be done, again, you pop the next element. You pop the next element. You pop the next element. Next element popped is 90. Next element popped is 90. 90 is out. But you find that 90 is right. A 90 is right is not yet visited. Oh, 90 is right is not yet visited. So go ahead, put it onto the stack, put it onto the stack, and then you go to its right. You go to its right and you again continue the process. Again, you continue the process. While trav is not equal to null, push it onto the stack and then go to its left. Or push it onto the stack and then go to its left. Okay, done. You continue further. If stack is not empty, oh sorry, stack is not empty, you pop the next element. You pop the next element. This has been popped and then you find that इसका right node है ही नहीं. अच्छी बात है, इसका right node है ही नहीं. तो let us go to the right. What is to be done? इसका राइट नोड नहीं था. व्हाट इज टू बी डन? गो अहेड, गो अहेड, इसको अपने पॉप कर लिया है, इसको प्रिंट कर लो एंड आफ्टर प्रिंटिंग दैट यू मार्क इट एज विजिटेड, मेक ट्रैव इज इक्वल टू नल, make trav is equal to null, and you continue the process. Again your stack is not empty. You find that but trav is equal to null. Okay, stack is not empty. You pop the next one, and next one I popped is, let's say, 90. I popped 90, but now I see that 90 is right is already visited. Since 90 is right is already visited, what is to be done next? Okay, a 90 is right is already visited. What is to be done? Go ahead, print 90, print 90,
print 90, mark it as visited, and make it equal to null. Make it equal to null. And then you continue your process further. What is the next job? Okay, you continue the process. Again, I find that the trav is null, but the stack is not empty. Go ahead, pop the next element from the stack. Next element push pop from the stack is 50. Okay, it is 50. Here you find that 50 is right is now visited. Since 50 is right is now visited, go ahead, print 50. Yes, print 50, mark it as visited, mark it as visited, make trav is equal to null. Make trav is equal to null, go back and check the condition of the outer loop. Trav is equal to null, condition is false, stack is empty, again condition is false, you come out of the loop and just check, is it your output of, is it your output of post order? Now you ask the question, so which approach is good? ये visited वाला flag वाला approach good है या टू स्टैक वाला अप्रोच गुड है? आई वुड से दैट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. विच एवर लॉजिक दैट यू फाइंड इट कंफर्टेबल, यू फॉलो दैट. यू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम. वंस यू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम, देन सोल्यूशन क्या अप्लाई करना है, जो आपको ठीक लगे वो सोल्यूशन आप लोग अप्लाई कर लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई होप जिन जिन लोगों ने कोशिश की थी, नाउ दे आर हैप्पी, दे गॉट एटलीस्ट वन सोल्यूशन ऑफ दिस. या गुड. चलो कोई बात नहीं. तो you found that what we are tried is, yes. Somebody is saying that, Gaurav is saying that recursion is the best. Yes, absolutely, recursion is the best. यही तो मैं कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि recursion is really good. अब जिनको recursion पसंद नहीं आता वो लोग post order non recursive कर ले, recursion से प्यार हो जाता है. You always see that. Anyway, let us just go ahead. That was all about how we can do this. इस कोड में और भी कुछ इश्यूज है. मतलब ये कोड चलेगा, डोंट वरी, ये कोड चलेगा, लेकिन कुछ इश्यूज दैट यू विल बी फेसिंग अगर आप इसको प्रॉपरली पूरा एंड टू एंड करते हो तो आई वुड से दैट प्लीज गो अहेड. इफ यू एट ऑल फेस एनी प्रॉब्लम, लेट मी नो आफ्टर द लेक्चर, नॉट इन बिटवीन द लेक्चर. अच्छा, गुरमुख को रिकर्शन से प्यार हो गया. All the best. That is good. Anyway, let us continue further. So that was all about like post order without recursion. Let us go ahead and let us talk about next. ये मैं टाइप नहीं करने वाला हूँ, वैसे मैंने कोड लिख के दे दिया है. से ये कोड चलेगा, यू डोंट वरी. एक बार तो आराम से चल जाएगा, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम, राइट? सो गो अहेड, यू कैन ट्राई इट विथ एनी ट्री दैट यू हैव. करके देखना. इफ यू फेस एनी इश्यूज, प्लीज पिंग मी एट द बिफोर लेक्चर और आफ्टर द लेक्चर. इन बिटवीन द लेक्चर, कल के लेक्चर के स्टार्टिंग में मत पूछना. कल के मतलब जो भी अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके लेक्चर के बीच में मत पूछना. लेट अस जस्ट गो बैक. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट हम लोगों ने डिलीशन ऑफ नोड किया, पोस्ट ऑर्डर नॉन रिकर्सिव किया. तो सर अभी क्या पढ़ना बाकी है? वैसे बाइनरी सर्च ट्री में पढ़ने लायक जो जो चीजें थी वो हमने पढ़ ली है. नाउ रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई वुड लाइक टू फोकस मोर ऑफ कंसेप्चुअली. कंसेप्चुअली मुझको ट्रीज के बारे में और भी कुछ नॉलेज गैदर करना है. सर क्या नॉलेज गैदर करना है? लेट अस गो वन बाय वन. I hope you people recall what is the time complexity of a searching. What is the time complexity of a searching? Searching का time complexity क्या था? You recall that? What is the time complexity of searching? Yes, it is O of H. Absolutely correct. अब जितना height ज्यादा होगा उतना searching slow होगा. You understand that? अच्छी बात है. तो एक काम करो, अब हम लोग, आप लोगों के पास नोटबुक होगा, आपके पास नोटबुक होगा, नोटबुक हो तो नोटबुक निकालो और थोड़ा सा एक डायग्राम ड्रॉ करो. नोटबुक और नोटबुक निकालो और एक डायग्राम ड्रॉ करो. व्हाट इज दैट? मैं आपको नोड्स बताता हूँ. इस ऑर्डर में अगर मेरे पास नोड आ रहे हैं तो बाइनरी सर्च ट्री में वो किस तरह से अरेंज होंगे, किस तरह से अरेंज होंगे. प्लीज पे अटेंशन. द फर्स्ट नोड दैट यू गेट इज लेट्स से 70. ये रूट है. अभी अभी मैंने ट्री बनाना चालू कर दिया है, ये रूट है. तो जो नोड मैंने बनाना चालू किया है तो 70 कहां पर जाएगा? ऑब्वियसली यू फाइंड दैट 70 will become root. That is common sense. Now the next node that I want to insert is, let's say, 60. Can you please tell me where 60 will go? Yes, 60 will go to the left of 70. And you say that, sir, this is normal. Yes, it is absolutely normal. What about 50? What about 50?
The 50 will go to the left of this. Okay. And what about 40? What about 40? The 40 will again go to the left of this. Please note, अभी आप लोग यूजर से, आपने अगर मेनू ड्रिवन प्रोग्राम किया है तो यूजर डेटा एंट्री कर रहा है, और अगर यूजर डेटा एंट्री कर रहा है तो यूजर किसी भी ऑर्डर में एंटर कर सकता है. अब जिस ऑर्डर में यूजर एंटर कर रहा है उसके हिसाब से आपको ट्री में उसके लिए जगह देना है. And then let's say that user is entering 30 20 10 in the order. If 30 20 10, you find that your tree is actually developed something like this, where you find that for each node is kept to the left, to the left, to the left, to the left, and unfortunately इसका right null है, 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 इसका right null है. Don't you think that ये ट्री कम लग रहा है, ये ट्री कम लग रहा है, ये लिंकली ज्यादा लग रहा है? Yes, absolutely. ये ट्री कम लग रहा है, ये लिंकली ज्यादा लग रहा है. I'm saying that such type of tree is said to be skewed binary tree. Such type of tree is said to be skewed binary tree, and that was, I was giving you this example. So this one is left skewed binary tree. This is left skewed binary tree, and this one is like right skewed binary tree. One is left skewed binary tree, and the second one, let's say, right skewed binary tree. So in binary tree, if only left or only right links are used, tree grows only on one side. Such tree is called as skewed binary tree. So either you can call it as left skewed or it could be like right skewed, depending on the data जिस तरह से आपको input दिया गया है, या तो left skewed या तो right skewed बन सकता है. And what is the time complexity? The time complexity for any binary search tree is nothing but O of h, where h stands for height. अगर आप लोग skewed binary tree आप लोग देख रहे हो, the skewed binary tree is something where the tree have maximum height which is same as number of elements. So आपने 7 एलिमेंट इंटर किए और आपका हाइट भी लगभग अभी 7 है, 6 है टू बी फ्रैंक, बट देन हाइट is directly dependent on like a number of elements. So I can say that the time complexity of searching in skewed binary tree becomes O of n. O of n, this is like linked list, and I would say that this is very poor way, this is really poor way of having a tree. तो आई एम वेरी श्योर अगर आप लोग कभी बाइनरी सर्च ट्री बना रहे हो तो आप लोग कभी भी स्क्यूड बाइनरी ट्री नहीं बनाना चाहोगे. एम आई करेक्ट? राइट. सो स्क्यूड बाइनरी ट्री इज वर्स्ट चॉइस दैट यू आर मेकिंग इट. लेकिन टू बी फ्रैंक ये आपके हाथ में नहीं है. आपने कोड तो बाइनरी सर्च ट्री का लिखा है, ये किसके हाथ में है? अल्टीमेटली जिस तरह से डेटा एंटर हो रहा है उसके हिसाब से आप लोग उसको अरेंज कर रहे हो. अभी आपने अगर कल का कोड अगर मेनू ड्रिवन तरीके से लिखा होगा, ट्री का कल का कोड अगर आपने मेनू ड्रिवन तरीके से लिखा होगा, यू मस्ट हैव सीन दैट, कि अगर आप लोग एक एक वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो, देयर लाइकली चांसेस आर दैट कि ये लेफ्ट स्क्यूड या राइट स्क्यूड हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर इन विच द डेटा इज एंटर्ड. कोडिंग अलग से नहीं करना है, कोड आपका वही है. तो सर लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कि इसका सर्चिंग ऑप्टिमाइज्ड हो, हैव लुक एट दिस. इन दिस पर्टिकुलर केस, अगर आपको कोई भी नोड सर्च करना है तो आपको कितने इटरेशन लगेंगे मैक्सिमम? What is the time complexity of searching? The time complexity, you find that it depends on n. It depends on n in this particular case, straightforward. क्योंकि यहाँ पर h and n they are like a directly proportional. It is O of n, and I'm saying that अगर आपको कोई भी नोड ढूंढना है तो आपको मैक्सिमम कितने इटरेशंस लगेंगे? I can simply say that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So you see that over here in this example, maximum 7 iterations. A maximum 7 iterations it will take. मैं क्या कह रहा हूं? Just visualize that. मैं क्या कह रहा हूं? Please visualize that. Just if you rearrange the same tree, if you just rearrange the same tree, same number of same elements. Suppose that if I just rearrange the same tree, something like this, saying that this is a root, इसका left it is 20, इसका right it is 60, and then it is let's say 10, it is let's say 30, 60, it is let's say 50,
let's say 70. All right. And if this is a tree, again उतने ही nodes है, वही node है. But now you find that in this particular case, अगर आपको कोई भी node search करना है तो maximum आपको कितने iterations लगेंगे? In this particular case, how many iterations you need maximum to search into the same tree? So you find that it is 3. तो सर फर्क क्या हुआ है? फर्क सिर्फ ये हुआ है the arrangement of the node. द अरेंजमेंट ऑफ अ नोड, यहाँ पर ये जो आपका ट्री है, ये जो आपका ट्री है, दिस ट्री इज सेड टू बी द स्क्यूड बाइनरी ट्री. इट इज सेड टू बी द स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री. व्हाइल द राइट साइड ट्री जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री. इट इज अ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री. In the first one, if you see that this one is having, let's say, maximum height, a maximum possible height, while the balanced binary search tree is exactly reverse of it. I'm saying that it is having a kind of a minimum possible height, and that is the beauty of this. Obviously, ideally जब भी आप लोग ट्री बनाना चाहोगे, आई एम वेरी श्योर you want to make a tree with with minimum possible height. So let us just take a look at this. More formally. What would be kind of definition of, what would be the definition of balanced binary search tree? मैं सिर्फ आपको conceptually बताया. तो formally उसका definition क्या होता है? Here you see to speed up the searching, height of binary search tree should be minimum as possible. If nodes in binary search tree arranged so that height is kept as less as possible, it is called as balanced binary search tree. And to understand the official definition of balanced binary search tree, you should be knowing something called a balance factor. What is balance factor? The balance factor is nothing but height of left subtree minus height of height of left subtree minus height of right subtree. ये typing mistake है. ये height of left subtree minus height of right subtree. तो आप, this is nothing but you call it the balance factor. तो सर वो कैसे निकालते हैं? हाइट ऑफ लेफ्ट, हाइट ऑफ राइट. एक काम करते हैं, फटाफट से कैलकुलेट करते हैं एंड ट्राई टू फाइंड आउट ये जो नोड मेरे को दिख रहा है, इसका थोड़ा सा मैं एक बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ. सिट केयरफुली. आई वांट टू कैलकुलेट द बैलेंस फैक्टर ऑफ दिस नोड. एक, यू वांट टू कैलकुलेट द बैलेंस फैक्टर ऑफ दिस नोड. गो अहेड, टेक अ लुक एट दिस. अब आपको हाइट कैसे कैलकुलेट करना है आपको पता है. दिस इज सबसे नीचे वाला, इसका हाइट होता है 0. ये कल हम लोगों ने किया हुआ है. 0, 1, 2, 3, 4, 5. I'm very sure the height of this is nothing but 5. Okay, that is good. And then height of right side. A 70 के right में null है. What is the height? 70 के right में null है. What is the height? Height of null tree is nothing but -1. Oh, that is also we learn. Okay, that is good. And if you understood that, then what is the balance factor of 70? What is balance factor of 70? Balance factor of 70 is 5 minus -1. It is 5 minus -1. I guess the balance factor is 6. Balance factor is 6. आप लोग जो भी आपके पास कोई भी ट्री होगा, आप उसके साथ जाके एक बार कैलकुलेशन करके देख सकते हो. लाइक फॉर एग्जांपल, यू कंसीडर दिस ट्री. मुझको 90 का, मुझको 90 का बैलेंस फैक्टर निकालना है. अगर मुझको 90 का बैलेंस फैक्टर निकालना है, सो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज बैलेंस फैक्टर ऑफ 90? ये पहले लेफ्ट का, इसका 70 का हाइट कितना है? व्हाट इज द हाइट ऑफ 70? 0, 1, 2. I guess height of 70 is 2, right? What is the height of 100? What is the height of 100? Height of 100, height of 100 is, yes, it is 0. It is 0. And then 2 minus 0. A 2 minus 0 is nothing but the balance factor will be equal to 2. इसका 90 का बैलेंस फैक्टर विल बी इक्वल टू 2. आई होप यू गॉट द पॉइंट. तो आपके पास कोई भी नोड हो, कोई भी ट्री हो, आप लोग हर एक ट्री का बैलेंस, हर एक ट्री के हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर निकाल सकते हो. प्लीज नोट, बैलेंस फैक्टर ये टर्मिनोलॉजी ट्री की नहीं होती है, ये नोड की टर्मिनोलॉजी होती है. हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर आप लोग निकाल सकते हो. लेकिन सर आप बाइनरी सर्च ट्री बताने वाले थे. हाँ बता रहा हूँ, नाउ पे अटेंशन. अब मैं आपको बाइनरी सर्च ट्री बता रहा हूँ, पे अटेंशन.
इन बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री, बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री उसको कहते हैं, बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री उसको कहते हैं जहां पर बैलेंस फैक्टर ऑफ ईच नोड इज आइदर -1 और 0 और +1. Balance factor of each node is -1, 0 और +1. अगर -1 से नीचे है then it is not balanced. अगर +1 से ऊपर है again it is not balanced. अगर अगर -1 से नीचे है then it is not balanced. अगर +1 से ऊपर है it is not balanced. So can you quickly tell me, do you believe that ये जो ट्री आपको दिख रहा है, is this tree is balanced tree? Oh no, not at all, not at all balance, not at all balance. और बाय द वे मैं क्या कह रहा हूं, अगर एक भी नोड का अगर बैलेंस फैक्टर -1, -1, 0 और +1 के अलावा कुछ है, देन यू कैन से दैट ट्री इज नॉट बैलेंस फॉर अ सिंगल नोड. यहाँ तो बहुत सारे नोड की वाट लगी हुई है, दैट यू आर एबल टू सी दैट. एंड एंड तो सर इस ट्री को हम लोग किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं? A tree can be balanced by applying series of left or right rotations on unbalanced nodes. तो जो नोड आपके अनबैलेंस है, जो नोड अनबैलेंस है, उसके ऊपर आप लोग लेफ्ट या राइट रोटेशन लगा सकते हो. नाउ योर विजुअलाइजेशन इज नीडेड, प्लीज पे अटेंशन. लेफ्ट या राइट रोटेशन लगा सकते हो. सो व्हाट डू मीन लेफ्ट और राइट रोटेशन? लेफ्ट और राइट रोटेशन, आई एम सेइंग दैट you consider one node as an axis. You consider one node as an axis. I'm saying that ये 70 को आप लोग एक्सिस करके ट्रीट करो. अब यहां पर अगर आपको इसको बैलेंसिंग करवाना है तो यू कैन डू वन थिंग, आप इसको राइट रोटेट कर सकते हो. You could treat 70 as a kind of axis and now you can do the right rotation. So please visualize that. आप लोग वहां पर आपका पॉइंट कंसिडर करो and then you can pull 70 to the right side. If you pull 70 to the right side, can you please tell me root कौन होगा and how the tree will be organized? अगर मैं 70 को नीचे खींचता हूं तो क्या हो जाएगा? Yes, obviously I understand that in that particular case 60 will be on the top, a 60 will be on the top, 70 will probably come to the right of that, and then rest all nodes, you know, that will follow 60. I hope you are able to visualize that. This is very simple that I have shown you. Okay, this is done. But now, do you believe that it is balanced? Do you believe that this is balanced? Not really. I want to once again check the balance factor. Can you calculate the balance factor of 60 once again? मैंने कहा calculate करो, guess मत करो. Calculate once again. Balance factor of 60. Balance factor 0, 1, 2, 3, 4. A left का 4 है, left का 4 है, और right का, a right का, you'll find that 0. So 4 minus 0 comes out to be 4. Oh, I understand that this balance factor is equal to 4. So is it balanced? Is it balanced? Oh, no way. So if you want to again, you say that ये आपने इसको राइट रोटेशन किया और आपने भी इसको बैलेंस किया, अब इसके साथ क्या करोगे? कॉमन सेंस. इसके साथ क्या करोगे? सेम, गो ऑन 60, 60 एज एक्सिस एंड अगेन डू द राइट रोटेशन ऑन दैट, अगेन राइट रोटेशन ऑन दैट. और वापस से प्लीज विजुअलाइज, मैं कोई बड़ा और आपको रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं, जस्ट विजुअलाइज दैट. खींचो वापस से, किसको खींचना है? 70 को वापस से नीचे खींचो. सो इफ यू अगेन पुलिंग द 70, again you are pulling the 70, considering 60 as axis, can you tell me what will be the new root? Oh yes, new root will be now 50. A new root will be 50 and then 60 will go to the right of that, 70 is going right of that, and then we have got 40, 30, 20 and 10. Oh, that is fantastic. But can you please tell me now at this moment what is the new balance factor? New balance factor, please do the calculation. 0, 1, 2, 3. This side it is 3, 0 and 1. 3 minus 1 comes out to be 2. 3 minus 1 comes out to be 2. So your balance factor is now equal to 2. So my question, is this balanced? Not yet. हमारा रेंज क्या है? -1 to +1 का रेंज है. 2 is not yet balanced. Okay, what is to be done? Again rotate right on 50. Again rotate right on a 50.
You rotate right on a 50, and now tell me who will become new root. Oh yes, new root will be probably 40. You go ahead, I guess 40 will be on the top, a 40 will be on the top, and then a 40 will be on the top. So 30, 20, 10. Okay, that is good. Or 40 के right में, 40 के right में, then will be 50, 60, and 70. And can you please tell me what is balance factor of 40 now? Oh yes, ये सबका सही आया. So balance factor of this is equal to 0. अब इसका मतलब ये है कि this node is now well balanced. So do you want to say that the tree is balanced? Is tree balance? नहीं, एक नोड बैलेंस हो गया है. रुको, एक नोड बैलेंस हो गया है. यू नीड टू इंश्योर दैट हर एक नोड आपका बैलेंस होना चाहिए. ओ हर एक नोड आपका बैलेंस होना चाहिए. व्हाई डोंट यू चेक द बैलेंस फैक्टर ऑफ दिस नोड? कैन यू प्लीज चेक द बैलेंस फैक्टर ऑफ दिस नोड and do the calculation? And the calculation again says that this is 0 1, यहाँ पर 0 1 और यहाँ पर -1. A 1 minus minus 1, 1 minus minus 1 is saying that इसका balance factor is equal to 2. A 1 minus minus 1 मतलब 1 plus 1, it is 2. And if it is 2, I need to go ahead, I need to once again do the right rotation. And ए मतलब क्या करना है अभी मुझको? I want to do the right rotation on 30. अगर मैं right rotation on 30 करता हूं तो क्या होगा? अगर मैं राइट रोटेशन में 30 करता हूं तो क्या होगा? यस, 20 विल बिकम रूट. ए रूट नॉट रूट, 30 की जगह पे 20 आ जाएगा. ए रूट तो अभी भी 40 रहने वाला है, 30 की जगह पे वहां पर 20 आपके एक्सिस के ऊपर 20 आ जाएगा. सो जिसको आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर किया है दैट विल बी 20. ओके, यू कंटिन्यू फर्दर. आई एम सेइंग दैट लेट अस गो अहेड. तो 20 यहां पर आ जाएगा, ए 30 उसके नीचे आएगा और 10 यहां पर आ जाएगा. ऑब्वियसली 40 अभी भी अपनी जगह पे है. एंड देन इट लाइक से 60 एंड सॉरी 50 रह गया, माय मिस्टेक. दिस लाइक अ 50, दिस इज 60 एंड दिस इज 70. ओके, दैट इज गुड. नाउ टेल मी व्हाट इज द न्यू बैलेंस फैक्टर ओवर हियर? अब इसका बैलेंस फैक्टर कितना है? 20 का बैलेंस फैक्टर 0. वेरी गुड. और 10 का बैलेंस फैक्टर, 10 का बैलेंस फैक्टर, यस अगेन इट इज 0. और 30 का बैलेंस फैक्टर, यस दैट इज आल्सो 0. ए मतलब ये जिसको मैंने बैलेंस किया है उसका लेफ्ट सब ट्री बैलेंस हो गया है. और यस, इसका लेफ्ट सब ट्री बैलेंस हो गया है. अब व्हाट अबाउट राइट सब ट्री? व्हाट अबाउट राइट सब ट्री? जस्ट चेक करो, 50 का बैलेंस फैक्टर निकालो. 50 का बैलेंस फैक्टर पहले बताओ. 50 इज बैलेंस फैक्टर, yes it is -2. 50's balance factor is -2. And if it is -2, what I need to do? माइनस में जब भी होता है तब मुझको लेफ्ट रोटेशन करना पड़ता है. गो अहेड एंड डू द लेफ्ट रोटेशन. एज यू डू द लेफ्ट रोटेशन व्हाट विल हैपन? As you do the left rotation, what will happen? 60 will come in place of 50, and 50 will become its left child. Okay, and that is the reason what diagram you will get is something like this. And now you tell me what is the balance factor of this new? इसका balance factor 0, इसका balance factor 0, इसका भी balance factor 0. Now tell me, is this tree is balanced? Is this tree balanced? Yes, this is my balanced binary search tree. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बार जीरो ही होना चाहिए. ये जीरो होना चाहिए जरूरी नहीं है. It could be +1, it could be -1, it could be 0. It could be +1, it could be -1, it could be 0. I hope this is clear. What is balanced binary search tree and how the things go? Obviously, थोड़ा सा number of nodes शायद आपको कैलकुलेट करके देखने चाहिए. ए नंबर ऑफ नोड्स थोड़े से कैलकुलेट करके देखने चाहिए. लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट नंबर ऑफ नोड्स. अब यहाँ पर अगर आप इसका हाइट चेक कर रहे हो, यहाँ पर हाइट कितना है? व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस न्यू ट्री? इस नए ट्री का हाइट कितना है? 2. यस, हाइट इज इक्वल टू 2. पे अटेंशन. इफ द ट्री, मैं यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर लूं. लेट्स से इट वाज 40, इट वाज 20, इट वाज 10, इट वाज 30, इट वाज 60, it was 50, it was 70. You continue further. What I'm saying is that height is equal to height is equal to 2. Have you calculated
टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने? कैन यू प्लीज काउंट टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने? टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर 7. Total number of nodes are 7. So I can simply say that the total number of the node count is equal to 2 raised to h plus 1 minus 1. Can you note that? 2 raised to h plus 1 minus 1. Oh, that is great. In general, अगर आपको यकीन नहीं होता है, you continue further and you can draw one more diagram with, let's say, height is equal to 3. अगर हाइट 3 कंसिडर करते हो एंड लेट मी ड्रॉ, अब मैं सीधा ड्रॉ कर रहा हूं, मैं बाइनरी सर्च ट्री मैंने ड्रॉ नहीं किया, मैंने सिर्फ बाइनरी ट्री ड्रॉ किया, बट आई गेस द फॉर्मूला रिमेन्स सेम. हाँ, हैव यू नोटेड? नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस द नंबर ऑफ नोड्स, सो आई टोल्ड यू द फॉर्मूला यहाँ पर है. नंबर ऑफ नोड्स इस ट्री में कितने? हैव यू डन काउंटिंग? Have you done counting? Yes, it is 15. So here you find that the number of nodes in this case are 7. Number of nodes in this case are 15. Okay, that is good. Hey, wait for a minute. There is few more things. There is a concept, और जो usually MCQ exams जब होते हैं उसमें ये concept usually आता है. यहाँ पर how many leaf nodes are there? How many leaf nodes are there? Can you count it over here? How many leaf nodes are there? Leaf nodes. Yes, the leaf nodes over here, there are 8 leaf nodes. There are 8 leaf nodes. And if you count it over there, oh, over here, whatever you see, there are 7 non-leaf nodes. There are total 7 non-leaf nodes. I hope you are able to see that. So considering the height, I'm saying that number of leaf nodes, total leaf nodes, leaf nodes is equal to 8. So number of leaf nodes is equal to 2 raised to h, and non-leaf nodes, non-leaf nodes yes, it is 2 raised to h minus 1. It is 2 raised to h minus 1. I hope you are able to see that. It is leaf node, and you find that the non-leaf node in our case is equal to 7. Okay, that is good. एग्जाम में मैंने देखा है कि लोग और भी कुछ टर्म्स यूज करते हैं. द लीफ नोड्स, दे आर आल्सो समटाइम रेफर्ड एज external nodes. They are also referred as external nodes, and non-leaf nodes, they are also referred as internal nodes. So कभी कभी ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं कि instead of like leaf node and non-leaf node, they are asking how many external nodes are there and how many internal nodes are there. So at that time you should be having a formula. Acha, okay, this is how the things can be calculated. This is how things can be calculated. Now it is in front of you. If this is clear, calculations clear हो गए होंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब by the way question is that वो जो left rotation और right rotation, ये basically होता कैसे? A bit of logic of left rotation, right rotation. मैं left rotation, right rotation वापस से एक बार, I do not want to waste your time. ठीक है, वापस से हम लोग कोड, अगर आपको इंटरेस्ट है, I can share the code with you. I got ready-made code, but you understand logic. Right rotation जब हम लोग करते हैं, तो how right rotation is to be taken care. मैं पेपर वर्क करके आपको दिखा रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन. पेपर वर्क करके दिखा रहा हूं राइट रोटेशन कैसे होने वाला है. 40 के ऊपर अगर मैं राइट रोटेशन करने की कोशिश करता हूं, ऑब्वियसली लिसन केयरफुली, अभी ये ट्री बैलेंस्ड है, मैं सिर्फ यहां पर मैं बैलेंसिंग नहीं पढ़ा रहा हूं, यहां पर मैं राइट रोटेशन पढ़ा रहा हूं. आई रिपीट वंस अगेन, यहां पर टॉपिक का नाम राइट रोटेशन है, बैलेंसिंग नहीं है. पहली चीज तो आप लोग यहां पर अच्छे से देख सकते हो, 40, 20, 10, 30, 60, द ट्री इज ऑलरेडी बैलेंस्ड ट्री. ट्री इज ऑलरेडी बैलेंस ट्री, क्योंकि बैलेंस फैक्टर या तो 0 है, या तो 1 है, या तो -1 है. सो इट इज बैलेंस्ड. बट स्टिल अगर मुझको इसके ऊपर राइट रोटेशन करना है, तो राइट रोटेशन करते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है,
और क्या होना चाहिए, व्हाट आर द चैलेंजेस, लेट अस जस्ट टेक अ लुक एट दिस। कोई मुझको बताएगा, ये लास्ट वाला एग्जांपल ज्यादा आसान था। यहाँ पर आपने नोट किया, वहां पर सिर्फ लेफ्ट का नोट था, राइट में कुछ था ही नहीं। तो यू नो इट वाज सो इजी, यू जस्ट पुल इट टू वन साइड एंड यू से दैट ओ दिस इज वर्किंग। बट वेट, अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मुझको मुझको 40 के ऊपर राइट रोटेशन करना है। नाउ कैन यू टेल मी, इफ आई जस्ट पुल दिस 60 डाउन, इफ आई जस्ट पुल दिस 60 डाउन, व्हाट विल हैपन? 20 की जगह पे कौन आ जाएगा? सॉरी, 40 की जगह पे कौन आ जाएगा? 40 की जगह पे कौन आ जाएगा? ओ यू आर वेरी श्योर, वट एवर यू आर सेइंग इज करेक्ट। ए 20 विल कम ऑन द टॉप, सी इट केयरफुली। 20 के राइट में, ए बोलो फटाफट, 20 के राइट में, यस ऑब्वियसली इट विल बी 14। और 40 के राइट में, 40 के राइट में इट विल बी 16। 20 के लेफ्ट में कौन आएगा? 20 के लेफ्ट में कौन आएगा? अगेन you keep a look at this and you are pulling this, as you are pulling this, so ये 60 नीचे चला गया, 40 उसकी जगह पे आ गया, 20 has gone up, you are able to see that, and obviously 10 जो उसके लेफ्ट में था वो उसके साथ साथ ऊपर चला जाएगा। I hope you are able to visualize, and if you are able to visualize, I am saying that 10 goes on the top, but इस सारे चक्कर में एक प्रॉब्लम हो गया। What is the problem there? What is the problem there? Oh, 30 there is a problem. Earlier you seen that 20 के राइट में 30 था, 20 के राइट में 30 था। अब सिंस आपने उसको खींच ले लिया, सिंस आपने उसको खींच लिया, अब 20 के राइट में 40 आ गया। अगर 20 के राइट में 40 आ गया तो सर वो 30 जाएगा कहां पर? कैन यू प्लीज टेक अ लुक एट एंड टेल मी व्हाट इज अ गुड प्लेस फॉर 30? Oh yes, good place for 30 should be 40's left. Am I correct? Yes, absolutely. So you find that ये यहाँ पर जाना चाहिए, एंड जब मैं यहाँ पर इस ट्री के ऊपर राइट रोटेशन कर रहा हूँ, जब मैं इस ट्री के ऊपर राइट रोटेशन कर रहा हूँ, एट दैट टाइम ए भाई तो आपने यहाँ पर नोट किया, इन दिस केस रूट वाज पॉइंटिंग टू दिस नोड, रूट वाज पॉइंटिंग टू दिस नोड। आफ्टर right rotation is completed, right rotation will is completed, the root will point to this node. Am I correct? अब नया root is nothing but 20, नया root is nothing but 20. Okay, that is good. Wait for a minute. Purposefully similar tree I have drawn below, purposefully similar tree I have drawn below. Let us consider one more tree, and for this tree, if you want to do the right rotation, if you want to do the right rotation, now what should happen? अगर इस ट्री को राइट रोटेशन करना है तो क्या होना चाहिए? आई गेस इट विल बी स्टिल सिमिलर, इजंट इट? इट स्टिल सिमिलर, बट इन दिस केस देयर इज वन चेंज। वापस से 20 ऊपर आएगा, 60 नीचे जाएगा, 10 यहां पर आएगा और 40 के लेफ्ट में 30 जाएगा। दैट पार्ट विल रिमेन सेम। हाउएवर 40 को कौन पॉइंट कर रहा है? 40 को पॉइंट कौन कर रहा है? 50 का लेफ्ट पॉइंट कर रहा है। वो 50 का लेफ्ट पॉइंट कर रहा है, सो व्हाट विल हैपन आफ्टर रोटेशन? what will happen after rotation? After rotation 50 के लेफ्ट में 20 आएगा, after rotation 50 के लेफ्ट में 20 आएगा। I hope you understand that. See, ultimately rotation process remains same, rotation process remains same. In earlier case root was pointing to this particular node, this particular node, so now afterwards root will start pointing to the 20. But in this particular case, 40 was the node earlier over here, parents left was pointing to that, parents left was pointing to that. After doing rotation, the 20 will come in place, so parents left will point to 20, parents left will point to 20. बाद में मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, just pay attention. What about this case? What about this case? Again the tree is similar, तो वापस से अगर मैं इसके ऊपर राइट रोटेशन करता हूं, what will happen? अगर मैं इसके ऊपर राइट रोटेशन करता हूं, what will happen? Again the rearrangement will be still same, rearrangement will be still same, but now what is the difference? यहां पर क्या होगा? Yes, you find that the 20 will come to the 5's right, yes parents right. Now you find that ये यहां पर parent का right इसको point कर रहा है, parent का right इसको point कर रहा है, so after doing rotation 20 will come in place,
and if 20 comes in place, then 5 writing right will point to that. कुछ याद आया? कुछ याद आया? अरे कुछ याद आया क्या? यस, डिलीशन लॉजिक, एब्सोल्युटली. सो जो केयर हमने वहां पर डिलीशन में किया था, ये जो केयर हमने डिलीशन में किया था, समथिंग सिमिलर केयर मुझको यहां पर भी करना पड़ेगा. अगर आप लोग कोड लिखने के बारे में सोच रहे हो तो, अगर आप लोग कोड लिखने के बारे में सोच रहे हो तो ये आपको यहां पर भी करना पड़ेगा. यू कैन ऑलवेज से दैट, यू कैन से दैट दिस इज एक्सिस. आप इसको एक्सिस कह सकते हो. एंड इफ यू आर कॉलिंग दिस एज एक्सिस, आई एम वेरी श्योर यू कैन कॉल दिस एज, लेट्स से न्यू एक्सिस. यू कैन से न्यू एक्सिस. अगर आप लोग राइट रोटेशन कर रहे हो, अगर आप उसको राइट साइड में पुल कर रहे हो, द न्यू एक्सिस इज गोइंग टू बिकम एक्सिस. And then what I need to take care? What I need to take care? If axis is root, if axis is root, then new axis, then root will start pointing to the new axis. If axis is parents left, then 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 after some time it will, after rotation, it will start pointing to the new axis. And if axis is parents right, then new axis, it will start pointing, sorry, my mistake, it will start pointing to this. Parents right will start pointing to the new axis. अरे have you got, are you getting the point? प्लीज नोट, ये कोड कोई बहुत बड़ा कोड नहीं है. कोड कोई बहुत बड़ा कोड नहीं है, लेकिन इफ यू आर एबल टू डू द पेपर वर्क, आई बिलीव इट इज मोर देन सफिशिएंट. एक्चुअल कोड लेवल के ऊपर जाने की एज सच कोई जरूरत नहीं है. आई बिलीव सो. इसलिए मैंने आपको सिर्फ बताया कि दीज आर द स्टेप्स दैट यू फॉलो इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन राइटिंग अ कोड. तो जैसे अभी आप लोगों ने स्टेप्स फॉलो किए, यू आर कॉलिंग इट एक्सिस एंड न्यू एक्सिस, उसके हिसाब से आप लोग कोड लिख सकते हो. राइटिंग कोड इज नॉट समथिंग वेरी ग्रेट स्टफ, यू नो. यू कैन ऑलवेज राइट, यू नो, न्यू एक्सिस is nothing but axis left. Oh, you see that. After that, after that you continue further. You simply say that न्यू एक्सिस के राइट में, ए न्यू एक्सिस के राइट में एक्सिस आने वाला है. ओ यू आर सेइंग दैट गो अहेड, यू वांट टू से दैट न्यू एक्सिस के राइट में एक्सिस आने वाला है. ओ इट इज वेरी इजी. हाउएवर, लेकिन इन दैट केस न्यू एक्सिस का जो राइट है, जो ओल्ड राइट है, वो शायद ऑर्फन हो जाएगा. ये उसको ऑर्फन नहीं होने देना है. तो 30 को कहां पर भेजना है? ए 30 को कहां पर भेजना है? 30 को भेजना है, ये जो ओल्ड एक्सिस था उसके लेफ्ट में भेजना है. उसको कहां पर भेजना है? एक्सिस के लेफ्ट में भेजना है. सो यू कैन ऑलवेज टेक केयर, एक्सिस डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू न्यू एक्सिस डॉट राइट. न्यू एक्सिस डॉट राइट. Okay, that is good. And the last step, and what is the last step? The last step is that if your axis is root, if your axis is root, can you complete the last statement? If axis is equal to root, can you please complete the last statement? Yes, absolutely. You can simply say that now root is equal to new axis. And then something similar, a similar if else वाले statement जैसे हम लोग डिलीशन में लिखे थे, on the parallel you can complete, continue further. If axis is equal to parents left, parent left is equal to new axis, else parent right is equal to new axis. And then you can complete the logic if you are really interested in. तो मुझको आपको ये बताना है, कोड मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर लिखना है तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है. इट इज हार्डली 4 लाइन्स ऑफ कोड दैट यू कैन राइट इट. यू जस्ट अंडरस्टैंड अ कंसेप्ट कि जब हम लोग राइट रोटेशन करते हैं, then it is converted from here to here. Someone was asking me, so is it AVL tree? नहीं, मैं AVL tree मुझको आपको पढ़ाना है, लेकिन AVL tree पढ़ाने के लिए जो फाउंडेशंस चाहिए, वो फाउंडेशंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं. टेक अ लुक एट द नेक्स्ट. टेक अ लुक एट द नेक्स्ट. कैन यू प्लीज टेल मी, लेफ्ट रोटेशन जब होगा तो क्या करना चाहिए आपको? लेट्स से मुझको 40 के ऊपर लेफ्ट रोटेशन करना है. अगर मुझको 40 के ऊपर लेफ्ट रोटेशन करना है, मुझको 40 के ऊपर लेफ्ट रोटेशन करना है, तो विल यू प्लीज हेल्प मी? विल यू प्लीज हेल्प मी? हम लोग इसको नाम देते हैं, हम लोग इसको एक्सिस कहते हैं, और इसको हम लोग, सॉरी, ये अभी न्यू एक्सिस कौन होगा? अगर मैं लेफ्ट रोटेशन करूंगा तो न्यू एक्सिस कौन होगा? डायग्राम देख के समझो, मैंने कहा ना कोड मत समझो, डायग्राम देख के समझो. यू अंडरस्टैंड दैट ऑब्वियसली दिस विल बिकम न्यू एक्सिस. सो आई एम वेरी श्योर दैट आफ्टर डूइंग लेफ्ट रोटेशन, आफ्टर डूइंग लेफ्ट रोटेशन, what I need to do,
what I need to do, the 60 will come on the top. Okay, yes, 60 will come on the top. 60 के लेफ्ट 60 के लेफ्ट में क्या आएगा? अभी हम लोग पुल कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, वी आर पुलिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, वी आर पुलिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, व्हाट विल हैपन, हम लोग ऐसे पुल कर रहे हैं तो 60 will go on the top. If 60 goes on the top, what will be there? Yes, the 40 will be to the left of this. और 40 के लेफ्ट में क्या आएगा? और 40 के लेफ्ट में क्या आएगा? वो 40 के लेफ्ट में it will be 20. So इसके लेफ्ट में आएगा 14 और 40 के लेफ्ट में आएगा 20. Okay, that is great. This is done. But what is next? What is next? Is 60 is on the top. As 60 is on the top, at 60 is on the top, अब क्या करना चाहिए? 60 becomes root. Okay, that is okay. 60 के राइट में क्या आएगा? 60 के राइट में, ये 60 के राइट में पहले 70 था, ऑब्वियसली 70 विल बी एज इट इज, बट इस सारे चक्कर में 60 के लेफ्ट में जो नोड था वो बेचारा ऑर्फन हो गया. हाँ, उसका क्या करना है? यस, यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, वो 40 के राइट में चला जाना चाहिए. दैट इज प्रीटी सिंपल. एंड देन यू कंटिन्यू विथ योर लॉजिक. अगर आपका रूट अभी एक्सिस को पॉइंट कर रहा था, अगर आपका रूट एक्सिस को पॉइंट कर रहा था, तो ये पूरा रोटेशन खत्म होने के बाद में रूट will start pointing to the new axis. A root will start pointing to the new axis. I guess that जैसे मैंने यहाँ पर 3 लाइन का 4 लाइन का कोड लिखा है, on the parallel 4 lines of code can be very well written over here. Left rotation. Is this clear to everyone? Okay, great. Now you ask the next question. अब कोई मुझको इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, लेफ्ट रोटेशन कब करना चाहिए और राइट रोटेशन कब करना चाहिए? उससे पहले लेफ्ट और राइट रोटेशन क्यों करना चाहिए? व्हाई टू डू लेफ्ट और राइट रोटेशन? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस? हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, पहले ये बताओ, नहीं तो बाद में पता चलेगा सर सब कुछ पढ़ लिया लेकिन इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा. हाँ, यस, इट इज बेसिकली फॉर बैलेंसिंग. इट इज बेसिकली फॉर द बैलेंसिंग. तो बैलेंसिंग के लिए, हाँ, बैलेंसिंग के लिए वी आर बेसिकली डूइंग लेफ्ट रोटेशन और राइट रोटेशन. ये आपको समझ में आ गया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि लेफ्ट रोटेशन कब करना चाहिए और राइट रोटेशन कब करना चाहिए? लेफ्ट रोटेशन कब करना चाहिए, राइट रोटेशन कब करना चाहिए? ये आपको थोड़ा सा अंदाजा इस डायग्राम से भी आ गया होगा. जहां जहां पर बैलेंस फैक्टर पॉजिटिव था, आपने नोट किया, जहां जहां पर बैलेंस फैक्टर 1 से ज्यादा था, वहां वहां पर हमने राइट रोटेशन किया था. और जहां जहां पर बैलेंस फैक्टर -1 से कम था, जहां जहां पर बैलेंस फैक्टर -1 से कम था, तो हम लोगों ने इसका लेफ्ट रोटेशन किया था. आई होप यू हैव सीन दैट. गुड. ओके, वैसे ये देख के पता चली जाएगा, नो डाउट ऑन दैट. लेट मी क्विकली रिपीट दिस पार्ट, समवन इज आस्किंग मी, तो लेट मी जस्ट शो यू व्हाट आई एम सेइंग इज दैट. मैं क्विकली इसको रिपीट करता हूं और फिर हम लोग आगे वाले पार्ट के ऊपर जाते हैं. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट ए दिस इज 40, ए दिस इज 14 एंड दिस इज 16. तो अगर मैं इसको लेफ्ट रोटेट करता हूं, अगर मैं इसको लेफ्ट रोटेट करता हूं तो क्या होना चाहिए? ये जो न्यू एक्सिस है, न्यू एक्सिस के लेफ्ट में, न्यू एक्सिस के लेफ्ट में एक्सिस आना चाहिए. यस, डेफिनेटली न्यू एक्सिस के लेफ्ट में एक्सिस आना चाहिए. जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, न्यू एक्सिस के लेफ्ट में एक्सिस आ रहा है. बट द प्रॉब्लम इज इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट विल हैपन, न्यू एक्सिस के लेफ्ट में ऑलरेडी 50 है. ए न्यू एक्सिस के लेफ्ट में ऑलरेडी 50 है. सो आई गेस दैट 50 विल गेट लॉस्ट. Oh yes, 50 will get lost. तो what I should take care? What I should take care? वो 50 का मैं क्या करूँ so that it is not lost? I guess that all I need to do is that उसको axis के right में डाल दो. All you need to do is that उसको axis के right में डाल दो, and this is something we need to take care. This will still ensure that all the node to the left of this are smaller than that, and all the node to the right of this are greater than that. I hope Sachin it is clear. Right? No problem. तो आई वाज जस्ट सेइंग दैट लेफ्ट रोटेशन राइट रोटेशन आपको समझ में आ गया. इन जनरल कैसे करना ये भी आपको समझ में आ गया. और अगर आपको इतना समझ में आ गया, ऐसे आपको लगता है, लिसन केयरफुली, अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको समझ में आ गया, देयर इज वन स्मॉल प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर यू. प्लीज विजुअलाइज दिस एंड टेल मी हाउ डू यू बैलेंस दिस. करके देखो. जो अभी
जो भी हम लोग फॉर्मूला बात कर रहे हैं कि लेफ्ट क्या कहते हैं, बैलेंस फैक्टर अगर निगेटिव होगा तो क्या कहते हैं, ये वाला रोटेशन करो या फिर वो वाला रोटेशन करो. जस्ट अप्लाई दैट लॉजिक एंड यू सी सम प्रॉब्लम्स ओवर देयर. सो व्हाट प्रॉब्लम्स दैट यू सी ओवर देयर? टेक अ लुक एट दिस. पहले ट्री तो देखो, बाद में प्रॉब्लम समझ में आ जाएंगे. विजुअलाइज दिस. सपोज दैट दिस इज 10, दिस इज 10. 10 के राइट में, 10 के राइट में लेट्स से इट इज 40, लेट्स से इट इज 40. एंड देन 40 के लेफ्ट में, 40 के लेफ्ट में लेट्स से इट इज 20. एंड 20 के लेफ्ट में, 20 के लेफ्ट में लेट्स दैट इट इज 30, इट इज 30. नाउ in this particular case, can you check what is the balance factor of 10? Can you please check what is the balance factor of 10? Can you do the bit of calculation for me? Balance factor of 10. इसके लेफ्ट में कितना है? ए लेफ्ट में -1 है, लेफ्ट में -1 है. राइट में कितना है? 0 1 2. ए 0 1 2 -1 -2. I hope you are getting a point. So 0 1 2 and then this is -1, so this is -3. And what your instinct says, if it is balance factor is equal to -3, what you should do? What your instinct says, what you should do? You should simply say I should do a left rotation. But let me tell you, this is not always a solution. So why it is not a solution? Why don't you try it? Go ahead and try a left rotation on this. Try a left rotation on this. As you try a left rotation on this, what will happen? What will happen? If this is the axis and this is, let's say, new axis. Now tell me 10 की जगह पे क्या आएगा? 10 की जगह पे आएगा 40. I understand. और 40 के लेफ्ट में क्या जाएगा? 40 के लेफ्ट में क्या जाएगा? 40 के लेफ्ट में जाएगा 10. Okay, that is good. But you understand that in this case the 20 might get lost. और जो लॉस होने वाला है उसको हम लोग कहां पर डालते हैं? अरे जो लॉस होने वाला है उसको हम लोग कहां पर डालते हैं? अरे 10 के राइट में डालेंगे ना उसको. हेलो, यस 10 के राइट में डालेंगे. गो अहेड, यू पुट इट इनटू द 10th राइट, यू पुट इट 10th राइट. एंड ऑब्वियसली 30 तो वैसे भी उसके नीचे ही है. एंड नाउ कैन यू कैलकुलेट द न्यू बैलेंस फैक्टर? कैन यू कैलकुलेट द न्यू बैलेंस फैक्टर? The earlier the balance factor was -3 and now your new balance factor is equal to 3. You do the calculation. This is 0 1 2 and this one is -1. 2 minus -1 comes out to be 3. Oh, now there is a problem. And then तो सर एक काम करते हैं, इसके ऊपर राइट रोटेशन करते हैं. इफ यू रियली वांट, गो अहेड और इसके ऊपर अभी राइट रोटेशन करवा लो. You do the paperwork if you are really interested in, but if you do the paperwork you realize that after right rotation it will once again will give you the same tree. और फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग घूमते रह जाएंगे. I hope you understand. So what I want to tell you is that just by looking at the balance factor, just by looking at the balance factor is negative or positive, you may not want to take a decision whether it should be a left rotation, whether it should be a right rotation. So there are other cases are also involved. Specially मैंने कहा ना प्रॉब्लम स्पेशली कब होता है? When it is a kind of a zigzag shape. आप लोगों ने शेप नोट किया होगा. टिपिकली नॉर्मल केस में प्रॉब्लम नहीं आता है. नॉर्मल केस में आपके नॉर्मल फॉर्मूला से भी काम हो जाएगा. बट when you go with like a zigzag shape, now this sort of shape is there, you take it granted your left rotation will not solve the problem, neither your right rotation is going to solve the problem. तो सर ऐसे वक्त में क्या करते हैं? ऐसे वक्त में कुछ स्पेशलाइज लॉजिक लगाने पड़ते हैं. एंड दिस लॉजिक आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. मैंने कहा ना मैं अभी इसको सिर्फ थियोरेटिकली बता रहा हूं, मैं कोडिंग लेवल पे बिल्कुल नहीं जा रहा हूं. इवन दो यू गेट द लॉजिक, दैट शुड बी मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट. इन राइट साइड हाउ बैलेंस फैक्टर इज -3, हाउ इट इज -3. ओके पूजा, टेक अ लुक एट दिस एंड इफ यू आर हैविंग डाउट प्लीज आस्क अर्ली. इसका जो लेफ्ट सब ट्री है, इसका लेफ्ट सब ट्री इट इज -1. आई होप यू अंडरस्टैंड. और इसका जो राइट सब ट्री है, ये जो राइट सब ट्री है उसका हाइट
that comes out to be 0, 1, 2. It is 2. And then you find that minus 1, minus 1, minus 2 comes out to be minus 3. That is balance factor. Okay, that is good. As far as the right वाला concern है, right की side में this one is nothing but minus 1. इसका जो right side है balance factor is minus 1 और left side जो है it is 0, 1, 2. जो आपका left tree है उसका balance factor है 2. And then you do the calculation, it is 2 minus minus 1. 2 minus minus 1 comes out to be 3. Pooja, all right? No problem. So I'm saying that कि ये आप लोग करने की कोशिश करो and then you realize that ये balancing नहीं हो रहा है. तो let us see the special cases कि कहाँ पर कौन सा rotation likely to done. Let us take a look at this. Here you find I'm taking the cases one by one. And this is a case where I'm saying that it is a left case. Now what is the left case? Take a look at this. जो पहले ये समझो कि जो नोड आपका अनबैलेंस है हम लोग उसके विद रिस्पेक्ट टू दैट बात कर रहे हैं. एक बात बताओ, W is it balanced? Is W is balanced? Yes, W is balanced. Is X is balanced? Is X is balanced? Yes, X is also balanced. There is no problem. Is Y is balanced? No, Y is not balanced. क्योंकि इसका जो बैलेंस फैक्टर है इसका बैलेंस फैक्टर अब आपको दिख रहा है इसका बैलेंस फैक्टर है 2. इसका बैलेंस फैक्टर इज 2 एंड दिस इसका बैलेंस फैक्टर है 2. नाउ आई एम सेइंग दैट यू नीड अ काइंड ऑफ अ रोटेशन. तो जिसका आपको बैलेंस फैक्टर ये जिसके बैलेंस फैक्टर में आपको प्रॉब्लम है जिसके बैलेंस फैक्टर में आपको प्रॉब्लम है आई एम सेइंग दैट यू अप्लाई द रोटेशन you apply the rotation on you apply the rotation on its parent something like this. And if you apply the rotation यहां पर मैं क्या कह रहा हूं लेफ्ट केस क्या कह रहे हैं कि जो नोड आपका हैव अ लुक एट दिस जो नोड आपका अनबैलेंस्ड है ये जो पेरेंट है ये पेरेंट के लेफ्ट में ये आपके पेरेंट के लेफ्ट में और जो अनबैलेंस है उसका चाइल्ड भी उसके लेफ्ट में. सो आई एम सेइंग दैट दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज आल्सो लेफ्ट and since it is left I'm saying it is a left case. In this case what rotation looks good? ऐसे केस में कौन सा रोटेशन करना चाहिए? The diagram makes it very clear I should be having a right rotation. And if I do the right rotation onto this what it will tell me? Okay, go ahead. A root में कौन आएगा? Root will be y. Yes, z will be below that, x is over that और ये जो भी है w will be below that. I guess is it balanced? Yes, look like it is balanced. That is fantastic. Left case मतलब क्या? जो नोड आपका अनबैलेंस है ठीक है यू फाइंड दैट उसका चाइल्ड और फिर उसका चाइल्ड. ओके, दैट इज गुड. यू कंटिन्यू फर्दर. दिस केस अगेन लुक्स वेरी सिंपल. You find that this node is unbalanced. This node is kind of unbalanced and you find that उसका चाइल्ड उसके राइट में और वो उसके चाइल्ड उसके पेरेंट का वो भी राइट चाइल्ड है तो उसके पेरेंट का वापस से राइट चाइल्ड है. And now I'm able to see that yes it is unbalanced. All I need to do is that I need to simply apply the left rotation on Z. If I apply ये इसको कहते हैं right rate case. It is right rate case. Just apply the left rotation. And can you tell me which is like a new parent over here? New root over here? New root will be y. Y के left में it will be z और y के right में it will be x और x के नीचे जो आपका w node है let it be as it is. I don't bother about. This is nothing but simple cases. And here comes the problematic cases. इन केसेस में by looking at the balance factor is -2 or +2 हम लोग डिसीजन ले सकते हैं. But there comes the complicated cases. The case that I was trying to explain you earlier. Now here you find that your y node is unbalanced. आपको दिख ही रहा है. A y node is unbalanced and then a z node is again ये जो आपको दिख रहा है जो अनबैलेंस्ड है ये आपके पेरेंट का लेफ्ट है. पे अटेंशन. और उसका जो चाइल्ड है ये उसके राइट में सो दिस इज फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ अ zigzag shape. सो व्हेनेवर यू कम अक्रॉस दिस सॉर्ट ऑफ केस ऐसे केस में क्या किया जाता है? ऐसे केस में
एक रोटेशन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। प्लीज नोट, ऐसे केस में अगर एक रोटेशन करते तो क्या होता है, मैंने आपको पहले ही दिखाया, एक रोटेशन से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है। इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस, इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस। द फर्स्ट स्टेप is nothing but, I would say that you apply left rotate, a left rotate on y. You first apply left rotation on y. You applied left rotation on y. Can you please tell me y के जगह पे कौन आएगा? लेफ्ट रोटेशन ऑन y, y की जगह पे आएगा x, x के लेफ्ट में, x के लेफ्ट में y, और उसके बाद में और w कहां पर जाएगा? w कहां पर जाएगा? Now you find that w must go to the y's right. x के राइट में नहीं जाएगा ना, x के राइट में कैसे जाएगा? हम लोग रोटेशन कर रहे हैं ना, we are doing the left rotation, we are doing the left rotation, so with the left rotation y will come on to this side. तो जो x के लेफ्ट में जो कुछ भी था, जो x के लेफ्ट में था, that will go to the y's right. But wait, आपका जो z है, ये z अभी भी अपने जगह पे है। Now you apply the second step, now you apply the second step, and the second step now is nothing but apply right rotate, apply right rotate on z. ये apply right rotate on z, अब बोलो which will be the new route? New route will be x, x के राइट में, x के राइट में it is z, x के लेफ्ट में it is y, and then y के राइट में w जैसे पहले था वैसे ही। check, is it balanced? Is it balanced? Yes, look like it is balanced. And this is what I'm saying, that this case is said to be left right case. This case is said to be left right case. तो जब जब zigzag shape होते हैं, एक रोटेशन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो if it is a kind of a left right case, I need to apply left rotation plus right rotation. Okay, that is good. And then obviously you can understand the last case as well. The last case as well, the diagram is in front of you. You find that the node which is unbalanced, it is y, जो अपने पेरेंट का राइट है, जो अपने पेरेंट का राइट है, और उसका चाइल्ड उसका लेफ्ट है, उसका चाइल्ड उसका लेफ्ट है। नाउ दिस इज अ केस you referred as right left case, and right left case again it is a two step process. Step number 1, you first apply the right rotation on y, a right rotation on y, a go ahead right rotation on y, y की जगह पे कौन आएगा? y की जगह पे x आएगा, राइट? y की जगह पे x आएगा, और फिर आप इसको पुल कर रहे हो, x विल कम ऑन दिस, x के राइट में y जाएगा, लेकिन x के राइट में जो पहले w था, x के राइट में जो पहले w था, that will get lost, so I need to put it into the y's left, और वैसे इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट वो तो अपनी जगह पे वैसे भी रहेगा, not a problem. This will sort out like a first step, and after the first step you go ahead and you apply the left rotation on z. Now as you apply left rotation on z, it is left rotate on z, बोलो which will be root? Yes, x will come on the top, z will come down, and then you have got like a y over here and then x over here. Is it balanced? Is this balanced? Yes. So you understood that कि कौन से केस में कौन सा रोटेशन ज्यादा सुटेबल है। तो सर आपका क्या कहना है? तो डू यू वांट मी, नहीं डू यू वांट मी मतलब मैं करने वाला नहीं हूं, सो व्हाट इज बेटर? क्या हुआ? अच्छा ओके सॉरी, भावनाओं को समझो, वो मैं फ्लो में भूल गया। यहाँ पर x कहाँ से आएगा ना, x ऑलरेडी ऊपर गया है, सॉरी, हाँ w यहाँ पर, हाँ कमिंग बैक। तो मैं कहाँ पर था, मैं आपको ये बता रहा था। सो इट इज लाइक अ राइट रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन, द दिस जगलर इज ओके, बट डू यू बिलीव दैट दिस इज अ गुड आइडिया कि पहले आप लोग क्या करो, पहले आप लोग पूरा ट्री बनाओ, उस ट्री को पूरा अनबैलेंस होने दो, और उसके बाद में जाके उसको बैलेंस करो।
डू यू बिलीव दैट इट इज गुड आइडिया कि पहले ट्री के अंदर सारे नोड ऐड कर लो, कैसे भी नोड ऐड कर लो, पहले नोड ऐड कर लो और उसके बाद में जाकर उसको बैलेंस करो? इट इज वेरी बैड आइडिया. व्हाट इज गुड आइडिया? What is good idea? What is better idea? The better idea is that every time you are adding a node, moment you find that something is unbalanced, immediately balance that much. Every time you are adding a node, moment you find that something is unbalanced, immediately balance that node. Sir, nahi samjha? I'll give you example. Please pay attention. I'll give you example. वो जो हम लोग skewed binary tree बना रहे थे, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर जा रहा हूँ. Please pay attention. Suppose that the first node that I got was 70 and I added 70. Is it balanced? Is this balanced? मैं skewed binary tree का process वापस से बता रहा हूँ. हाँ, so 70. Okay, that is good. Let us add 60. Let us add 60. And if I add 60, is 60 is balanced? Is 70 is balanced? Okay, that is good. Let us add 50. Let us add 50. Tell me, is 50 is balanced? Yes. 60 is balanced? Yes. 70 is balanced? 70 is balanced? Oh, no, 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 no. 70 is not balanced. And if the 70 is not balanced, I see it very clearly that this is a kind of a left-left case. And if it is a kind of a left-left case, what should I do? A diagram आपको खुद ही बता रहा है what you should do. I'm saying that in your add function itself, you embed the logic of a rotation. You do the right rotation on 70. As you do the right rotation on 70, you find that 60 comes over here, 70 comes over there, 50 comes over here. Okay, that is good. Let me add the next node. Let me add 40 now. Let me add 40 now. And if I add 40, where 40 will go? Where 40 will go? 40 will go to the left of 50. Now tell me, is it balanced? Is this balanced? 40 is balanced, yes. 50 is balanced, yes. 60 is balanced, yes. 70 is balanced, yes. Everything is balanced. Everything is balanced. इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. You continue further. You add one more. You add 30. Is 30 is balanced? Yes. Is 40 is balanced? Yes. Is 50 is balanced? Is 50 is balanced? Oh, no, 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 no. 50 is not balanced. And if the 50 is not balanced, which is again very clearly saying me that this is once again a left-left case. And if it is once again a left-left case, all I need to do is to apply a rotation on that. This left-left case. So you follow the right rotation on that. You apply right rotation on that. And the new diagram that I should see somewhere will be saying like this: a 40 over here, 30 over here, 50 over here, 60 over here, 70 over here. Okay, that is good. This is good. So I found, yes, this has been changed. Okay, you continue further. You continue further. You continue further. And let us add one or two more nodes. As I'm adding one more node, please pay attention. As I'm adding one more node, let's say I'm adding 20. Check, is 20 is balanced? 20 is balanced? Yes. 30 is balanced? 30 is balanced? जो भी नोड ऐड किया है आपको उसके सारे एंसेस्टर चेक करने हैं, बाकी किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है. जो भी नोड ऐड किया है उसके सारे एंसेस्टर्स हम लोग चेक करते जाएंगे. 20 is balanced, 30 is balanced, 40 is balanced, 60 is balanced, 60 is balanced. Sorry, 60 is not balanced. And 60 is not balanced, which is again telling me that this is still a kind of a left-left case. And if it is still a left-left case, I need to again go ahead and now I need to apply once again a kind of a right rotation. You apply once again right rotation. अब थोड़ा सा complicated है. Complicated in the sense you will be able to do that. A 40 comes on the top. I hope you understand. 60 goes to the right. 70 goes to the right. 40 के नीचे 30 पहले भी था, 20 पहले भी था. That is all right. And then what is next?
व्हाट इज नेक्स्ट? जो 50 A50 जो 40 के लेफ्ट में था, A50 जो 40 के लेफ्ट में था, that should go into the 60's left. And now you check, is everything balanced? Is everything balanced? Yes, absolutely. यहां पर हम लोग कर क्या रहे? यू कैन कंटिन्यू द प्रोसेस फर्दर. अब वापस से अगर 10 ऐड करोगे तो आपको 30 के ऊपर वापस से रोटेशन करना पड़ेगा एंड यू विल फाइंड दैट एवरीथिंग विल गेट बैलेंस्ड. यहां पर हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग बैलेंसिंग का लॉजिक कब रन कर रहे हैं? Every time we add a node, listen, every time we add a node, we are checking, is that node balance? Is its parent balance? Is its parent balance? Is its parent balance? Up to all its ancestors I'm checking. And moment I find someone is unbalanced, depending on a case, I'm applying the appropriate left rotation or right rotation, or sometimes it might be even a combination. Left right rotation or right left rotation, so you can apply the combination and you can come up with the result. ये मैंने हर एक ऐड ऑपरेशन में किया है. अब जो मैंने ऐड के अंदर किया है, प्लीज विजुअलाइज दैट सेम इज पॉसिबल फॉर द डिलीट ऑल्सो. आई होप यू एग्री. सेम इज पॉसिबल फॉर द डिलीट ऑल्सो. एम आई करेक्ट? ए डिलीट के वक्त भी एवरी टाइम यू डिलीट अ नोड एंड यू चेक, अरे यार मोमेंट आई डिलीटेड दिस नोड, is is something is still unbalanced, and if not then apply the rotation. तो मैं क्या कह रहा हूं, हम लोग ऐसा नहीं कर रहे कि पहले पूरा ट्री बना लो और ट्री बनाने के बाद में अब उसको रोटेशन करो. मैं कह रहा हूं ऑन एवरी ऐड फंक्शन एंड एवरी डिलीट फंक्शन वी अप्लाइड एज समवन किशोर इज सेइंग दैट. तो क्या हम लोग उसको स्टैक के ऊपर डाल रहे हैं? यस किशोर, हम या तो आप लोग को उसको स्टैक के ऊपर डाल रहे हो या फिर यू कैन डू इट यूजिंग रिकर्शन. या तो स्टैक के ऊपर डालो या तो यूजिंग रिकर्शन करो. और जैसे ही आपने एलिमेंट ऐड या डिलीट किया उसके सारे पेरेंट चेक करो. और मोमेंट यू चेक द पेरेंट, जहां पर आपको अनबैलेंस नजर आए, जहां पर आपको अनबैलेंस नजर आए, वैसे ही जैसे अनबैलेंस नजर आए वैसे ही अप्लाई द अप्रोप्रिएट रोटेशन एंड बैलेंस इट. सर आप क्या पढ़ा रहे हो? मैं जो पढ़ा रहा हूं इसको कहते हैं एवियल ट्री. इसको कहते हैं एवियल ट्री. What is avial tree? The avial tree is self-balancing binary search tree. It is self-balancing binary search tree. The difference between height of left and right subtrees cannot be more than 1 for all the node. In short, आपका balance factor -1 to +1 के range में होना चाहिए. And then what you're doing is that, what we are doing over here, nodes are rebalanced on each insert operation and on each delete operation. So हर एक insert और हर एक delete में आप लोग उसको क्या कर रहे हो? रीबैलेंसिंग कर रहे हो. हर एक insert और हर एक delete में आप उसको रीबैलेंस करवा रहे हो. And that is something you call it as a avial tree. You call it as a avial tree. By the way, what is the advantage of this? The advantage is that you find that number of iterations, अब आपका हाइट हमेशा कम से कम रहेगा. और अगर आपका हाइट कम से कम रहेगा, इन जनरल मैं अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली 2h, 2h इज इक्वल टू n. अप्रोक्सीमेटली, एक्चुअली 2h+1 होना चाहिए, ये आपको पता है, बट स्टिल अप्रोक्सीमेटली 2h is equal to n. You can take a log on both side. If you take a log on both side, you realize that h is equal to h into log 2 is equal to log of n, and then your height itself is log n by log 2. और आपको पता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, द टाइम रिक्वायर्ड इज प्रोपोर्शनल टू हाइट. A time required is proportional to height. So time required is proportional to log n by log 2, where log 2 is constant. And if the log 2 is constant, then it is order of log n. Now it is order of log n. This is something you need to take care. And that is the reason हम लोग इसके जो सारे operations हैं, all those operations, all operation मतलब क्या? Your add operation, delete operation, and search operation. All these operations are done into O of log n. Is this clear? Or is this clear? That is what avial tree. Say avial, इसका नाम ये अजीबोगरीब नाम क्यों रखा है? The avial name came from the name of scientist. Name of scientist. Yes.
इट इज एडल्सन वेलेस्की एंड लैंडिस। ये 3 लोग नहीं है, 2 लोग है। ये एडल्सन वेलेस्की इज 1 पर्सन एंड देन लैंडिस इज अ सेकंड पर्सन। सो ये 2 लोगों ने मिलके ये बनाया हुआ ट्री है, यू कॉल इट एज अ एवियर ट्री। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यहां पर हम लोग क्या कह रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 2h इज इक्वल टू n। मैंने अप्रोक्सीमेटली कहा क्योंकि टू बी प्रिसाइज इट इज 2h + 1 - 1। मैंने आपको लास्ट टाइम फॉर्मूला बताया था। सो यू अंडरस्टैंड दैट इट इज इन ऑर्डर। all we are doing is that take a log on both side. If you take a log on both side, आपको पता है जो एक्सपोनेंशियल में है वो नीचे मल्टीप्लीकेशन में आता है। सो h into log 2 is equal to log n। oh I understand that। and then you continue further, h is equal to log of n by log of 2। okay, log of n by log of 2। and then time required is proportional to h, क्योंकि उतने ज्यादा इटरेशंस लगने वाले हैं। अगर उतने ज्यादा इटरेशंस लगने वाले, उतने ज्यादा इटरेशंस लगने वाले हैं, यू फॉलो, सो यू फाइंड दैट इट इज log n by log 2 and 1 by log 2 is a constant। if 1 by log 2 is a constant, I'm saying that the time complexity will be O of log n। आप लोग इंसर्ट कर रहे हो तो भी मैक्सिमम log n इटरेशंस आर देयर, डिलीट कर रहे हो तो भी मैक्सिमम log n इटरेशंस आर देयर, और अगर आप लोग उसको बाइनरी सर्च कर रहे हो तो भी मैक्सिमम log n इटरेशंस आर देयर। I hope Sachin it is all right, right? This is done, and I'm saying that this tree is said to be avial tree। अब ये avial tree अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। however अगर आपको इसको और ऑप्टिमाइज करना है, नंबर ऑफ रोटेशंस मिनिमाइज करने हैं, तो avial tree का एक और वेरिएशन है। avial tree का एक और वेरिएशन है, what we call it is a red and black tree। तो what is red and black tree? Red and black tree is also kind of a avial tree। it is a kind of a avial tree। it is also a kind of self balancing binary tree। it is also kind of self balancing। self balancing का मतलब होता है हर एक इंसर्ट और डिलीट के ऊपर वो खुद को बैलेंस करवा लेता है, उसको कहा जाता है सेल्फ बैलेंसिंग। तो रेड एंड ब्लैक ट्री इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ सेल्फ बैलेंसिंग ट्री, आप उसकी चिंता मत करो। हाउएवर however however this is taking less number of rotations। that's it। red and black tree आपके सिलेबस में मुझको नहीं दिखा, but I just tell you when it come down to the comparison you understand that avial tree and red and black tree ये दोनों दोनों सिमिलर है, but red and black tree में number of rotations कम होते हैं। that's it। this is like important trees। I hope now avial tree is clear what I mean by it। Now I guess it's already 11 o'clock. What we'll do is that we'll take a break for 15 minutes, and after that we'll talk about what is threaded binary tree, and then we will see 2-3 more small types are there, and from there we can go on something called as heap structure। what is heap? what is heap structure, and then what is max heap, mean heap, उसके टाइप क्या है, वगैरह वगैरह। मैंने कहा ना आज हम लोग मोर ऑफ कंसेप्चुअल चीजें पढ़ रहे हैं, और वो कंसेप्चुअल चीजें खत्म करके then we will go into the practical one where we will discuss what is merge sort and what is quick sort। merge sort or quick sort we'll be learning practically। 15 minutes break, meanwhile you have any questions you can post। Yes, there are a couple of questions, let me answer one by one। very first question, if you also have a question please post it। question number 1, in exam or interview will it be asked to implement the avial tree or balance tree in terms of code? as far as lab exam is concerned, no way। lab exam में हम लोग avial tree या balancing कभी नहीं पूछते। number 1। as far as MCQ exam is concerned,
वहां पर कोड आता ही नहीं है, so that is again out of question. As far as interviews are concerned, my experience of last 16 years into Sunbeam and CDAC campus, I never seen any of the campus someone has reached to the AVL tree. AVL tree बहुत बार even concept तक भी नहीं पहुंचता. When it come down to the interview, final interviews, you'll find that the majority of questions will be revolving around linked lists, probably arrays, 1D array, 2D array, उसके logic building के questions, and probably hashing. Yes, that is something very common. So Rahi, I guess I answered your first question. Second, I'll go ahead. Madhuri ka question hai, do tree have height -1? If so, in which case and height is 0 for leaf node? I guess Madhuri, we have answered this. If you have forgotten, I'll just open the slide of height once again for you. कहाँ पर गया height का slide? I hope you recall this slide. And in this slide, we said that the height, just a minute. Yeah. Sorry. So what I was trying to tell you is that the height over here is nothing but 0, 1, 2, 3. This is nothing but the height. But if it's like a single node, obviously if you're started counting from 0, then the height of this tree having a single node will be always 0. जो लीफ नोड होता है वैसे भी उसका हाइट हमेशा 0 ही रहने वाला है. और अगर इसका हाइट 0 रहने वाला है, इफ एट ऑल देयर इज अ ट्री, एम्प्टी ट्री मतलब ट्री जिसके अंदर कोई भी नोड नहीं है, अब उसका हाइट तो 0 हो नहीं सकता. सो यू हैव टू काउंट इट एज -1. आई होप माधुरी यू गॉट द आंसर टू द क्वेश्चन. सो ट्री का हाइट -1 कब होता है? व्हेन द ट्री इज एम्प्टी ट्री और नल ट्री. करेक्ट? ये हम लोगों ने इससे पहले देखा था. आई गेस इट इज क्लियर. नो प्रॉब्लम. चलो, एनी अदर क्वेश्चन इज देयर? Yes, you forgotten, no problem. By the way, when I tell you that this is what happened in a CDAC campus or something like that, let me first of all tell you guys, these are not my opinions. This is not opinion, this is experience. And obviously, if you have got your seniors, you can always go back and you can cross check with them कि सर ये ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है, सचमुच होता है और whatever. So ऐसा कुछ नहीं है सर आपके ओपिनियन में ये इंपॉर्टेंट नहीं है. नहीं, इंपॉर्टेंट है या नहीं है ये क्वेश्चन है ही नहीं. आई एम सेइंग दैट is it asked in a CEDAC campus? My experience is that no. My experience, you can cross check. Not a problem. Let me just go ahead. Hey, what you are talking about is that AVL tree and this kind of trees. And now let us continue further. Talk about another few types of trees. The next few type of trees I'm talking about is threaded binary search tree. What is threaded binary search tree? The threaded binary search tree is where ये क्या होता है? अगर आपने नोट किया होगा, जो आपका नॉर्मल बाइनरी सर्च ट्री होता है, जो आपका नॉर्मल बाइनरी सर्च ट्री होता है, यू टेक अप एनी ट्री, यू लेट्स से दैट यू कंसीडर दिस particular tree. In this particular tree, take a look at the diagram and you see that इसके 20 के लेफ्ट में क्या? In this case 20 के लेफ्ट में या राइट में क्या है? What is kept there? Left pointer and right pointer. What is kept there? Nulls. Obviously 30 के राइट में there is null. 50 के लेफ्ट और राइट में there is a null. 70 लेफ्ट एंड राइट there is a null. So you find that ये जो null है वो क्या इंडिकेट करता है? Null is simply indicating that there is no node over there. Oh yes, there is no node over there. It is there and that is good, no doubt on that. लेकिन अगर ये बाइनरी सर्च ट्री है, आपको पता है बाइनरी सर्च ट्री में जब हम लोग इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं तो हमें सॉर्टेड ऑर्डर में आउटपुट आता है. नाउ देयर आर टाइम्स, देयर आर केसेस कि जहां पर यू आर लाइकली टू लुक फॉर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल अगेन एंड अगेन. देयर लाइकली चांसेस कि मुझको ये सॉर्टेड ऑर्डर में बार बार दिखाना है. मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं. हमने जावा में ट्री सेट पढ़ा है. ए जावा के ट्री सेट में, वैसे उसका नाम ट्री सेट इसलिए है क्योंकि वो इंटरनली ट्री यूज करता है
और सेट इसलिए है क्योंकि वहां पर यूनिक एलिमेंट्स आर देयर. बट डू यू नो दैट in tree set your values are stored in tree set values are stored in sorted order. एंड यू फाइंड दैट जब जब मैं ट्री सेट को ट्रैवर्स करता हूं, जब मैं ट्री सेट को ट्रैवर्स करता हूं, आई वांट टू गेट द आउटपुट इन अ सॉर्टेड ऑर्डर, आई वांट टू गेट द आउटपुट एज अ इन ऑर्डर. तो द पॉइंट आई वांट टू मेक इट ओवर हियर इज दैट द पॉइंट आई वांट टू मेक इट ओवर हियर इज दैट आपको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बहुत बार जरूरत पड़ सकती है. तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल वी कैन ऑलवेज डू इट either using recursion or we can do the in order traversal by using stack. Is it possible? It's absolutely possible. But remember that recursion, मैंने आपको last time बताया था, recursion will slow down your process. Why recursion will slow down your process? क्योंकि हर बार आप लोग recursive कॉल करोगे, function activation record need to be created onto the stack. Every time the recursion job is completed, the function activation record need to be destroyed. So obviously the recursion is going to make the things bit slower. You are aware. तो सर रिकर्शन नहीं यूज करते हैं, स्टैक यूज करते हैं. इवन दो यू आर यूजिंग योर ओन स्टैक, फिर भी यू नीड सम टाइम फॉर पुशिंग एलिमेंट ऑन टू द स्टैक, you need some time for popping the element from the stack, and then I'm saying that it slow the execution and also it needs more space. मैं आपको बता रहा हूं टिपिकल इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिमिटेशन क्या. तो सर कोई तरीका है कि हम लोग इसका रिकर्शन या स्टैक अवॉइड कर सकें? यस, तरीका है, और उसी को हम लोग कहते हैं थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री. What it does, threaded binary search tree keep address of in order successor or predecessor addresses instead of null to speed up the in order traversal. And you are trying to use a simple loop. You are trying to use a simple loop instead of kind of a recursion. Have a look at this. You take a look at this pull diagram. In this pull diagram, here you find that ये जो 20 है, मैं इन ऑर्डर सक्सेसर की बात कर रहा हूं. अब कल हमने डिलीशन पढ़ा है तो आपको सक्सेसर प्रीडिसेसर कंसेप्ट पता है. सो 20 का इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है? 20 का इन ऑर्डर सक्सेसर है 30. तो मैं कह रहा हूं कि 20 का लेफ्ट नल है, होने दो. 20 का लेफ्ट नल होने दो, लेकिन उसके राइट में जो नल है, नल के जगह पे यू कीप द एड्रेस ऑफ इट्स इन ऑर्डर सक्सेसर. 40 की जगह पे 40 का लेफ्ट नल है, होने दो, बट 40 के राइट में you keep an address of its in order successor. On the similar line, 60's left is null, but right you keep the address of its in order successor. It is left is null, it is right, we keep the address of this, and then hundreds right we keep it null. 100 का लेफ्ट भी नल है और 100 का राइट भी नल है. Now you see, so what is the advantage? The advantage is that if you want to do the in order traversal, now your in order traversal is super simple. All you need to do is that start with 10, go to its right, it's 20, go to its right, it is 30, go to its right, it is 40, go to its right, it is 50, go to again leftmost 60, and then go to its right, it is 70, go to its right, it is 90, and then go to its right, it is 100. What I am trying to show you over here, यहाँ पर ना तो आपको रिकर्शन की जरूरत है, ना तो आपको कोई स्टैक यूज करने की जरूरत है. जस्ट बाय गोइंग टू द राइट 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 राइट, एक सीधा साधा लूप लगा के और कुछ बुलियन फ्लैग्स चेक करके आप लोग ट्रैवर्सल कर सकते हो, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर सकते हो. सो योर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल become super fast, and you get the output in a sorted order, obviously sorted in ascending order. सर मुझको sorted in descending order चाहिए तो then don't look for the successor, then think of predecessor. You think of the predecessor, so I'm saying that 100 के previous में you can keep the address, 100 के left में you keep the address of its predecessor, 80 के left में you keep the address of its predecessor, 60 के left में you keep the address of its predecessor. You continue further, 40 के लेफ्ट में you keep the address of its predecessor, 20 के लेफ्ट में you keep the address of its predecessor, finally 10 के लेफ्ट में you keep it null. And then what you are able to do, now you start from the rightmost, you start with rightmost, you print 100, 100's left, then 90's left, and then from 90's left
You continue, 60 is left, sorry, not 60 is left, 100, sorry, 100, you go to this, then you go to the leftmost, rightmost, you get 80, 80 is left, it is 70, फिर 70 is left, it is 60, 60 is left, it is 50, again come to the rightmost, you print 40, 40 is left, it is 30, and then you continue further with the similar line, 20 and then 10. What you are achieving, you are achieving the descending sort, you are achieving the descending sort, and this is making your in order traversal very fast. अब ये वाला जो डायग्राम आप लोगों ने देखा, यहाँ पर हम लोगों ने जो राइट पॉइंटर्स थे, राइट पॉइंटर्स नल के जगह पे हमने उसके सक्सेसर के एड्रेस रखे. अगर हमने उसके सक्सेसर के एड्रेस रखे, दिस इज रेफर्ड एज राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री. दिस इज रेफर्ड एज राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री. और ये जो दूसरा डायग्राम है, जहां पर हमने लेफ्ट के अंदर उसके इन ऑर्डर प्रीडिसेसर के एड्रेसेस रखे, दिस इज रेफर्ड एज लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री. And if you want, you can do the combination of both of them. You can do the combination of both of them, and you can say that it is left plus right threaded is called as in threaded binary search tree. तो सर थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री कहां पर यूज करते हैं? वो सिर्फ ऐसे जगह पे यूज करते हैं जहां पर आपको इन ऑर्डर ट्रेवर्सल बार बार करना है, और वो भी हाई स्पीड में करना है, बार बार करना है और हाई स्पीड में करना है. यू कॉल इट थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री. दैट इज अ सोल पर्पज. नाउ दिस काइंड ऑफ ट्री इज एप्लीकेशन स्पेसिफिक ट्री. तो किसी एप्लीकेशन में अगर आपको ऐसी जरूरत है, देन यू थिंक ऑफ इंप्लीमेंटेड थ्रेडेड बाइनरी ट्री. इज द थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री क्लियर? इज थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री क्लियर? द लॉजिक, ये क्या होता है, कैसे होता है, डेफिनेशन क्या होता है, राइट? देन यू कंटिन्यू फर्दर. You continue further. There are some other simple trees are also available. Some simple trees are also available. You call it strictly binary tree. What is strictly binary tree? The strictly binary tree is said to be the binary tree in which each non-leaf node has exactly two child node. So मैं कह रहा हूं हर एक नोड को दो चाइल्ड होने कंपलसरी, या तो जीरो चाइल्ड या तो दो चाइल्ड. हैविंग वन चाइल्ड इज नॉट अलाउड. हैविंग वन चाइल्ड इज नॉट अलाउड. आप लोग डायग्राम देख सकते हो, एंड इट इज वेरी क्लियर. ए के दो चाइल्ड है, बी के दो चाइल्ड है, सी के दो चाइल्ड है, ई के दो चाइल्ड है, जी के दो चाइल्ड है, और बाकी जिनके चाइल्ड नहीं है उनके जीरो चाइल्ड है. दे आर ऑल लीफ नोड. तो जितने सारे नॉन लीफ नोड है, दे आर ऑल सेट टू बी स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री. तो उनका स्ट्रिक्ट रूल है. उनका स्ट्रिक्ट रूल क्या है? उनका स्ट्रिक्ट रूल क्या है? द रूल इज दैट या तो जीरो चाइल्ड या तो टू चाइल्ड, वन चाइल्ड इज नॉट अलाउड. तो यहां पर डी, एफ, एच, आई, जे, के, दीज आर लीफ नोड. आप इन लीफ नोड को छोड़ दो, बचे हुए सारे नॉन लीफ नोड को दो दो चाइल्ड है. इट्स कॉल्ड स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री. बट देन वी हैव गॉट वन मोर ट्री. वी कॉल इट एज अ perfect binary tree. So what is perfect binary tree? The perfect binary tree is nothing but the binary tree which is full for the given height. For the given height, it is full, and then it contains the maximum possible number of nodes. It contains maximum possible number of nodes. अगर एक भी नोड आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, अगर एक भी नोड आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा? हाइट चेंज हो जाएगा. तो मैं ये कह रहा हूं कि फॉर द गिवन हाइट जितने ज्यादा से ज्यादा नोड आप लोग ऐड कर सकते हो, उतने हम लोग ऐड कर रहे हैं. एंड देन यू कंटिन्यू फर्दर. इसका हाइट चेक करो. इट इज 0, 1, 2, 3. And for this height, how many total number of nodes are there? How many total number of nodes are there? ये हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था. Yes, it is 15 nodes. So I'm saying that it is 2 raised to h plus 1 minus 1. ये फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था. And this tree, I'm saying that it is a perfect binary tree. Perfect binary tree मतलब for the given height इससे ज्यादा नोड आप लोग लगा ही नहीं सकते हो. For the given height इससे ज्यादा नोड आप लोग लगा ही नहीं सकते हो. Perfect binary tree. Okay, good. In few books, I have seen that they are also calling it as a full tree. Up choice is yours. I'm continuing further. Continuing further, this is another one. The another one, there is something called as a complete binary tree. There's something called as a complete binary tree, or there's something called as a almost complete binary tree.
So what is complete binary tree and almost complete binary tree? Read the definition. It is saying something like this. Read it carefully. A complete binary tree is a binary tree in which every level except possibly last level is completely filled and all nodes are as far left as possible. As far left as possible. So what exactly you are trying to say? I'm trying to say यहाँ पर जितने सारे आपके नोड्स हैं except the last node, except the last level, बचे हुए सारे levels they are completely filled. ये बचे हुए सारे levels they are completely filled. I hope you are able to see that in this particular case ये इस लेवल पे एक ही नोड हो सकता है, डन. इस लेवल पे दो ही हो सकते हैं, इस लेवल के ऊपर चार हो सकते हैं, एंड दे आर फुल, दे आर पैक्ड. ऊपर के तीनों लेवल में एक्स्ट्रा नोड ऐड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो लास्ट लेवल है, लास्ट लेवल के ऊपर आप लोगों को और नोड ऐड करने के चांसेस है. तो पॉसिबली द लास्ट वन, ये लास्ट वाला छोड़ के बचे हुए सारे लेवल्स के ऊपर नोड्स आर ऑलरेडी देयर. You call it as a complete binary tree. In other words, I would say that इसके जितने सारे लीफ नोड्स है, या तो लास्ट लेवल पे है या फिर सेकेंड लास्ट लेवल पे. प्लीज विजुअलाइज, जितने सारे लीफ नोड है, इन अदर वर्ड्स जितने सारे लीफ नोड्स है वो या तो लास्ट लेवल पे है या तो सेकेंड लास्ट लेवल पे. दैट्स इट. और समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जितने नोड लास्ट लेवल पे है, दे आर एज लेफ्ट एज पॉसिबल. सर नहीं समझा, डोंट वरी, मैं और डायग्राम ड्रॉ करता हूं एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू. प्लीज पे अटेंशन. Let's say we have got something like this. Let's say this is, what happened? Just a minute. Something went wrong. Pay attention. Yeah, I hope the screen is visible. हाँ, A. So यहाँ पर एक नोड है, I'm going ahead. This is B, this is C. You continue further. This is D, this is E, this is F, this is G. Okay, have a look at this. H, I, J, K. Tell me, is it a strict binary tree? ये जो डायग्राम है ये देख के कैन यू प्लीज टेल मी, इज इट अ स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री? यस, दिस इज अ स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री. एंड सिंस इट इज स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, हर एक नोड के दो चाइल्ड है, सो ये इसको मैं स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री कह सकता हूं. इट इज स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री. बट is it a complete binary tree? I said this is not a complete binary tree. Why it is not a complete binary tree? Pay attention. Why it is not a complete binary tree? Because अभी इसके दो कंडीशन है. उसके सारे लीफ नोड या तो लास्ट लेवल पे या तो सेकेंड लास्ट लेवल पे होने चाहिए, सेकेंड लास्ट लेवल पे होने चाहिए. आई एग्री, ये पहला वाला कंडीशन ट्रू है. ऑल लीफ नोड आर एट द लास्ट लेवल और द सेकेंड लास्ट लेवल. हाउएवर एक और कंडीशन है, जो लास्ट लेवल पे है दे शुड बी एज लेफ्ट एज पॉसिबल. बीच में कोई एम्प्टी जगह नहीं छोड़नी चाहिए, एंड सिंस कोई भी एम्प्टी जगह नहीं छोड़नी चाहिए, दैट इज द रीजन आई एम सेइंग दिस हैज टू बी लाइक दिस. नाउ व्हाट इज दिस? This is something. First of all, tell me, is it strictly binary tree? Yes, this is still strictly binary tree. But is it complete binary tree also? Yes, it is a complete binary tree also.
इट इज कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑल्सो. बट सर ठीक है सर, कंप्लीट बाइनरी ट्री समझ में आ गया, बट व्हाट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री? What is almost complete binary tree? Have a look at this. Pay attention. Almost complete binary tree is, you continue further. You continue further. Have a look at this. Now, can you please tell me, in this particular case, is it strict binary tree? Is it strict binary tree? No, this is not a strict binary tree. Is it complete binary tree? To be frank, it is not even a complete binary tree. Why is not complete binary tree? क्योंकि आपने यहां पर एक जगह छोड़ दिया है. अगर आपने यहां पर एक जगह छोड़ दिया है, ये जो लेफ्ट मोस्ट अलाइंड होता है, ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं है. एंड सिंस ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं है, आई विल नॉट इवन कॉल इट एज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. ये ना तो स्ट्रिक्ट है, सीट केयरफुली, ना तो वो स्ट्रिक्ट है, ना तो वो कंप्लीट है. ओके, लेट इट बी, लेट इट बी. आई एम जस्ट गोइंग वन मोर. ना तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है स्नेहा, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट भी नहीं है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट भी नहीं है. आई एम जस्ट गोइंग अहेड, wait for a minute, and then let me show you one more, show you one more. Tell me, is it a strict binary tree? Is it a strict binary tree? Sorry, this is not a strict binary tree. This is not a strict binary tree, not at all. Is it a kind of a complete binary tree? Is it a complete binary tree? कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है कि जहां पर जो लास्ट लेवल पे जितने एलिमेंट है, दे शुड बी अलाइंड as left as possible. They are to be aligned as left as possible. So please take a look at this. Is it complete binary tree? Yes, it look like it is quite complete binary tree. सिर्फ but ये strict नहीं है, लेकिन ये strict नहीं है. Such type of tree, listen carefully, such kind of tree is not called as a complete. इसको complete नहीं कहते, इसको कहते हैं it is almost complete. इसको कहते हैं almost complete. What is almost complete binary tree? The almost complete binary tree, which is like a complete binary tree, like a complete binary tree, लेकिन ये strict होना जरूरी नहीं है, ये strict होना जरूरी नहीं है. इसको हम लोग कहते हैं kind of almost complete binary tree. I hope you got my point. I hope you got my point. And now you read it over here. Almost complete binary tree is similar to complete binary tree. It is similar to the complete binary tree. मतलब इसके भी all elements are aligned as left as possible. Aligned as left as possible. However, it may not be a strictly binary tree. It may not be a strictly binary tree. वो strictly binary tree नहीं है. So I'm talking about this. Since वैसे ये complete है क्या? By definition of a complete, I can say that yes, ये complete भी है. ये complete भी है, but ये complete है लेकिन strict नहीं है. ये complete है लेकिन strict नहीं है. So I'm calling it as almost complete binary tree. I'm calling it almost complete binary tree. I hope you are able to see the example. ये example है जहां पर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट टू द लेफ्ट है, और लेकिन एट द सेम टाइम ये स्ट्रिक्ट भी है, एट द सेम टाइम इट स्ट्रिक्ट भी है. यहां पर भी ये कंप्लीट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट अलाइंड एज लेफ्ट एज पॉसिबल है, ये ठीक है. बट सिंस ये स्ट्रिक्ट नहीं है, इसको इसको लोग कहते हैं कि दिस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री. इज दिस क्लियर? अरे कंप्लीट और ऑलमोस्ट कंप्लीट का डिफरेंस कम क्लियर हो गया क्या? सो मैंने जानबूझ के एग्जांपल दिए है. यू फाइंड दैट ये एग्जांपल, दिस एग्जांपल इज नाइदर स्ट्रिक्ट, दिस एग्जांपल इज नाइदर कंप्लीट, दिस एग्जांपल इज नाइदर ऑलमोस्ट कंप्लीट. ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. ये टर्म समझना बहुत जरूरी है, ये टर्म समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये टर्म समझ में नहीं आता है तो आगे आपको हीप समझ में नहीं आएगा. तो सर क्या है? जस्ट टेल मी इन दिस पर्टिकुलर केस, टेल मी इन दिस पर्टिकुलर केस, ये कौन से टाइप का ट्री है? टेक अ लुक एट द डायग्राम एंड टेल मी व्हिच टाइप ऑफ ट्री इज दिस. यस, दिस ट्री इज ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री. यस, दिस ट्री इज ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री. नाउ लिसन, ये जो ट्री है, हम लोग ट्री यूजुअली कैसे बनाते हैं? ट्री हम लोग कैसे बनाते हैं? हम लोग करते हैं, एक नोड लेते हैं, उसके अंदर डेटा लिखते हैं,
पॉइंटेड टू द लेफ्ट लेते हैं, पॉइंटेड टू द राइट लेते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, आई वॉन्ट टू गो अ स्टेप अहेड and I want to put this tree, I want to put this tree into the array representation. I want to put this particular tree into the array representation. Array मतलब मुझको ट्री लेफ्ट और राइट पॉइंटर से नहीं बनाना है, मुझको ट्री एरे से बनाना है, मुझको ट्री एरे से बनाना है। एरे के अपने एडवांटेजेस होते हैं। एरे का एडवांटेज होता है, एरे इज द फास्टेस्ट डेटा स्ट्रक्चर, यू ऑलरेडी नो। एरे का दूसरा एडवांटेज होता है, वो भी आपको पता है, कि एरे में एक्स्ट्रा ओवरहेड नहीं होते। तो मैं कह रहा हूं इस ट्री का मैं एरे रिप्रेजेंटेशन बना सकता हूं, और एरे रिप्रेजेंटेशन गोज समथिंग लाइक दिस। द एरे रिप्रेजेंटेशन goes something like this. Oh, you are able to see that. जानबूझ के, for sake of to make the calculation simple, मैंने एरे का इंडेक्सिंग 1 से चालू किया। एक बात बताओ, ये आपको ट्री लग रहा है, ये आपको एरे लग रहा है? ये ट्री लग रहा है, एरे लग रहा है? अरे वो एरे ही है, लगने की क्या बात है, वो एरे ही है। बट तो सर आप किस बेसिस के ऊपर कह रहे हो कि इट इज अ ट्री, इट इज अ एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्री? हमेशा याद रखना, ट्री किसके वजह से बनता है? ट्री बनता है क्योंकि यहां पर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। ट्री इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज गिविंग यू द पेरेंट चाइल्ड काइंड ऑफ रिलेशनशिप। आई होप यू एग्री। तो जहां जहां पर पेरेंट है, चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड है, यू कैन ऑलवेज से दैट इट इज अ बाइनरी ट्री। तो मैं क्या कह रहा हूं, आई एम हैविंग अ एरे, लेकिन बाय लुकिंग एट दिस एरे, इफ आई कैन टेल यू कि देयर इज अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, if I can tell you that there is a parent-child relationship, then you can even say that it is an array representation of a tree. I know that आपको bouncer जा रहा है. I'll give you some example. By looking at this array, see it carefully. By looking at this array, can you tell me who is a parent of H? By looking at this array, can you tell me who is the parent of H? I can tell you who is the parent of H. The parent of H, I'm saying that the parent of H is nothing but D. Trust me, parent of H is nothing but D. I'm saying that it is the parent of H. Oh, is it so? Yes. Not only that, who is the parent of I? Who is the parent of I? I would say that the parent of I is nothing but again D. Parent of I is nothing but again D. हाँ, मुझको पता है आपको कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने जानबूझ के ऊपर का डायग्राम हाइड किया है। मैं आपको बता रहा हूं कि बाय विदाउट लुकिंग एट द ट्री, आप लोग सिर्फ एरे के ऊपर देख के बता सकते हो कि डी का लेफ्ट चाइल्ड है एच और डी का राइट चाइल्ड है आई। मैं बता सकता हूं, लाइक फॉर एग्जाम्पल, हु इज द पेरेंट ऑफ एफ? हु इज द पेरेंट ऑफ एफ? आई कैन से दैट द पेरेंट ऑफ एफ इज नथिंग बट सी। Parent of f is nothing but c. And if you want to see, so what is the parent of G? Oh, parent of G, I can be very sure the parent of G is also C. A parent of G is also C. आप बोलोगे सर ये आप कैसे ढूंढ रहे हो? मैं आपको बता रहा हूं, मैं फॉर्मूला बताता हूं। टेक अ लुक एट द फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। द पेरेंट इज इक्वल टू चाइल्ड डिवाइडेड बाय 2। मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूं। The parent index is equal to child index divided by 2. Now you understood that? मैं लॉजिक कहां से लगा रहा था? या फिर फॉर दैट सेक, लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू parent into 2, parent into 2, या फिर you continue further, you say right child is equal to parent into 2 plus 1, जो भी मैंने नीचे आपको दिखाया है। सर आप जो कह रहे हो सच कहां से है? ऊपर डायग्राम में चेक करो। नाउ यू सी दैट रेस्ट ऑफ द पार्ट। आई होप नाउ इट इज विजिबल। एंड आई वाज ट्राइंग टू शो यू कि एच का पेरेंट है डी। आपको दिख रहा है? यस, एच का पेरेंट है डी। सी, हैव अ लुक एट दिस। दिस इज 8, दिस इज 4, this is 9, this is 4. A 9 divided by 2, integer divided by integer gives you integer. With that formula, 9, 4. So I hope you understood that. Something similar, f का parent है c. This is 6 divided by 2, 7 divided by 2. It is there. Like you find that. So मुझको b के दोनों child ढूंढने हैं.
आपको बी के दोनों चाइल्ड ढूंढने हैं, इसका इंडेक्स क्या है 2, ए 2 into 2, ए 2 into 2, दिस इज नथिंग बट द लेफ्ट चाइल्ड, 2 into 2, this is nothing but the left child, and 2 into 2 plus 1, this is nothing but the right child, this is nothing but the right child. अरे is the concept clear? अगर आपको लेफ्ट और राइट मिल रहा है तो कैन यू नाउ कॉल इट एज अ ट्री? अगर लेफ्ट और राइट अगर आपको मिल रहा है, कैन आई से दैट यस इट इज अ ट्री? यस इट इज अ ट्री. अब आप लोग जितने सारे आपने इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, आपने जो भी एल्गोरिदम बनाए थे, वो सारे एल्गोरिदम आप इसके साथ इंप्लीमेंट कर सकते हो. ये अल्टीमेटली एल्गोरिदम रिमेन सेम. नो, आपको क्या करना है? यू वांट टू गो टू द लेफ्ट, यू वांट टू गो टू द राइट, दैट इज व्हाट ऑल यू नीड टू टेक केयर. तो आई एम सेइंग दैट you can very well go ahead and implement all those algorithms in order, pre order, post order, क्योंकि आपको लेफ्ट और राइट के फॉर्मूले पता है. rather not only that, नॉर्मल ट्री में गिवन अ चाइल्ड हम लोग पेरेंट के पास नहीं जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर गिवन अ चाइल्ड आई एम एबल टू गो टू द पेरेंट आल्सो जस्ट बाय सेइंग डिवाइड बाय 2. ये जो आप लोग देख रहे हो, दिस इज array implementation of almost complete binary tree, or array implementation of a complete binary tree. The array implementation of the complete binary tree is called as a heap, is called as a heap. So what is heap? If you have a definition, if you don't know, this is in front of you. Heap is array implementation of a complete binary tree. और array implementation का मतलब क्या है? There is a formula. The parent-child relationship is maintained through the index calculations. So the parent index is nothing but the child index divided by 2. Remember, integer divided by integer gives you integer. And the left child index is parent index multiplied by 2. And right child index is parent index multiplied by 2 plus 1. And this is nothing but the heap. Hey, by the way, एक बात बताओ, is it a binary search tree? I said, am I calling it the binary search tree, or I'm calling only binary tree? I'm saying it is only binary tree. I'm not saying that it is binary search tree होना कोई जरूरी नहीं है. बाइनरी सर्च ट्री होना जरूरी नहीं है. ये बाइनरी सर्च ट्री मतलब लेफ्ट वाला स्मॉलर होना चाहिए, राइट वाला ग्रेटर होना चाहिए, बिल्कुल नहीं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, एनी ट्री. इसलिए मैंने यहाँ पर नंबर भी नहीं डाले, मैंने सीधा एबीसीडी डाल दिया, मैंने सीधा सीधा एबीसीडी डाल दिया. ओ दैट इज ग्रेट. दिस इज कॉल्ड एज ए हीप. व्हाट इज हीप? ए बाय द एक और वेरी इंपॉर्टेंट. सर हमने जावा में हीप पढ़ा है, सर हमने सी सी प्लस प्लस में हीप पढ़ा है. दैट हीप इज अ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट. यहां पर वी आर लर्निंग हीप एज अ डेटा स्ट्रक्चर. इसका और उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है. आई होप इट इज क्लियर. नहीं तो बाद में अचानक से किसी को तो याद आएगा, सर वो हमने जावा में मैनेज हीप पढ़ा था, तो सर आप गार्बेज कलेक्टर की बात कर रहे हो. बिल्कुल नहीं. दैट हीप इज अ मेमोरी एरिया. वो जावा का या सी का, सी प्लस प्लस का, इट इज अ मेमोरी एरिया. हेयर वी आर लर्निंग हीप एज अ डेटा स्ट्रक्चर. हीप एज अ डेटा स्ट्रक्चर. ओके, दैट इज ग्रेट. नाउ यहां पर ग्रेटर स्मॉलर होने में कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन आई हैव गॉट सम एग्जांपल. टेक अ लुक एट दिस एग्जांपल. टेक अ लुक एट दिस एग्जांपल एंड चेक, डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप ओवर देयर? ये जो ट्री आपको दिख रहा है, इस ट्री में आपको कहीं पर कोई रिलेशन दिख रहा है? इज इट अ बाइनरी सर्च ट्री? फर्स्ट, इज इट अ बाइनरी सर्च ट्री? आराम से देखो असवरी. इज इट अ बाइनरी सर्च ट्री? नो वे, दिस इज नॉट अ बाइनरी सर्च ट्री. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर शायद कहीं ना कहीं पे तो आप लोगों ने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन दैट ए 30 के राइट में 35 के राइट में 30 है, और ये इवन 17 के राइट में 10 है. सो यू कैन नॉट से दैट इट इज अ बाइनरी सर्च ट्री. बाइनरी सर्च ट्री नहीं है. हाउएवर स्टिल यहाँ पर एक रिलेशन है, स्टिल यहाँ पर एक रिलेशन है. टेक मेक अ नोट. द पेरेंट नोड is greater than both of its child node. Check. The parent node is greater than both of its child nodes. Parent node is greater than both of its child node. Oh yes, आप लोग कोई भी नोड को चेक कर लो, parent is greater than both of its child node. Oh that is fantastic. ये जो ट्री है, ये जो अगर आप इसका एरे रिप्रेजेंटेशन करते हो, अगर इस ट्री का आप एरे रिप्रेजेंटेशन करते हो, इट इज कॉल्ड एज मैक्स हीप. Max heap is a heap data structure in which each node is greater than both of its child nodes. इसको कहा जाएगा
max heap. And can you please quickly tell me, do you see any relationship into this? Do you see any relationship into this? Do you see any relationship into this? Yes, absolutely. Here you find that each child, uh, each parent node is less than both of its child node. A parent node is less than both of its child node. What do you call it as? Obviously, here I will call it as, where I will call it as, this is mean heap. This is mean heap. What is mean heap? Mean heap is a data structure in which it is a heap data structure in which each node is smaller than both of its child nodes. Oh, that is fantastic. Mean heap is a heap data structure in which each node is smaller than both of its child node. Oh, that is fantastic. Then, तो सर ये मैक्स हीप, मीन हीप यूज कहां पर होता है? जनरल हीप ये कहीं पर यूज नहीं होते. जब यूज होते हैं या तो मैक्स हीप या मीन हीप यूज होते हैं. तो ये मैक्स हीप, मीन हीप कहां पर यूज होते हैं? द मैक्स हीप, मीन हीप, दे आर कॉमनली यूज टू इम्प्लीमेंट, यूज्ड टू इम्प्लीमेंट, शायद मैंने बताया था आपको इससे पहले. कैन समवन रिकॉल? दे आर यूज टू इम्प्लीमेंट. Someone recall this? Not? Okay. Implement प्रायोरिटी क्यूज. प्रायोरिटी क्यूज मैंने आपको बताया था, प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट करने का सबसे एफिशिएंट तरीका है, यू कैन गो फॉर हीप. अगेन इट इज नॉट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू, इट इज अ प्रायोरिटी क्यू. द वन which is having highest priority should come out first. One with the highest priority should come out first. And I'm saying that this is one application where heaps are commonly used. जो जावा का, जावा का जो प्रायोरिटी क्यू नाम का क्लास है वो इंटरनली हीप इंप्लीमेंटेशन है. शायद मैंने आपको बताया था विद द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? इसका एनक्यू और डी क्यू, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? शायद मैंने बताया था वो भी आपको. मैंने जावा का प्रायोरिटी क्यू का डॉक्यूमेंटेशन ओपन करके भी आपको दिखाया था कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है. इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है O of log n. A time complexity is O of log n. Oh, that is fantastic. Wait, wait. सर इसका और भी, क्या इसका और भी कहीं पर यूज होता है? यस, इसका और भी कहीं पर तो यूज होता है. और इसका यूज होता है टू इंप्लीमेंट समथिंग कॉल्ड एज अ हीप सॉर्ट. व्हाट आई सेड, इसका और भी कहीं पर तो यूज होता है, और इसका यूज होता है टू समथिंग called as a heap sort. So what basically heap sort? Let me just show you. Take a look at this and pay attention. Given a max heap, given a max heap, sorting this array is very simple. Given a max heap, sorting this array is very simple. And please pay attention. Please pay attention. Given an array, sorting this is very simple. Pay attention. Every time I'm trying to delete, a max heap में जब भी delete होता है, delete हमेशा from the top होता है. A max heap में जब भी delete होता है, delete हमेशा from the top होता है. Now tell me, अगर मैं 80 को delete करता हूं तो इसकी जगह पे what is the most ideal, which is the most ideal element at this place? A max heap आपको ऑफिस से max heap बना के रखना है, भूलना मत. Yes, obviously I'm saying that in this particular case, so you want to put 35 over there. Wait for a minute. यहाँ पर मेरा array टोटल कितने का है? मेरा array है 10 का. 10 में से मुझको 80 निकालना है. 10 में से अगर मुझको 80 निकालना है तो array will be of 9 elements. A array will be of 9 elements. A 9 element, इसमें से जो 1 था मैंने बाहर कर दिया, ये जगह मैंने खाली कर दी, ये मैंने जगह खाली कर दी. Obviously I cannot put 1 over here. 1 is not suitable over here. I understand this and I find that इसकी जगह पे 35 is better. A 35 is better. Now tell me, is 1 suitable at this position? Is 1 suitable at this position? No. Which is suitable over there? What is suitable over there? Oh, you find that 30 is like more suitable over here. And then tell me, do you believe that 1 is suitable over here? 1 is suitable over here? Yes. ए 1 यहां पर रह सकता ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है?
Absolutely suitable, na? Rajat, what happened? Is it still a max heap? I guess it is still a max heap. It is still a max heap. There is no problem. What I'm saying is that ये जो 80 ये जो 80 था, so इस 80 को कहाँ पर रखो? I'm saying that वैसे अभी आपका हीप पहले 10 का था, पहले आपका हीप 10 का था, अब मैं कह रहा हूँ यू कंसिडर द हीप ऑफ 9 और ये एलिमेंट यू कंसिडर इट, यू ट्रीट दिस एलिमेंट एज दिस एलिमेंट इज आउट ऑफ हीप. इसको हीप में कंसिडर मत करो. यू कंसिडर दैट दिस एलिमेंट इज आउट ऑफ हीप. तो मेरा एक्चुअल हीप कितना है? मेरा एक्चुअल हीप है 1 to 9, 1 to 9 एंड 80 इज आउट, 80 इज आउट. ये मैंने आपको ऊपर ट्री में दिखाया है. वही चीज अगर आप लोग डायग्राम में करते हो तो डायग्राम में यू विल अंडरस्टैंड दैट इट हैपन समथिंग लाइक दिस. एरे में इट हैपन समथिंग लाइक दिस. द 35 reach to this location, 30 jump to this location and 1 jump to this location. This is something we have done. और ये 80 this is out, 80 this is out, this is out of the array. So my array ये मैंने कहीं पर तो रखना है, इसलिए मैंने उसको एंड में रख दिया. You just forget about that and you focus only onto the array from 1 to 9. चलो, I want to delete one more element. Pooja is asking the question, why did you remove 1? I removed 1 because it was last element. I'm not removing smallest, I'm removing the last element. I'm not removing the smallest, I'm removing the last element. Don't worry पूजा, 2 मिनट रुको, हम लोग 2-3 इटरेशन करेंगे, क्लियर हो जाएगा. और अगर क्लियर नहीं हुआ मैं फिर से रिपीट करूंगा. यू आर मोस्ट वेलकम, नॉट अ प्रॉब्लम. आई एम गोइंग अहेड. अब मुझको एक और एलिमेंट डिलीट करना है. अगर मुझको एक और एलिमेंट डिलीट करना है तो ऑब्वियसली जो टॉप मोस्ट होगा हम लोग हमेशा उसी को डिलीट करते हैं. नो प्रॉब्लम. ए 35 इज आउट, 35 आउट. अब इस एरे में लास्ट एलिमेंट कौन सा है? which is last element in array? Last element in array, yes, it is 2. Last element in array is 2. Now tell me, is 2 is suitable for this position? No, no way. तो फिर यहां पर कौन आना चाहिए? 30. Okay, let us shift 30 up. Is 2 is suitable for this position? No way. I guess let 20 come over here. Correct? Is 2 is suitable for this position? Yes, as good as it's done. अब ये जो 30 आपने बाहर निकाला है, हैव अ लुक एट दिस. जो 30 आपने बाहर निकाला है, डू वन थिंग, इस 30 को कहीं ना कहीं पर रखना चाहिए. इस 30 को हम लोग 35 को हम लोग यहाँ पर रखते हैं. और अगर आपने 35 को यहाँ पर रख दिया है, यू जस्ट कंसिडर दिस एज आउट ऑफ एरे. वापिस एक बार एरे में चेक करते हैं हम लोगों ने क्या किया. हमने 35 को बाहर निकाला और उसकी जगह पे ये 35 को बाहर निकाला, उसकी जगह पे 30 गया, 30 की जगह पे 20 गया. करेक्ट? और 2 is went into the place of 20 and then this 35 is out. So now let us focus on an array of 8 elements. Let us focus array of 8 elements. Please pay attention. You pay attention. I'm continuing further. Nanesh is saying that 20 का left right से greater हो गया. हाँ होने दो. Naneshwar, we are not bothered about left and right. हमारा मैक्सिप का कंसेप्ट क्या कहता है? पेरेंट हैज टू बी ग्रेटर, पेरेंट हैज टू बी ग्रेटर देन बोथ द चाइल्ड. हम लोग लेफ्ट और राइट का कंपैरिजन कर ही नहीं रहे. आर यू देयर? या, इट इज नॉट बाइनरी सर्च ट्री. सो ये लेफ्ट और राइट हम लोग कंपेयर नहीं कर रहे. पेरेंट हैज टू बी ग्रेटर देन बोथ ऑफ देम. वी आर नॉट यूजिंग बाइनरी सर्च ट्री. Let us delete one more. Go ahead. Delete one more. 30 is to be deleted. A 30 is to be deleted whichever is the last element. अब ये array of 8 element है, तो जो भी लास्ट वाला है, array of 8 element है, 8 वाला, ये आप चेक करो क्या 12 यहां पर रह सकता है? Is 12 is suitable for this position? No. Then who is suitable for this position? I guess 20 is suitable for this position. So do you believe that 12 is suitable for this position? Yes, look like 12 is suitable for this position. अब एरे अब 8 का नहीं बचा, अब 7 का एरे बचा, तो इसको हम लोग कहीं ना कहीं पर तो एट द एंड इसको हम लोग यहाँ पर स्टोर कर देते हैं. इसको हम लोग यहाँ पर स्टोर कर देते हैं. आई हैव स्टोर दैट, आई स्टोर दैट. एंड देन इन एरे, एरे में क्या हुआ? ए 30 इज आउट. 30 की जगह पे 30 की जगह पे कौन गया? 20 गया. और 20 की जगह पे कौन गया? 20 की जगह पे आई गेस 12 गया, 12 गया. And then you find that the 30 comes over here. 30 comes over here. That's it.
this is something in front of you. Okay, that is still going great. This is still going great. You continue further. You continue further. I want to delete one more element. बस एक लास्ट एलिमेंट में डिलीट करके दिखाने वाला हूं, बचाओ आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद में. 20 is to be done out. A 20 is to be deleted. 20 is to be deleted. तो उसकी जगह पे किसको ट्राई करना है? Whoever is last. अब array of 7 element, I guess 1 is last. हम लोग वापिस से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नहीं ढूंढ रहे, जो भी लास्ट वाला है हम लोग उसको कंसिडर कर रहे हैं. Is 1 suitable for this? Not really. तो who is suitable for this? Oh, 17 is suitable for this. 17 is suitable for this. Take it at a place and then check, is 1 is suitable for this? Not really. Then who is suitable for this? I find that 15 is suitable for this. Oh yes, 15 is suitable for this. And then obviously अब 1 यहाँ पर suitable होगा ही, क्योंकि आगे element है ही नहीं. So you have to consider this. You have to consider this. Where do I put 20? I put 20 into the last location. Into the last location, which is now out of this heap. Out of this heap. डायग्राम में चेक करो, नीचे एरे के डायग्राम में क्या हुआ, हमने 20 को बाहर निकालने की कोशिश की और 1 के लिए आप लोग जगह ढूंढ रहे हैं, बट 20 की जगह पे कौन गया? 20 की जगह पे 17 was gone there, and after that 15 gone to the place of 17. 15 gone to the place of 17 और उसके बाद में at fourth position के ऊपर the 1 sits over there. 1 sits over there. Now you find that this 20 goes at the end. आप लोग कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो? आप लोग कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो? आप लोग कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो और नहीं ऑब्जर्व कर रहे हो तो अभी करो. हैव यू नोटेड दैट? हम लोग एक एक एलिमेंट को निकाल निकाल के उसको एंड में डाल रहे हैं और आपका एरे स्लोली स्लोली डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होते जा रहा है. आपका एरे स्लोली स्लोली डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होते जा रहा है. इफ यू फॉलो द होल स्टोरी, इफ यू फॉलो द होल स्टोरी, व्हाट दिस विल बी? अगर आपने पूरा स्टोरी कंप्लीट किया तो फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे हीप सॉर्ट. इसको हम लोग कहेंगे हीप सॉर्ट. सो व्हाट इज हीप सॉर्ट? इट इज अ सॉर्टिंग यूजिंग मैक्स हीप. इट इज सॉर्टिंग यूजिंग मैक्स हीप. तो सर अगर डमी कोड लिखना है तो हम लोग डमी कोड कैसे लिख सकते हैं? एक डमी कोड अगर लिखना है, मैं पूरा कोड नहीं लिख रहा हूं, मैं डमी कोड लिख रहा हूं, एक बेसिक सूडो कोड लिख रहा हूं. अगर सूडो कोड लिखना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? आई एम सेइंग दैट यू राइट अ कोड फॉर डिलीटिंग फ्रॉम द हीप. यू राइट अ कोड फॉर डिलीटिंग फ्रॉम द हीप. सो हम लोग हीप में से एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं. सो यू गेट द एलिमेंट व्हाटएवर. Now, whichever element that you have deleted, whichever element that you have deleted, I'm saying that put val at the end. Put val at the end of array. So जहां पर heap खत्म होता है वहां से आगे उसको ऐड कर दो. And you put it in a reverse case while heap is not empty. While heap is not empty, what all I need to do? What I need to do? I need to delete element from heap. I'll write it properly. Delete element from heap. Delete element from heap and put it at the end. By the way, what is the time complexity of this part? What is the time complexity of this part? Can you quickly guess that? Time complexity? अगर आप लोग डिलीशन की बात कर रहे हो, एक एलिमेंट डिलीट करने की बात कर रहे हो, एक एलिमेंट डिलीट करने की बात कर रहे हो, दैट कम्स आउट टू बी O of log n. एक एलिमेंट डिलीट करने की बात कर रहे हो, देन दैट शुड कम आउट टू बी O of log n. क्योंकि उतना जितना हाइट होगा ज्यादा से ज्यादा उतने इटरेशंस होंगे. आई होप यू आर विजुअलाइजिंग. जितना ज्यादा हाइट होगा ज्यादा से ज्यादा उतने ही इटरेशंस होंगे. लेकिन रुको, ये आपको एक बार नहीं करना है, ये आपको रिपीटेशन में करना है. और अगर आप इसको रिपीटेशन में कर रहे हो, अगर आप इसको रिपीटेशन में कर रहे हो, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी, the time complexity will be, obviously time complexity will be O(n) log n. O(n) log n. So this is nothing but basic idea behind heap sort. But wait, इतना आसान नहीं है. यहां पर मैंने आपको पहले एज्यूम करके बताया कि यू ऑलरेडी हैव गॉट अ मैक्स हीप. प्लीज नोट दैट हमने पहले एज्यूम किया कि हमारे पास मैक्स हीप ऑलरेडी है.
अगर आपके पास मैक्स हीप ऑलरेडी है तो आपने ये किया, बट यूजुअली जब आपके पास एरे आएगा वो तो फुल्ली अनसॉर्टेड होगा. आई होप यू आर विजुअलाइजिंग. अगर आपका जो एरे होगा वो फुल्ली अनसॉर्टेड होगा, लिसन केयरफुली, अगर आपका एरे होगा, अगर वो फुल्ली अनसॉर्टेड होगा, तो व्हाट शुड बी योर वेरी फर्स्ट स्टेप? Your very first step should be make make max heap. So your first step should be पहले max heap create करो. Your first step would be create a max heap. पहले max heap create करो और उसके बाद में you follow this logic. ये पहले max heap create करो और उसके बाद में you follow this logic. Now you ask the question, अगर हम लोग max heap create करने जाते हैं, what is the time complexity for that? A time complexity for that is still it is O of n log n. A time complexity of making a max heap from the random array. Time complexity of making a max heap from the random array is still O of n log n. So can you please tell me what is the total time complexity? I hope अभी तक आपको time complexity समझ में आ गया है. So I'm saying that it is a two-step process. Step number one, make a max heap, and step number two, follow this loop. Now follow this loop. ये nested नहीं है. It is one after another है. One after another है. तो time complexity would be n log n plus n log n. A n log n plus n log n probability is 2n log n, but 2 is a constant. But 2 is constant that you can take out, and you can simply say that this is nothing but my logic of heap sort, which is having the overall time complexity is 2n log n, जिसमें से 2 is constant, we never bother about that, and we simply say that the time complexity comes out to be n log n once again. आप लोग जिंदा हो? अभी मैंने जो आपको पार्ट बताया था, I only told you the half of the portion. A half of the portion where I was trying to explain you, अगर आपके पास मैक्सिप बन गया है, वहां से आगे वाला प्रोसेस मैंने बताया, क्योंकि वो लोगों को क्विकली विजुअलाइज हो जाता है. बट द प्रॉब्लम इज सो व्हाट इफ माय एरे इज टोटली अनसॉर्टेड? व्हाट इफ माय एरे इज टोटली अनसॉर्टेड? अगर मेरा एरे पूरा का पूरा अनसॉर्टेड एरे है, पूरा का पूरा अनसॉर्टेड एरे है, जो मैक्सिप नहीं है, तो उसको मैक्सिप में कन्वर्ट कैसे करेंगे? ओ दैट इज अ लॉजिक. लाइक फॉर एग्जांपल, चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सा खिलवाड़ करके देख लेते हैं, ऐसी फॉर सेक ऑफ फन. आई एम जस्ट पुटिंग सम रैंडम नंबर्स, नाउ लिटरली रैंडम. अब मुझको भी पता नहीं, मे बी ऑन द फ्लाई ही ये नंबर्स आपके सामने कंसिडर कर रहा हूं. सो आई रियली डोंट नो वेदर इट विल बी राइट, रॉन्ग और वॉट एवर. नाउ टेक अ लुक एट दिस एंड नाउ टेल मी, इज इट अ मैक्सिप or is it a maxip? No way. Is it a heap? Is it a heap? हाँ, yes, heap can be always there ना. ए heap का मतलब क्या है? Almost complete binary tree आप लोग array में डाल रहे हो, then you call it as a heap. I hope you people are understanding. So almost complete binary tree, you are putting it in an array is nothing but the heap. So saying I'm not saying anything about this. तो इसको हम लोग heap कह ही सकते हैं. ये heap का मतलब क्या है? हमें parent child relationship बनाने आने चाहिए. ये parent child relationship अभी भी है. ए 20 का लेफ्ट चाइल्ड, ए 20 का लेफ्ट चाइल्ड कौन है? 20 का लेफ्ट चाइल्ड है 2 into 2 4. Yes, 30 is left child. 20 का राइट चाइल्ड वो 2 into 2 plus 1. This is the right child. So yes, is it a heap? Yes, 100% it is a heap. But my question is that इसको max heap में convert कैसे करेंगे? Oh, that is a good question. मैं algorithm बता रहा हूँ, मैं कोड नहीं बता रहा हूँ. At the end I'll share the code with you. If someone is interested in, he can think of a code. मैं कोड नहीं बता रहा हूँ, मैं algorithm बता रहा हूँ. Pay attention. Take a look at this. You start from the middle element and go in a reverse order. You start from the middle element and go in the reverse order. So what I'm saying is that you take 80 out. I have taken 80 out. And now check that is 80 is max heap. 80 के नीचे जितने सारे descendant है, is it a max heap? 80 के नीचे जितने सारे element है, is it a max heap? Yes, it is a max heap. And if it is a max heap, nothing to touch. Nothing to touch. Everything is all right. Everything is all right. You continue further.
Now you check the पांचवा एलिमेंट आप लोगों ने चेक कर लिया, you go back, you check the fourth element, and now tell me, is this a max heap? Is this a max heap? Oh, seems that this is still a max heap. Okay, again, nothing to be done, nothing to be done. Okay, you continue further, you continue further. Is this a max heap? Is this a max heap? Oh, still yes, this is still a max heap. If this is still a max heap, again continue further. ये लकीली मैंने कहा ना, मैंने रैंडमली नंबर लिए और रैंडमली ऐसे नंबर आए कि वो मैक्स हीप ही दिखा रहा है. वेरी गुड. बट वेट, नाउ यू शुड सी दैट, चेक, इज दिस अ मैक्स हीप? इज दिस अ मैक्स हीप और नो वे? सो इसका मतलब आप लोग ये कह रहे हो कि 20 इज नॉट सुटेबल एट दिस पोजीशन. इफ 20 इज नॉट सुटेबल एट दिस पोजीशन, तो 20 के दोनों चाइल्ड में से विच चाइल्ड इज सुटेबल फॉर दैट पोजीशन? दोनों चाइल्ड में से, अच्छा, दिस इज सुटेबल फॉर दिस पोजीशन. नाउ टेल मी, is 20 is suitable for this position? Is 20 suitable for this position? Yes, 20 is suitable for this position. I can say that, is this a max heap now? Yes, it is a max heap. Oh, that is fantastic. You continued further. Now tell me, is this a max heap? Not at all. So I guess there is a problem with the 17. It is a problem with 17. 17 का कौन सा child ज्यादा ideal है? Oh yes, 80 is ideal. So now tell me, is 17 is ideal for this position? Not again. So who is ideal for this position? You continue 30. You put 30 above and tell me, is 17 ideal for this position? Yes, 17 is ideal for this position. Now my question, is it a max heap? Is it a max heap? Yes. तो मैक्स हीप कैसे करते हैं हम लोग? मैक्स हीप हम लोग कैसे करते हैं? इट इज वेरी इजी. आप लोग पांचवा एलिमेंट बाहर निकालते हो और चेक करते हो कि क्या उसके दोनों चाइल्ड उससे छोटे हैं. अगर दोनों चाइल्ड उससे छोटे हैं, नथिंग मच टू डू. अगर फिर आप लोग चौथा एलिमेंट बाहर निकालते हो, आप लोग चेक करते हो कि इसके दोनों चाइल्ड उससे छोटे हैं. अगर है तो अच्छी बात है. तो एंड यू कंटिन्यू, एंड दिस वे यू डू इट फॉर 3, दिस वे यू डू इट फॉर 2, दिस वे यू डू इट फॉर 1, एंड व्हेन यू फॉलो इट ऑल द वे, इट बिकम्स अ काइंड ऑफ मेकिंग ऑफ इट. दिस इज नथिंग बट मेकिंग ऑफ मैक्सिप. मेकिंग ऑफ मैक्सिप. तो हम लोगों ने क्या किया? वी गॉन इन द रिवर्स डायरेक्शन. इफ यू जस्ट वांट टू टेक अ क्विक लुक एट द कोड, कोड इसे एक्चुअली नहीं बताना चाहिए आपको. इट विल कंफ्यूज यू लॉट. अच्छे अच्छे लोगों को कंफ्यूज कर देता है. तो आई एम नॉट रियली एक्सपेक्टिंग, बट जस्ट टू टेक अ वेरी क्विक रिव्यू ऑफ अ कोड. लाइन बाय लाइन मत जाना. आई एम जस्ट सेइंग दैट मेकिंग अ हीप, आई एम जस्ट सेइंग दैट यू स्टार्ट फ्रॉम हाफ. You start from half, greater than or equal to 1, I minus minus. Go in reverse direction. Reverse direction, you take out ith element, you take out ith element, and then you are finding a child. And then what you are doing? You are finding the appropriate position for the temp. ये जो आप लोगों का ith element था, you find appropriate position for this. As you are finding appropriate position for this, ये कैसे ढूंढते हैं? You need to just check. You need to just check कि आपका कौन सा child greater है, and you want to ensure that each temp is greater than that child. If temp is greater than that child, nothing to do. It is very easy. Nothing to do. It is very easy. But if it is not, आपके child को promote कर दो. You put child into its parent's location. You put the child into its parent location. The child and child divided by 2. So you put child to its parent. You put child to its parent, and then you continue the process. You continue the process for its child. तो आप लोग उसको लूप में जाके ढूंढो, एंड फाइनली ये जो टेम्प आप लोग निकाला था उसको उसके एप्रोप्रिएट पोजीशन पे इंसर्ट कर दो. दिस इज अ सिंपल एंड क्विक लॉजिक हाउ यू कैन मेक अ हीप. Obviously, this is taking a time complexity of O(n) log n, and then deleting a max node. अभी मैं आपको वही दिखा रहा था उससे पहले वाला कोड. A deleting a max node, you always delete the first node. A first node is the topmost node जिसको आपको delete करना है. तो जो कुछ भी आपका last element था, you take the last element out, and you find appropriate position for this node. You find the appropriate position for the temp. आप लोग नोट किया होगा ऊपर का कोड और नीचे का कोड एग्जैक्टली सेम है. अगेन फाइंडिंग एप्रोप्रिएट पोजीशन ऑफ द टेम्प. वंस यू गेट इट देयर, यू फाइनली डिलीट द मैक्स. मैक्स का नोड था
उसको आप रिटर्न कर दो। तो सर हीप सॉर्ट कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? हीप सॉर्ट, all we are doing is kind of a combination. Heap sort, all we are doing is kind of combination. What is that? You say is the max heap. पहले heap बनाओ. It is taking a time complexity of let's say n log n. No problem. And you continue further. You continue further. You are looking for I is equal to 1, I is less than length, I plus plus. एक एक एलिमेंट डिलीट करो और डिलीट करके just put it at the end. Delete करो and put it at the end. And this is nothing but the logic of your heap sort. I just taken a quick review for you. At the end में कोड शेयर कर दूंगा, जिसको इंटरेस्ट होगा वो लोग करो. आप लोगों ने पेपर वर्क कर लिया तो भी बहुत है. एंड फॉरगेट, अगर आपको सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आया तो भी बहुत है, राइट? दिस इज नथिंग बट व्हाट हीप सॉर्ट इज. वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड सॉर्टिंग एल्गोरिथम. बेसिक सॉर्टिंग यूजुअली आप लोग करते हो, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट एंड ऑल दैट. You always find it easy. Heap sort, yes, it is bit troublesome, I know, but I'm sure at least you get overview, an idea of heap sort. Have you? I just taken a quick recap and I told you the concept of heap. तो सर वापस से इंटरव्यू में आएगा? डोंट वरी, इंटरव्यू में नहीं आएगा. एग्जाम में इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह पूछा जा सकता है, तो उतना आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा मुझको लगता नहीं है कि आपको और कुछ पता होना चाहिए. And now since you understood heap sort, what we'll do is that we want to go on to our remaining two sorting algorithms. Which two sorting algorithms are left? I guess merge sort and quick sort. But before that, we'll take a break for 10 minutes so that you get stabilized. Just recap, revise. You have got any immediate question, let me know. Otherwise, after the break, we will first talk about merge sort, and if time permits, then we will talk about quick sort. Right? 10 minutes break. Get comfortable. Okay, there is some question. Let me answer that, and then we'll go on merge sort. Didn't get time complexity for the max heap. Okay, have a look at this, Sarthak. So you're talking about making a max heap, right, Sarthak? The time complexity of making a max heap, how it comes out to be O n log n. So here you go. Take a look at this. You see the code. I guess code will make it more clear. You have like a function make heap. First of all, how many times this function is going to execute? How many number of iterations are done? How many iterations are done? Can you take a look at this? Sarthak, for this loop, how many iterations are done? I guess it is very clear from the loop itself. The loop, you are starting from size by 2 greater than equal to 1 and I minus minus. So I guess this loop is going to repeat for n by 2 times. Am I correct? अगर number of elements आपके पास n है, then loop is going to repeat for n by 2 times. That is for sure. And then ये जो आपका inner loop है, inner loop में ज्यादा से ज्यादा कितने iterations होंगे? That depends on height. Inner loop में ज्यादा से ज्यादा कितने iterations होंगे? That depends on a height. I hope you agree. जितना ज्यादा हाइट होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको उतने लेवल्स तक जाना पड़ेगा. जस्ट नाउ थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये किया था, एंड यू मस्ट हैव नोटेड दैट जब हम लोग यहाँ पर 80 को फिट कर रहे थे, जब हम लोग यहाँ पर 80 को यहाँ पर फिट कर रहे थे, सो वी नीड टू ट्रैवर्स फ्रॉम हेयर टू हेयर, वी नीड टू ट्रैवर्स फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड प्रोबब्ली वी नीड टू ट्रैवर्स फ्रॉम हेयर टू हेयर. तो मैं कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा number of iteration for setting up the element will be proportional to the height, and you always find that the height in this particular case is approximately equal to log of n. The height is approximately equal to log of n. As you are saying this, it simply means that ये जो है, this will be log n. A time complexity of the inner one, it will be like log n. This outer one, the loop is repeated n by 2 times. So n by 2 into log n.
but 1 by 2 is constant. If 1 by 2 is constant, you can just skip that. And if you skip that 1 by 2 constant, the time complexity of making heap would be O of n log n. Got the point, Sarthak? Right? So that is the idea. फिर से एक बार, outer loop is going to repeat for n by 2 times. So वो n by 2, or inner loop will be repeated maximum. I'm saying worst case, it is up to the height. Up to the height. So it will repeated for maximum height. But height itself is proportional to log n. ये अभी तक हम लोग कर रहे थे बाइनरी सर्च, और ये नॉट ओनली बाइनरी सर्च, जो मैं आपको पूरा वो फॉर्मूला बताया था 2h+1 -1. So I'm saying that approximately height will be like log n. And if the height is like log n, so this loop, इसका time complexity होगा log n, और ये loop repeat होगा n by 2 times. So the total time complexity हुआ n by 2 into log n. But n by 2 में 1 by 2 is constant, you take it out. The time complexity of making a heap is n log n. Time complexity of making a heap is n log n. Something similar यहाँ पर deletion of max. A deletion of max ये एक ही बार चल रहा है, एक ही बार चल रहा है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है log n. ए डिलीशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है log n. लेकिन जब आप उसको हीप सॉर्ट में डालते हो, जब आप उसको हीप सॉर्ट में डालते हो, हीप सॉर्ट के अंदर, हीप सॉर्ट के अंदर, now you find that this is log n, this is log n, but this is repeated for n times. So this part is n log n. This part is n log n. Making heap, this is n log n. So it is n log n plus n log n. N log n plus n log n is actually 2n log n. But 2 is again constant. You take it out. So you simply say that the time complexity of overall heap sort is n log n. I hope I just revised the entire stuff. Is that okay? Is that clear to everyone? And please note again, you asked me the question, तो सर हमें ये जब हम लोग एग्जाम में जाएंगे तो हमें ये पूरा का पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा क्या? प्रैक्टिकली स्पीकिंग नो, प्रैक्टिकली स्पीकिंग नो, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में डेरिवेशन का कोई चांस ही नहीं है. इफ इट इज एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑल यू नीड टू नो इज दैट हीप सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है, दैट्स इट. सो यू हैव टू जस्ट गिव द आंसर. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कौन से प्रॉब्लम्स का करना पड़ता है? उन प्रॉब्लम्स का करना पड़ता है जहां पर आपको पहले से पता नहीं है, जहां पर जो कोई स्टैंडर्ड एल्गोरिदम नहीं है. अगर स्टैंडर्ड एल्गोरिदम है, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, ठीक है, बबल सॉर्ट, फॉर द स्टैंडर्ड एल्गोरिदम यू कैन ऑलवेज बाय हार्ट कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होता है. जब नॉन स्टैंडर्ड एल्गोरिदम आता है एंड दे हैव गिवन सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, लाइक फॉर एग्जांपल डब्ल्यू लिंक लिस्ट में मुझको नोड डिलीट करना है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? नाउ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज देयर. वहां पर आपको सोचना पड़ता है और वहां पर आपको कैलकुलेट करना पड़ता है. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. सो तो सर इंटरव्यू में पूछते हैं, अगेन इंटरव्यू वाले पहले कोड लिखने के लिए बोलते हैं. जिसको कोड लिखने आता है उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछा जाता है. अगर कोड ही लिखने नहीं आता है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज आउट ऑफ स्कोप. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. तो पहले बेसिकली कोड करो, मेक यूर सेल्फ कंफर्टेबल, पहले लॉजिक क्लियर करो, पेपर वर्क एक्सप्लेन करो, फिर कोड करो, और जब तक आप वहां तक पहुंच जाओगे, आई एम वेरी श्योर यू विल बी एबल टू मैनेज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल. करेक्ट? गो स्टेप बाय स्टेप, थिंग्स विल बी मैनेजेबल. गोइंग बैक, ये कल डिस्कस किया था हम लोगों ने, एंड नाउ इट्स टाइम वी विल कंटिन्यू विद द मर्ज सॉर्ट फर्स्ट. तो पहले हम लोग मर्ज सॉर्ट देखते हैं, बाद में अगर टाइम बचा देन वी विल गो ऑन अ क्विक सॉर्ट. चलो, व्हाट इज मर्ज सॉर्ट? व्हाट इज मर्ज सॉर्ट? थोड़ा मोर और लेस इट इज सिमिलर टू द बाइनरी सर्च. मैं आपको मर्ज सॉर्ट का एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ जो हम लोग यूजुअली करते हैं. अभी तो कैसे सब कुछ ऑनलाइन मोड में चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग इन ऑनलाइन मोड. द स्टोरी इज लाइक हमें करने लायक कुछ है ही नहीं. एवरीथिंग यू नो, आपके एग्जाम्स ऑनलाइन ही होते हैं. वो डायरेक्टली वो हैकर अर्थ वहां पर वो सीधा सीधा हमको रिपोर्ट लाके देता है, इस बंदे के इतने एग्जाम्स हुए, इसके इतने इसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इसके इतने करेक्ट हैं, इसके इतने मार्क्स है. हमको सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है, तो हमें करने लायक ज्यादा कुछ होता नहीं है. लेकिन जब ऑफलाइन यू नो जब कोर्स होता था तो हम लोग एग्जाम लेते थे, और एग्जाम लेते थे तो बच्चे यू नो रैंडमली ऐसे हवा हम लोग स्प्रेड करवाते थे उनको, एक बेंच के ऊपर एक बच्चा, और हर एक को एक एक आंसर बुकलेट दिया जाता था. आंसर बुकलेट ही सपोज टू कंप्लीट द, जो कुछ भी होगा, एमसीक्यू एग्जाम होगा या फिर जो भी लैब एग्जाम होगा, ही यूज्ड टू कंप्लीट दैट. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग he need to mention
and on an answer booklet. At the end, we collect all the answer papers. अब obviously since बच्चे सारे रैंडमली बैठे हुए हैं, तो जो सारे आंसर पेपर हमारे कलेक्ट होते थे वो सारे रैंडमली होते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब उनको स्टोर करना है तो हमें सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करना पड़ता था। तो सर आप कैसे सॉर्ट करते हो? कॉमन सेंस है, 200 बच्चों के अगर मैं एक बंदा अगर सॉर्ट करने बैठेगा तो आई गेस हालत खराब हो जाएगा। सो 200 स्टूडेंट्स यू आर सॉर्टिंग लाइक 1 2 3 4, दिस इज इम्पॉसिबल। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग स्टाफ रूम में चलो 5-6 लोग बैठे हैं, 5-6 लोग बैठे हैं, सो वी जस्ट डिवाइड इट कि 200 पेपर मेरे पास है, ये थोड़े तू ले, थोड़े तू ले, थोड़े तू ले, थोड़े तू ले, एंड व्हाट यू डू, यू सॉर्ट इट एट योर ओन लेवल, यू सॉर्ट इट एट योर ओन लेवल। अब जितने 6-7 स्टाफ है, हर एक को एक पार्टीशन दिया जाता था, एक पार्ट दिया जाता था, और वो अपना अपना सॉर्ट करता था। अब सॉर्टिंग हो गया, नाउ लेट अस बिगिन मर्जिंग। सो वी स्टार्ट विथ 1 नंबर किसके पास है, सो जिस किसी स्टाफ के पास 1 नंबर है वो 1 नंबर देता है। 2 नंबर किसके पास है, ए 2 नंबर। 3 नंबर किसके पास है, वो 3 नंबर। 4 नंबर किसके पास है, 4 नंबर। 5 नंबर किसके पास है, तेरे पास ही है, ओके 5 नंबर। 6 number, 7 number, 8 number, and this way we are just taking it all, and then we are having all 200 papers in a sorted order. What is the logic over here? The logic over is that the whole array of 200 is divided into 6-7 partitions. The 6-7 partitions are sorted individually, and once they are sorted individually, they are again clubbed together. But while clubbing them together, हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक के पास जो स्मॉलर है वो एक एक ले रहे हैं। सो जिस पार्टीशन में जो स्मॉलर है, दैट वी आर कलेक्टिंग इट एंड देन वी गेट इट एवरीथिंग सॉर्टेड। सो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 सॉर्टेड पार्टीशंस को मर्ज करके एक पार्टीशन में ले रहे हैं। दिस इज नथिंग बट लॉजिक बिहाइंड मर्ज सॉर्ट। अरे यू गॉट द पॉइंट? लॉजिक समझ में आया क्या? हम लोग इसका पेपर वर्क भी करने वाले हैं और हम इसका कोड भी लिखने वाले हैं, तो आप चिंता मत करना। एज फार एज पेपर वर्क एंड कोड इज कंसर्न, आई विल एक्सप्लेन यू। आई एम जस्ट फर्स्ट टेलिंग यू द फिलोसॉफी बिहाइंड इट। मैं फिर से पूछ रहा हूं, इज द लॉजिक इज क्लियर? व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड इट? द आइडिया बिहाइंड इज दैट जो भी आपके पास एरे है, यू डिवाइड द एरे इनटू मल्टीपल पार्टीशंस। स्टेप नंबर 1, you sort each partition individually, and then अब ये जो partitions है, they are sorted partitions, then you merge those partitions, that is the idea behind merge sort. तो let us do it on paper. अब यहां पर हम लोग मल्टीपल में नहीं करने वाले, हम लोग यहां पर लॉजिक सिंपल कहते हैं। मर्ज सॉर्ट में यू डिवाइड एरे इनटू 2 इक्वल पार्टीशंस और 2 ऑलमोस्ट इक्वल पार्टीशन, जैसे हमने बाइनरी सर्च में किया था। डिवाइड द एरे इनटू ऑलमोस्ट इक्वल पार्टीशंस, sort both the partitions individually, and then take the smallest one at a place. ऐसे एक स्मॉलर कलेक्ट करो and then you sort everything. सर नहीं समझा? 2 मिनट, लेट मी गिव यू द एग्जांपल। पे अटेंशन, मैं पहला पास बता रहा हूं, पहला पास ठीक से समझो। वापस ये रिकर्सिव कोड है। रिकर्सिव कोड में इफ यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पास, राइटिंग कोड बिकम वेरी इजी। तो पहले पास के ऊपर ध्यान दो। रिकर्सिव, सर उसके अंदर वाला कैसे होगा, उसकी चिंता अभी मत करो, पहले फर्स्ट पास, द टॉप मोस्ट पास। सो यू टेक अ लुक एट दिस। So first of all, I want to divide the array into 2 parts. In this part, I'm saying left. If this is right. How do you find middle? Can someone recall? A middle कैसे ढूंढेंगे? How to find middle? और middle is equal to, बाइनरी सर्च हमने किया ना, exactly. Middle is equal to left plus right by 2. Go ahead, left plus by right by 2. I find that this is middle. And if this is middle, I'm saying that now I have got 2 partitions. Pay attention, I got 2 partition. First partition is left to mid, and second partition is mid plus 1 to right. First partition left to mid, and second partition is mid plus 1 to right. Now what I'm saying, go ahead and sort these partitions individually. ये जो partitions आपके पास है, sort this partition individually.
सर कैसे सॉर्ट करना है वो सस्पेंस है, वो हम लोग बाद में आएंगे. आई एम सेइंग दैट अभी somehow you sort these both partitions individually. A continue further. If you sort the first partition, what is the result? The result would be 1, 2, 3, 5, 5, 6. Okay, that is great. Second partition, you sort it individually. That comes out to be 6, 7, 8 and 9. राइट. तो चलो दोनों पार्टीशन हमने इंडिविजुअली सॉर्ट कर लिए. डोंट वरी, मर्ज सॉर्ट हम लोग थियोरेटिकली नहीं पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिकली गाइड पढ़ने वाले हैं. हम लोग कोड करने वाले हैं और कोड में आपके सामने टाइप करने वाला हूं. अभी तक जितने सारे हुए मैंने आपको सिर्फ थियरी सुनाई एंड आपको समझ में आया होगा डेटा स्ट्रक्चर की थियरी सुनना ज्यादा हेवी होता है देन प्रैक्टिकल करने से. बिकॉज यू नो थियोरेटिकली यू आर लिसनिंग सो मेनी बिग एल्गोरिथम्स, इट फाइंड दैट सर ये ओवरवेलमिंग है. सो मर्ज सॉर्ट इट इज ओके, बिग है लेकिन इट इज क्वाइट इजी. वी आर गोइंग टू डू इट स्टेप बाय स्टेप ऑन पेपर एंड वी आर गोइंग टू राइट द एल्गोरिथम एज वेल. सो आई रियली डोंट थिंक कि आपको प्रॉब्लम आएगा. अगर प्रॉब्लम आया हम लोग फिर से रिपीट कर लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम. If we have got like this, chalo things are done. And now the things are done, please pay attention. If things are done, अब मुझको क्या करना है? I'm saying that let us take two indices. Let us take two indices. One, if this is left index, if this is a left index, you continue further. We have got another index. This is let's say right index. एक I और एक J. If one is I, another is J, and let us create one temporary array. Let us create one temporary array. The temporary array. Now what I am saying, listen carefully. अब मुझको क्या करना है? लेफ्ट पार्टीशन का एलिमेंट राइट पार्टीशन के एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है और फिर जो भी स्मॉलर होगा, ये जो भी स्मॉलर होगा, दैट आई नीड टू कॉपी, दैट आई नीड टू कॉपी. सो यू फाइंड दैट, यू कॉपी दैट. जिसको कॉपी किया है, लिसन, जिसको कॉपी किया है उसको इंक्रीमेंट करो और टेम्पररी एरे को इंक्रीमेंट करो. यू कंटिन्यू फर्दर. Again you compare the left element with the right element. शायद मैंने एरे इतना अच्छा नहीं लिया है, हम लोग अगले एग्जांपल में अलग वाला एरे लेंगे, कोई बात नहीं. हम लोग वापस से करेंगे. हाँ, सो 2. नाउ whichever is smaller you continue further, you copy that element and then जिसको कॉपी किया है उसको इंक्रीमेंट करो और इसको इंक्रीमेंट करो. Again you continue further, you find out that which one is smaller. Again I say that if this element is smaller, जो भी smaller होगा, you copy that element, increment that index, increment your temporary array index, and you repeat the process. Whichever is smaller, you copy that element, you increment this index, you increment next index, and you continue further. And then whichever is smaller, you decide. अब इसको दोनों सेम ही है लकीली, तो कोई भी ले लो. अगर आप लोग ऐसे प्रोसेस कंटिन्यू करते जाओगे, डोंट यू थिंक दैट या तो लेफ्ट या तो राइट, कोई ना कोई तो एक पार्टीशन आपका एग्जॉस्ट होने वाला है. या तो लेफ्ट या तो राइट, जो जो स्मॉलर होगा आप लोग पिकअप करते जाओ, यहां से यहां से यहां से यहां से आप लोग पिकअप करते जाओ. कोई ना कोई तो एक पार्टीशन आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा. जब एक पार्टीशन एग्जॉस्ट हो जाएगा, बचे हुए पार्टीशन के जितने एलिमेंट्स है उतने चुपचाप से अपेंड कर दो. बचे हुए पार्टीशन के सारे एलिमेंट्स चुपचाप से अपेंड कर दो एंड दैट्स इट. दिस इज नथिंग बट यू कॉल इट एज अ सॉर्टेड एरे इज रेडी. दिस इज व्हाट अ मर्जिंग टेक्निक. मैंने सिर्फ ओवरव्यू बताया और ये एरे इतना अच्छा नहीं था. आई गेस मैं एक काम करूंगा, मैं एक नया वाला एरे लूंगा एंड विद न्यू एरे we will try to do it once again where we will have literally elements in more randomized fashion. ये मेरे पास कहीं पर तो कॉपी किया हुआ था, मैंने देखा नहीं, कोई बात नहीं. आई एम टेकिंग सम नंबर्स. लेट्स से नंबर्स इज लेट्स से 8, लेट्स से 2, or let's say 3, let's say 9, let's say 1, let's say 5, let's say 7, let's say 2, let's say 6, let's say 4. These are kind of elements that I have arranged. अब ये I guess अच्छे से random numbers है, and if these are random numbers, let's see how it goes.
मैं फिर से एक बार प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं, एंड डोंट वरी, वी कैन रिपीट इट 1 or 2 more टाइम्स इफ इट इज needed. So what is the step? Again, first focus on a merging technique. जैसे आपको याद होगा, मैंने आपको इंसर्शन सॉर्ट के वक्त पहले मैं आपको इंसर्शन पढ़ा रहा था, कि मैंने आपको बोला फर्स्ट फोकस ऑन इंसर्शन. इफ यू अंडरस्टैंड इंसर्शन, learning insertion sort is very easy. On the parallel line, first focus on a merging technique. If you understood merging technique, merge sort is very simple. Merge sort is very simple. तो हम लोग बाद में ही देखते हैं वो कैसे करना है. पहले we will go ahead, whatever array is there, let us divide array into 2 parts, 2 almost equal parts. अगर इवन नंबर होंगे तो 50-50 हो जाएगा. अगर ऑड नंबर होंगे तो एक में एक ज्यादा होगा, एक में एक कम होगा, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. एंड कंटिन्यू. So what is the first step? The first step, divide array into the 2 parts. Then what is second step? Sort the left partition. How? Somehow sort the left partition. If you sort the left partition, can you please tell me, left partition जब sort होगा तो क्या आएगा? In this case, sorted left partition. Sorted left partition, I guess it is 1, 3, 5, 8, 9. 1, 3, 5, 8, 9. Good. अच्छा, sorted right partition. Go ahead, sort the right partition. It is 2, 4, 6, and 7. Ab, take 3, create a temporary array. Go ahead, create a temporary array. Temporary array इतना बड़ा होना चाहिए which can accommodate the whole left partition plus right partition, which can accommodate both left partition plus right partition. ऐसा इतना बड़ा array आपका होना चाहिए. Okay, that is good. So I have taken an array. Now take 3 indices. Index I at the beginning of the left partition. Index I at the beginning of the left partition. Index J at the beginning of the right partition. And index K at the start of temporary array. Good. You compare ith element and jth element. Whichever is smaller. Can you please tell me which one is smaller now? I'm saying that it is the ith element and jth element, और नीचे ये 12 k index है. Yes, ith element is smaller. Go ahead, copy this, and then increment I index, increment k index. Again you compare ith element and jth element. Which one is smaller? Oh, now in this time jth element is smaller, so you copy jth element, you increment jth element, you increment kth element. Oh, you continue further. Now which one is smaller? Ith element and jth element. Yes, I found that 3 is smaller. A3 is smaller. Let me copy 3. Increment I, increment j. You again continue. Now you find that the smaller element is jth element. Whichever is smaller, you copy that element. Increment j, increment k. आप लोग नोट कर रहे हो कि हम लोग हर बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और जिसको कॉपी किया है हम लोग उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं. कंटिन्यू फर्दर. Which one is smaller? Ith element, you increment it. Ith element, you copy ith element, increment I, and then increment k. Again you continue further. Which one is smaller? Jth element is smaller, so 6. You copy 6, you increment j, and you increment k. You repeat once again. Which one is smaller? Again jth element is smaller, so you copy 7, increment j, and increment k. And as I was telling you earlier, या तो right partition खत्म हो जाएगा या तो left partition खत्म हो जाएगा. You never know, depending on the values, but कोई ना कोई तो एक partition खत्म हो जाएगा. When one partition is completed, what is to be done? When one partition is completed, what is to be done? Copy the remaining elements of the second partition and append it to the array. Copy remaining element of the second partition and append it to the array. One by one, I, j, just copy paste करो, खत्म हो गया. Now, is your main array sorted? Not really. Your temporary array is sorted. Please note that आपने पूरा का पूरा डेटा एक टेम्पररी एरे में कॉपी करवा के लिया है, तो
टेम्पररी एरे इज सॉर्टेड. ओ, लेकिन सर मुझको मेन एरे सॉर्ट करना है. अरे मेन एरे सॉर्ट करना है तो कौन सा बड़ा तीर मारना है? गो अहेड एंड ओवरराइट टेम्पररी एरे back to the original array. Make temporary array back to the original array. नहीं, arr is equal to temp से पॉइंटर कॉपी होता है. हमें पॉइंटर रेफरेंस कॉपी नहीं करना है, हमें एलिमेंट कॉपी करना है. तो एक लूप लगाओ और टेम्पररी एरे ओरिजिनल arr array के ऊपर कॉपी पेस्ट कर दो, वेयर योर होल array is sorted. Now is the logic clear? Is merging logic is clear? Should I repeat it once again? Yes, no problem. I'll repeat it once again, no problem. Please pay attention. मैं पूरा लॉजिक फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि हमें उसका कोड लिखना है. प्लीज गो अहेड. I'm just going ahead. And what I'm saying is that, what is your step number one? Step number one, divide array. Step number one. हाँ ठीक है. It is okay. If it is still required, मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ. It will not take much time. हाँ, divide array into two equal partition. Mid is equal to left plus right by 2. You divide into the two equal partitions. We have done that. What is next job to be done? Divide into the two equal partition. What is next job to be done? Apply logic to sort the left partition and then you sort right partition independently. ये दोनों पार्टीशन अलग अलग से सॉर्ट कर लो. पहला पार्टीशन लेफ्ट टू मिड है और दूसरा पार्टीशन मिड प्लस 1 टू राइट है. ये पहला पार्टीशन लेफ्ट टू मिड है और दूसरा पार्टीशन मिड प्लस 1 टू राइट है. ओके गुड. अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप इज दैट allocate a temporary array. कुछ लोग उसको ऑक्सिलरी एरे भी कहते हैं. allocate a temporary array और you can say auxiliary array. और इसका काम क्या है? इसका काम है which can hold both left partition plus right partition. ए लेफ्ट प्लस राइट दोनों पार्टीशन के टोटल एलिमेंट्स कंपेयर कर आ सकते हैं. इतना बड़ा मतलब क्या होगा? इट विल बी लाइक 8 minus 0 plus 1. Total 9 elements are there. 8 minus 0 plus 1. Total 9 elements are there. So that is something in front of you. If this is clear, let us continue further. Pay attention. Continue further. Take I is equal to left, j is equal to m plus 1. I is equal to left at the beginning of the left partition, j at the beginning of the right partition, correct? And k at the beginning of the temporary array. Obviously it will be k is equal to 0. You start comparing whichever is smaller. I'm going now a bit faster. Pay attention. Whichever is smaller, you copy that. A 1 is smaller, you copy 1, you increment that index, you increment k. Now 2 and 3, you find 2 is smaller, you increment this and you increment this. 3 and 4, you copy 3, and then you increment I, you increment k. 5 and 4, okay, you copy 4, you increment j, you increment k. 5 and 6, you copy 5, increment I, increment k. 8 and 6, go ahead, you copy the smaller element 6, you copy 6, you increment j, increment k. I'm saying that you keep continuing until any one partition is exhausted. So you find that 8 and 7, again 7 is smaller, you take this, you copy j, you increment j, you increment k. I found that in this example, right partition is completed. If right partition is completed, go ahead and copy remaining elements of the left partition. This is done. But has it sorted my main array? No, it has sorted your temporary array. अब ये जो temporary array sort हुआ है, इसको वापस से overwrite कर दो on like original array so that the whole array is sorted. Now is this clear? Sure? Great. Now if it is clear, wait for a minute. If it is clear, now the next question. But
we didn't discuss how you are going to sort the left partition and how you are going to sort the right partition. हमने क्या कहा? You just divide into the two partition, you sort left partition, you sort right partition. लेकिन now question is that how do you sort left partition and how do you sort right partition? So sir, उसके लिए bubble sort use करें क्या? So उसके लिए insertion sort use करें क्या? I said no, it is poor idea. Instead of bubble sort and insertion sort, why don't you apply merge sort once again? Yes, absolutely. It is a divide and conquer problem. You can again continue further. Pay attention. You can again continue further and you can try to again divide this portion into the two parts. You can again divide it into the two parts and you can think of sorting it further. I hope you are getting my point. And then, so sir, how do I sort the next one? Again, you divide it into the two more parts and try to sort it together. And you want to try to sort this, again you divide it into the two parts and try to sort this much. I hope you people understand that if array has got a single element, if array has got a single element, then single element is always sorted. I hope आपको ये पता होगा. It is highly philosophical, you know. If there is a single element, then it is always sorted. क्योंकि there is no one to comparison, no. So it is always sorted. And then you start merging. ये जो दो partition थे, अब इन दोनों को merge करो, इनको merge करो. फिर ये जो दो partition बने थे, फिर इनको merge करो. And then again you continue. ये sorted partition इस sorted partition के साथ merge करो. And this way you continue the story and you find that the whole array is sorted. Wait for a minute, मैं बाद में पेपर वर्क के ऊपर जाऊंगा. पहले कोड लिखेंगे, पेपर वर्क के ऊपर जाएंगे. एक छोटा सा पॉइंट मुझको पहले बताना है और बाद में हम लोग कंप्लीट चाहिए तो मैं पूरा पेपर वर्क करके दिखाता हूं. आप चिंता मत करो, पहले ये वाला पार्ट चेक करो. Let us just focus on this part. For time being, I want you people to focus on this part. Which part? Let's say that, just a minute. Let's say that this is my array. Let's say that this is my array. And if this is my array, see it carefully. This is my array. I want you people to focus onto the right partition. I want you people to focus onto the right partition. I want you people to focus on right partition. क्योंकि ये जो लास्ट वाला लॉजिक है ना, इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. ये जो ओवरराइटिंग का लॉजिक है, ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं. तो मैं पहले ऑन पेपर ही दिखाना चाहता हूँ, बाद में हम लोग कोड में जाएंगे. नाउ टेल मी, फॉर दिस पार्टीशन, राइट वाले पार्टीशन के ऊपर फोकस करो. फॉर राइट वाले पार्टीशन के लिए व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हाट इज राइट? What is left index, what is right index? For the right partition, I'm talking about this much of part and I'm saying that how this is going to be sorted. Yes, in this particular case, can I say that this is nothing but left, this is nothing but left, and this is nothing but right? You agree with this? Oh, this is left, this is right. So it is 5 and 8. By the way, how do you get its middle? How do you get its middle? इसका मिडल क्या आएगा? एक और फटाफट से, उसका मिडल क्या आएगा? ए 5 plus 8 divided by 2, that comes out to be 6. Agree? So this is middle and this is middle plus 1. So I can simply say that this is partition something like this. Then you continue further. You try to sort this individually. Please pay attention. You sort this individually. कोई मुझको बताएगा ये sorted कैसे आएगा? 7 2 sorted. 7 2 sorted is nothing but 2 and 7, right? And 6 4 sorted is nothing but 4 and 6. Okay, that is good. And now you need the indices once again. I'm saying that this is left index. I hope you agree. This one is again right index J. In this case, जो टेम्पररी एरे आप लोग बनाने वाले हो, वो टेम्पररी एरे कितना बड़ा रहेगा? Can you please tell me what should be the size of a temporary array in this case? 4. How 4? Tell me the calculation. 4 कहां से आया? नंबर कहां से आया?
4 कैसे आया? 4 कैसे आया? आई एम सेइंग दैट इट इज 8 minus 5 plus 1. 8 minus 5 plus 1. I hope you are getting that. 8 minus 5 is 3 plus 1 is 4. So total there are 4 elements. So जो temporary array हम लोग बना रहे हैं, I am very sure that the temporary array should be of 4 elements. Okay, no problem. So obviously k कहाँ पर point करेगा? Okay, will point to the zero of this. K is pointing to the zero of this. इसके indices 0, 1, 2, 3. Please pay attention. ये चलो follow. अब I and J, which one is smaller? Which one is smaller? I see 2 is smaller. So let me copy 2 and then increment I. Increment I, increment K. Good. You continue once again. Which one is smaller? Jth element is smaller. Let me copy 4. Let me copy 4. You increment J and increment K. Again, continue further. Which one is smaller? Still J is smaller. Why not copy 6, increment J, increment K? What I see, one partition is exhausted. If one partition is exhausted, what is to be done? Append the remaining one. Okay, I appended the remaining one. I appended the remaining one. Is my main array sorted? No, but temporary array is sorted. Temporary array is sorted. What is to be done? What is to be done? I need to overwrite temporary array back to the original array. Temporary array back to the original array. Is that correct? My question is that how do you copy temporary array back to the original array? Can you write a piece of code for me? ये temporary array मुझको ऊपर के array के ऊपर copy paste करना है. तो मुझको copy paste कैसे करना है? एक एक एलिमेंट कॉपी करना पड़ेगा. I know. तो लूप कैसे लगेगा? That is my question. लूप कैसे लगेगा? So do you want to copy something like this? Do you want to say something like this? ARR of I or X whatever is equal to temporary of I. Is it how you want to copy? Is it what you want to copy? क्या इसका 0th एलिमेंट आपको इसके 0th एलिमेंट पे कॉपी करना है? क्या इसका 1 एलिमेंट आपको इसके 1 एलिमेंट पे कॉपी करना है? क्या इसका 2 एलिमेंट आपको इसके 2 एलिमेंट के ऊपर कॉपी करना है? बिल्कुल नहीं. हमें कॉपी कहां पर करना है? प्लीज अंडरस्टैंड दैट. वापिस से कोड में लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए अभी बता रहा हूं. अंडरस्टैंड दैट इसको कॉपी आपको इस लेफ्ट के आगे करना है. मिड प्लस 1 को या फिर इस लेफ्ट के आगे आपको कॉपी करना है. यू एग्री विद दिस? You want to copy it from left onwards. For the inner partition it is left, no? For the inner partition it is left. So I'm saying that इसका जो 0 होगा, please pay attention, इसका जो 0 होगा that will go on a left. इसका जो 1 होगा that will go on a left plus 1. इसका जो 2 होगा that will go on a left plus 2. इसका जो 3 होगा it will go on a left plus 3. You agree with this? इसका जो 0 होगा it will go on a left. इसका जो फर्स्ट होगा it will go left plus 1. इसका जो 2 होगा it will be left plus 2 and it will be left plus 3 and so on and so forth. In general what I want to say is that जो लास्ट वाला लूप हम लोग लिखेंगे, the loop I need to be careful. I need to write it left plus I. Is this clear to everyone? ये लास्ट के कॉपी के लूप में बहुत सारे लोगों की वाट लग जाती है. तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि कॉपी करना है मतलब कैसे कॉपी करना है. And if you people have understood this, trust me, rest of the code is very easy. Super easy code. Super easy code. Let us just go ahead and let us think of implementing it. क्या आज पूरा लेक्चर खत्म होने को आया? हम लोगों ने अभी तक इक्लिप्स के एक प्रोजेक्ट भी नहीं बनाया. कोई बात नहीं, हम लोग इसको बनाते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. आई एम गोइंग अहेड. क्या नाम है इसका? सॉर्टिंग. लेट्स से मर्ज सॉर्ट. वैसे भी आज क्या क्विक सॉर्ट हो नहीं पाएगा, तो मर्ज सॉर्ट उतना ही खत्म करेंगे. डन. Yes, I got a merge sort. New class
merge sort main. Okay, add some package. Done, finish. And don't worry, पहले हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे और बाद में कोड में कन्वर्ट करेंगे. So don't worry about it. We will follow the same technique for the whole module. जहां जहां हम लोग कोड लिखेंगे हम लोग वैसे ही लिखेंगे. और जब मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं तब लेट मी नो अगर मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं तो. कम से कम इंग्लिश तक तो सबको समझ में आना चाहिए. Should not be a problem. Here I am main and I want to write public static void static void merge sort. Please keep your eclipse ready. बाद में आपको इसको रन करके देखना है. I want to pass the array. I want to pass the array and I want to pass the left. I want to pass the right. Okay, I'm ready with this. I'm ready with this. So logic क्या क्या लगाना है? What is the first step? Can you please tell me? अरे बोलो फटाफट. आप लोग बोलो, हम लोग लिखते हैं. इंग्लिश में तो पहले लिखते हैं. Yes, divide array in two equal partitions. Equal कहो या almost equal कहो. Equal partitions. Okay, that is the first step. What is second step? What is second step? अरे I और J नहीं, रुको पहले उनको सॉर्ट करो ना. सॉर्ट लेफ्ट पार्टीशन. अरे पहले इंडिविजुअल तो सॉर्ट करो. डायरेक्टली आई जे के ऊपर पहुंच गए लोग. सॉर्ट लेफ्ट पार्टीशन एंड देन सॉर्ट राइट पार्टीशन. सो लेफ्ट और राइट पार्टीशन हमको इंडिविजुअली सॉर्ट करना है. ओके, दैट इज गुड. बाय द वे, आपका लेफ्ट पार्टीशन कहां से कहां तक है? लेफ्ट पार्टीशन आपका कहां से कहां तक है? लेफ्ट पार्टीशन is left to mid, am I correct? And right partition is mid plus 1 to right. A right partition is mid plus 1 to right. Okay, I got that. Next, अब हमें क्या करना है? At high level, yes, create temporary array. Don't forget, temporary array to accommodate both partitions. So हमें इतना बड़ा array बनाना है जो दोनों partitions को accommodate कर सके. Okay, I got that as well. What is the next step? Next step, at the higher level, merge two sorted partitions into temporary array. अब यहाँ पर हम लोग वो I, J, K वगैरह indexes वगैरह लेंगे and we will do that. Don't worry about it. And what is the final step? What is the final step? Overwrite temporary array back to main array, back to original array at appropriate position. Is overall logic is clear to everyone? हम लोगों ने यही पढ़ा था और हम लोग यही फॉलो करेंगे. Obviously IJ के इंडेक्स वो अभी मैं नहीं लिखने वाला हूं, so that you can always do it. Accommodate का स्पेलिंग anyway. हाँ, यहां पर हमें क्या करना है? हाँ, to accommodate create sorry merging के लिए आपको शायद ऐसे लॉजिक लगाना है. What is that? ए मर्जिंग के अंदर का मैं लॉजिक बता रहा हूं. What is that? Compare elements from both partitions and copy the smaller one until any one partition is done in completed. And then next if one partition is completed, then copy remaining elements from other partition. I hope now this is very clear कि ये सब कुछ हमको करना है. Let us go ahead and start writing code step by step, line by line. तो चलो पहला step, integer mid is equal to left plus right by 2. जहां पर समझ में नहीं आएगा वहां पर पूछना. It is equal to mid is equal to left plus right by 2. Is done. You continue further. Sort the left partition. Oh, this is very easy job now because we are using recursion. ARR left to mid, and you continue further. You follow the similar one, mid plus 1 to right. Is this correct? These are the recursive calls. So apply to the left partition, apply to the right partition.
or you continue further. Create the temporary array to accommodate both the partitions. Okay, so let me allocate a temporary array. Temp is equal to new int or mathematics right minus left plus 1. So temporary array to accommodate both the partitions. We have done that as well. अब रुको, अब लॉजिक लगाना है. Compare two elements, compare two elements from both the partitions and what is that? Copy the smaller one. अब यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी integer I is equal to left, j is equal to mid plus 1 and k is equal to 0. I hope this is clear. I is equal to left, j is equal to mid plus 1 and k is equal to 0. What do you want to do? You want to follow it in a loop. आपको कंपेयर करना है. If error of I is less than error of j, error of I is less than error of j, क्या करना है? क्या करना है? अरे किसको कॉपी करना है? I can simply say temp of k is equal to error of I. A temp of k is equal to error of I, and then you want to increment k, then you want to increment I. अगर आपको मल्टीपल लाइन्स लिखने का शौक है तो अगले लाइन के ऊपर k प्लस प्लस, अगले लाइन के ऊपर i प्लस प्लस लिखो. आई एम जस्ट राइटिंग इन मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स. आई रिपीट वंस अगेन, जिसको ये समझ में नहीं आएगा आप लोग सीधा लिखो टेम्प ऑफ k इज इक्वल टू एरर ऑफ i, नीचे के लाइन के ऊपर k प्लस प्लस, उसके नीचे के लाइन के ऊपर i प्लस प्लस. एल्स else what to do? Yes, it is post increment operation that we are doing. Hey, what is else what to do? Else temporary of k is equal to error of j. और फिर जिसको कॉपी किया है ए जे को इंक्रीमेंट करो, j को इंक्रीमेंट करो और k को इंक्रीमेंट करो. ओके, वी हैव डन दैट. दिस इज आल्सो डन. बाय द वे, लेकिन ये आपको कब तक करना है? until any one partition is done. Okay, रुको. So I want to find out until any one partition is done. So what I'm saying, have a look at this. While ये मेरा लेफ्ट पार्टीशन कहां से कहां तक है? लेफ्ट पार्टीशन कहां से कहां तक था? लेफ्ट टू मिड. सो आई इज लेस देन और इक्वल टू मिड एंड j is less than or equal to ये मिड प्लस 1 से कहां तक था? yes, it was still right. so j is less than or equal to right. oh, that is fantastic. अब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, इट विल कम आउट. ये मुझको पता नहीं कौन सा फॉल्स होने वाला है. दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, इट विल कम आउट. let us assume that the right partition is finished. If right partition is finished, what I need to do? If right partition is finished, what I need to do? Append the left partition. Oh yes, append the left partition. See my code. Append the left partition while I is less than mid. Just say temp of k is equal to error of I. ये बचे हुए सारे एलिमेंट ith पार्टीशन के लेफ्ट पार्टीशन के कॉपी कर दो. ओके, दैट इज गुड. बट व्हाट if this condition is false? What if this condition is false? If this condition is false, what is to be done? If this condition is false, what is to be done? You go ahead and you follow the right one. Okay, while j is less than or equal to right, temp of k is equal to error of j, right? So you need to take a call. अब दोनों में से कुछ भी हो सकता है. अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स होता है, प्लीज पे अटेंशन, ये वाला कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या होगा? इट विल कॉपी द एलिमेंट्स फ्रॉम दिस. ऑब्वियसली ये कंडीशन फॉल्स है तो इस लूप के अंदर वैसे भी नहीं जाएगा. अदर वे राउंड, अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स होता है, मतलब मेरा लेफ्ट पार्टीशन खत्म हो गया. अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स होता है, पे अटेंशन, अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स होता है तो वैसे भी वो पहले लूप में नहीं जाने वाला है. दिस कंडीशन इज फॉल्स एंड इट विल कॉपी द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम द अदर पार्टीशन. आई होप यू गॉट द पॉइंट. दिस इज व्हाट वी नीड टू डू इट. ये मर्जिंग का लॉजिक हो गया, लेकिन ये मर्जिंग का लॉजिक कहां पर हुआ है? टेम्पररी एरे में हुआ है. व्हाट इज नेक्स्ट जॉब टू बी डन?
टेम्पररी अरे में हुआ है. What is next job to be done? I want to copy this particular data back to the original. Oh, or back to the original. Continue further. I is equal to 0. I is less than temp dot length I plus plus. And how do I copy? How do I copy? Should I copy like this? Should I copy like this? No, 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 no. What we need to do extra? I guess ARR of left plus I is equal to temp of I. Done. So code is completed. Almost. Almost क्यों कह रहे हैं? Almost इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने प्रोसेस वी हैव एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ. व्हाट इज लेफ्ट? वी हैव एक्सप्लेन्ड प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ. व्हाट इज लेफ्ट? हम लोग रिकर्शन कर रहे हैं. ओ ओ ओ रिकर्शन मतलब बेस कंडीशन तो रह ही गया. ओ यू थिंक ऑफ अ बेस कंडीशन. व्हाट इज बेस कंडीशन? इफ partition is invalid, if partition is invalid or have single element or have single element then return. करेक्ट नो? अगर एक ही एलिमेंट है तो सीधा सीधा रिटर्न होना है. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट ए पार्टीशन इज इनवैलिड का मतलब क्या है? पार्टीशन इज इनवैलिड का मतलब है योर लेफ्ट इज ग्रेटर देन राइट. ए लेफ्ट हैज टू बी ऑलवेज लेस देन राइट. इफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन राइट इट इज इनवैलिड पार्टीशन. और इफ लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, ए लेफ्ट इज इक्वल टू राइट का मतलब क्या है? लेफ्ट इज इक्वल टू राइट. लेफ्ट इज इक्वल टू राइट का मतलब क्या है? और देयर इज अ सिंगल एलिमेंट. if there is a single element then just say return, nothing much to be done, like a terminating condition. That's it. अब ऐसे इतना गंदा लिखने की जरूरत नहीं है. You could have make it more readable. You can make it more readable by simply saying left is greater than or equal to right. I hope you got the point. सर ये कोड काम करता है? It should. Why not? You test it. You go ahead, you declare the array, and I'll take up the same array. Let's say 8, 3, 9, 1, 5, 7, 2, 6, 4. Yes, I have got the array. And you continue further. What is next job to be done? Next job to be done. Let us just print it first. Arrays dot toString. You pass the array. This is before sorting. I'm printing the array. After sorting, I'm printing the array. Just tell me what should be the call to the merge sort. I'm passing ARR. What should be left? What should be right? Left is 0 and right is ARR last element, no? Last element length minus 1. ARR length minus 1. That's it. So is this array sorted? Right click, run as Java application. Is this sorted? Yeah. Quickly copy paste and execute it. Then we will do the paperwork once again. Quickly copy paste and execute it. 42, 43, no problem. Please let me know. Line number 42, 43. मेरे को लगा था लोग यहीं पर कंफ्यूज होते हैं. Override part, no problem. I am repeating. Don't worry. Why temp dot length? Okay, that is a question. Coming back to the point, and that is the reason I drawn this diagram. मेरे को पता था ये क्वेश्चन आने वाला है. See, what I said is that I never know कि लेफ्ट और राइट हमेशा 0 और लेंथ माइनस 1 नहीं होने वाले. जो आपका पहला कॉल है वहां पर लेफ्ट विल बी 0, वहां पर राइट विल बी n माइनस 1. लेकिन जो आपके रिकर्सिव कॉल होंगे, रिकर्सिव कॉल में आपके लेफ्ट और राइट चेंज होते रहेंगे. आई होप यू एग्री. लेफ्ट और राइट चेंज होते रहेंगे. सो आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल कि पहला मेरा जो सेकंड रिकर्सिव कॉल होगा इट इज डन फॉर दिस पार्ट. For this part, this is going to be the middle element. So my array is divided into the two parts, left and right. Left part is sorted individually, right part is sorted individually. This is done. If this part is sorted individually, this part is sorted individually. अब ये जो हम लोग लिया है, ये हम लोग ने कहां पर लिया है?
टेम्पररी एरे में व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेम्पररी एरे? टेम्पररी एरे का लेंथ कितना होना चाहिए? जितना दोनों पार्टीशन को एकोमोडेट कर सके इतना होना चाहिए। ये दोनों पार्टीशन को एकोमोडेट कर सके उतना लेंथ कितना आएगा? इट इज 8 माइनस 5 प्लस 1। 8 माइनस 5 मतलब मेरे पास 4 एलिमेंट्स है। 8 माइनस 5 प्लस 1, सो मेरे पास टोटल 4 एलिमेंट्स है। ऑब्वियसली द टेम्पररी एरे हैज गॉट 4 एलिमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज समवन हैज आस्क्ड द क्वेश्चन व्हाई टेम डॉट लेंथ, जब मैं यहां से यहां पर राइट करूंगा मुझको कितने एलिमेंट राइट करने? जब मैं यहां से यहां पर एलिमेंट राइट करूंगा मुझको कितने एलिमेंट राइट करने? हाउ मेनी एलिमेंट्स टू ओवरराइट? ओ आई नीड टू ओवरराइट ओनली 4 एलिमेंट्स। मुझको पूरा का पूरा एरे ओवरराइट नहीं करना है। जो करंट पार्टीशन था उसके अंदर जितने एलिमेंट थे उतने ही एलिमेंट मेरे एरे के अंदर है, और जितने एलिमेंट एरे के अंदर है उतने ही एलिमेंट्स मुझको ओवरराइट करने हैं। ये उतने ही एलिमेंट मुझको ओवरराइट करने हैं। एंड दैट इज द रीजन जो लूप लिखा गया है, लूप इज रिटन समथिंग लाइक दिस, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन जो आपका टेम्पररी एरे है, टेम्पररी एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। जिसने पूछा था व्हाई टेम डॉट लेंथ, जितने एलिमेंट्स है उतने एलिमेंट ओवरराइट करने। इज दैट पार्ट इज क्लियर? ओके, नाउ आई एम कंटिन्यूइंग फर्दर। अब राइट कैसे करना है? ये क्या राइट करना है? इसका 0th एलिमेंट इसके 0th एलिमेंट के ऊपर राइट करना है। इसका 0th एलिमेंट इसके 0th एलिमेंट के ऊपर राइट करना है। इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट पे राइट करना है। इसका सेकंड इसके सेकंड के ऊपर राइट करना है। ऐसा करना है क्या? नो, नॉट एट ऑल। मुझको ऐसे राइट नहीं करना है। मुझको कैसे राइट करना है? ये जो लेफ्ट था इसका 0 इसके लेफ्ट पे राइट करना है। इसका 1 इसके लेफ्ट प्लस 1 पे राइट करना है। इसका 2 इसके लेफ्ट प्लस 2 पे राइट करना है। एंड देन इसका 3 इसके इसके 3 प्लस इसके ऊपर राइट करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड इफ यू अंडरस्टैंड दैट, and if you also understand that, now it is very simple. All we need to follow is a loop. जो left है, a left plus 0, left plus 1, left plus 2, left plus 3, in general it is left plus I. In general it is left plus I, and then ith element I'm putting left plus I. Is that clear now, everyone? Good. Now जयदीप was having one question. तो हमें एरे का भी लेंथ यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। एंड दैट इज द रीजन जो हमने पहले पास किया है, हमने ARR डॉट लेंथ प्लस 1 ही यूज किया है। जो हमने पहले पास किया है वो ARR डॉट लेंथ प्लस 1 ही पास किया है। प्लीज विजुअलाइज दैट, राइट? सो दैट इज देयर। आई होप कोड इज वर्किंग फॉर यू। कैन यू प्लीज चेक क्विकली? If it is working for you, let me quickly do the paperwork for last time. Last time, and then we will wind up. लेक्चर खत्म हो चुका है। मैं सिर्फ इसको एक बार और पेपर वर्क कर रहा हूं, और मैं उसके सारे स्टेप्स एक बार कर रहा हूं। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू ऑल द स्टेप्स। चलो, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू ऑल द स्टेप्स। सपोज दैट दिस इज द एरे, एंड नाउ प्लीज पे अटेंशन। जिन लोगों को क्या कहते हैं, सर मुझको हर एक स्टेप में इंटरेस्ट है, सर रिकर्सिव कॉल इंटरनली कैसे होता है, जिसको उसमें इंटरेस्ट है, टू बी फ्रैंक इन माय ओपिनियन ये नहीं पढ़ना चाहिए। ये सिर्फ मैं आपके साइकोलॉजी के लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है? रिकर्शन कैसे पढ़ना चाहिए? पहला पास टर्मिनेटिंग कंडीशन यू अंडरस्टूड। आइडियली रिकर्शन का पढ़ाई वहां पर खत्म करना चाहिए, पर स्टिल नहीं, आप लोगों को इंटरेस्ट है, विल कंटिन्यू फर्दर। स्टेप नंबर 1, योगेश को क्या हो गया? temp is equal to right minus left plus 1. Please repeat. Okay, have a look at this. Yogesh, in this case temporary array में कितने एलिमेंट होने चाहिए? योगेश, इन दिस केस मैं इस राइट वाले पार्टीशन की सिर्फ बात कर रहा हूं। यहां पर टेम्पररी एरे में कितने एलिमेंट होने चाहिए? 4 एलिमेंट्स। और ये 4 एलिमेंट कैसे काउंट किया आपने? How do you count the 4 element? It is 8 minus 5 plus 1. So partition का last number, partition का first number index, and that plus 1.
ये जहां तक मुझको याद है, लिसन केयरफुली, ये एप्टीट्यूड में पढ़ाया जाता है। एप्टीट्यूड पे पढ़ाया जाता है मतलब आपके लेवल पे नहीं, आप इंजीनियर्स हो, M1 M2 M3 वाले। मुझको याद है जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था, हम लोगों को यहाँ पर स्कॉलरशिप का एक एग्जाम हुआ करता था, और उस स्कॉलरशिप के एग्जाम में वो एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन आते थे, और क्वेश्चन कुछ ऐसे होते थे, रोल नंबर 11 टू रोल नंबर 20, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? In a sequence, all roll numbers are there. Roll number 11 to roll number 20, how many students are there? How do you calculate it? Roll number 11 to roll number 20, total कितने students है, कैसे count करते हो? I simply count it, 20 minus 11 plus 1, that comes out to be 10. I hope you got the point. So जब हमें दो ऐसे numbers ढूंढने होते हैं, तो we say that higher number minus lower number plus 1, that gives me all the element inclusive both the ends. Yogesh, you got the point? कहाँ पर गया योगेश, खो गया? I said that this is something that I learned in a 4th standard कि ऐसे this is aptitude problem कि like 11 स्कूल के बच्चों का aptitude problem, वही लॉजिक हम लोग यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं। हमारे पास राइट इंडेक्स है, हमारे पास लेफ्ट इंडेक्स है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, सो इंक्लूसिव बोथ एंड्स आई हैव गॉट टोटल 4 एलिमेंट्स. इट्स वेरी सिंपल. Anyway, I hope you got that. And that is the reason we have allocated the array, temporary array of the 4 elements. And then I'm continuing further. हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? Let us do the whole story once again. Doing the whole story once again, you find that let us divide the array. Let us divide the array. This is the left partition, and for this is the right partition. So my first recursive call goes something like this. The first recursive call where left is equal to mid, a left is equal to 0, and mid is equal to 4. And then mid plus 1 is equal to 5, to right is equal to 8. So that is the first recursive call. लेकिन रुको, अब यहाँ पर ये कैसे सॉर्ट होने वाला है? अच्छा, chat is not responding. No problem, Yogesh. Let us continue further. यू कंटिन्यू फर्दर. अब इसका लेकिन लेफ्ट को कैसे सॉर्ट करोगे? लेफ्ट को सॉर्ट करने के लिए वापिस से एक बार लेफ्ट को सॉर्ट करने के लिए उसके अंदर वापिस से इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा. इट इज ओवर हेयर, दिस इज ओवर हेयर, सो इट विल बी अगेन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. ओके, दैट इज स्टिल नॉट अ प्रॉब्लम. बट व्हाट अबाउट द राइट साइड? राइट साइड में भी वैसे होगा. राइट साइड भी डायरेक्टली सॉर्ट नहीं होने वाला है. इट विल बी अगेन डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स. ओके, नो इश्यूज. यू कंटिन्यू फर्दर. यू कंटिन्यू फर्दर. अब उसके नीचे, अब इसका जो 839 ये वाला जो पार्टीशन है, दैट पार्टीशन विल बी अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स. दिस पार्ट इज अगेन डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स. 15 वाला पार्टीशन, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. 72 वाला पार्टीशन, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स. 64 वाला पार्टीशन, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स. ओके, यू कंटिन्यू फर्दर. ये जो 83 वाला पार्टीशन है, इसके लिए अभी भी प्रॉब्लम है. इट हैज टू बी अगेन डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स. चलो फाइनली वी रीच टू द पोजीशन. यहां पर 8 है, यहां पर 3 है. 8 और 3, लेट अस मर्ज देम टुगेदर. लेट अस टेक अ टेम्पररी एरे. एंड अ टेम्पररी एरे, जब आप इसको मर्ज करोगे, यहां से पहले 3 कॉपी करो और फिर बचे हुए एलिमेंट कॉपी करो. एंड नाउ इट इज 3 and 8. नाउ दिस 3 and 8, this is sorted. You go back, you overwrite on these two elements. I hope you are getting my point. So आपके पहले दो एलिमेंट सॉर्ट हो गए. You continue further. Now you go to the outer call. Outer call, you got 3 8. Outer call, you got 3 8, and then you have got 3 8, 3 8 and 9. आउटर कॉल यू गॉट 3 8 and 9. इसका 9 के अंदर तो वैसे एक ही एलिमेंट है, यहां पर कुछ होने वाला नहीं है. यू अगेन कंटिन्यू फर्दर. व्हाट यू वांट टू डू? अब वापस से फॉलो द प्रोसेस ना. जो भी स्मॉलर है उसको कॉपी करना है. ए स्मॉलर मैंने कॉपी किया. वापस एक बार दूसरा जो स्मॉलर है उसको भी कॉपी किया टेम्पररी एरे में. दैट इज गुड. और फिर बचे हुए एलिमेंट इसके कॉपी कर लिए. सो टेम्पररी एरे इज नाउ माय सॉर्टेड एरे. एंड नाउ दिस सॉर्टेड एरे of 3 elements, it is overwritten back to the original. That is good. You continue further.
You continue further and you follow the rest of the part. Rest of the part, यहाँ से 1 और 5 ले लो, यहाँ से 1 और 5 ले लो. Here you find that ये जो 1 है, ये 1 and 5 इसको सॉर्ट करके वापस से 1 और 5 ही आने वाला है. इसको 1 और 5 को सॉर्ट करके वापस से 1 और 5 ही आने वाला है. Okay, that is good. And if it is good, take a look at this. This is what we have got. And again, now let us merge them together once again. As you merge them together once again, ये जो smaller है उसको copy करो, then जो smaller है उसको copy करो, then जो smaller है उसको copy करो. I guess right partition is exhausted. Copy the element from the left partition, 8 and 9. And now you find that, have a look at this. At this moment, I can say that my left partition, at this moment, I can say that my left partition is sorted. My left partition is sorted. ये हम लोगों ने टेम्पररी में सॉर्ट करके इसको वापस से उसकी जगह पे डाल दिया. And I'm saying that now the whole this particular array is like sorted. Left partition sort हो गया. What about right partition? Continue on right partition. At the right partition, you take it 7. Please pay attention. You take it 7 individual. You take 2 individual. You create a temporary array. You create a temporary array. जो छोटा है उसको कॉपी करो, जो बड़ा है उसके बाद में आएगा. If this part is sorted, if this part is sorted, copy this much of part. You follow the same story once again. If we have got 6, we have got 4. Again, वापिस से create a temporary array, create one more temporary array. Into the one temporary array, जो छोटा है उसको copy करो, जो छोटा है उसको copy करो, copy the rest of the element. So you get this, you overwrite onto this. That is still fine. And then you continue further. You continue further. अब वापिस से एक बार ये temporary ये एक sorted है, and this part is also sorted. Again you continue further. You create a temporary array of the 4. You create a temporary array of the 4, and you continued with this. Copy the smaller one. Copy the smaller one. Or 2 is copied. Then 4 is copied. Then 6 is copied. Copy the remaining elements. So ultimately, this part is overwritten back to the original. Finally, we reach to the last iteration. Last iteration in the sense, the first iteration जो अंदर था, मेरे को ये जो left partition था, I got the left partition in a sorted. इसका left partition अब मुझको sorted मिला है, इसका right partition मुझको sorted मिला है, और इसका पेपर वर्क हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. I hope you recall that part. So you take a time, you copy the 1, 2, 3, 4, 5, then you continue 6, 7. Left partition is completed. You copy 8 and 9, and this whole temporary array is sorted, which you can go back and overwrite onto the main array once again. And that's it. This is nothing but the whole merge sort. अगर आपको लाइन बाय लाइन जाना है सर, अंदर ऐसे होता है, मुझको पता है आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, बट दैट इज रीजन आई एम सेइंग दैट रिकर्शन ऐसा कभी नहीं पढ़ा जाता. बट स्टिल इफ यू राइट और वांट, नहीं सर एक बार लाइन बाय लाइन करके दिखाओ, इसलिए मैंने करके दिखाया. सो इफ समवन इज ट्राइंग लेटर, you can get it from here. You can go back, recall the video if you need it once again, right? I hope merge sort is clear to everyone. Done? That is great. If it is great, I guess we should stop over here. If you have got any doubts, you can wait. If you do not have any doubts, you can leave. Bye bye. We will meet Monday. We'll quickly finish quick sort, and then Monday, Tuesday, we'll focus only onto the graph implementation. Time complexity, इसका time complexity और merge sort का quick sort का similar ही है. So we can talk at that time, right?